Check, 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 check. Mic check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check 1, 2. Audible, audible, Check, check, check. audible, Naveen. Yeah, yeah. Hello, hello. Another day and another wait for all the Telugu players to go out there and make their mark felt in the Yuva Andhra Championship 2025, a feeder to Telugu Kabaddi League that's going to happen very soon. Yes, after the Andhra Championship, we will also have the Telangana Championship that's going to happen. But more importantly, this is day two, and we are live and exclusive on Fan Code right here from this wonderful, wonderful venue. But more importantly, now the both teams are actually now gone in and are ready to make their way in, as the Amaravati Crushers and the Krishna Defenders will be clashing on against each other. And interesting fact that's coming out as well, because Amaravati Crushers, we have so much so in connection, because this is what is going to happen. As I said, Amaravati Crushers and Krishna Defenders, but then the Vizag Commandos and the Tirupati Raiders will come along the next one. The Vizag Victors team. And of course, interesting is that he has also coached Pawan Kumar and Gopi Nedi. So G. Lakshma Reddy in the Yuva Kabaddi Series 11th edition in the second division matches that we all saw. So it's more interesting how this player coach combination today on the mat
rivalry against each other. How is this going to pan out? Let's also look at the points table because we also have the table topper, right? The Ninjas out there. And then the Bhimavaram Guardians, yeah, they have lost by a big margin against the Ninjas. That's what happened. That's why that -10 on the score difference. But Kurnool Knights, yeah, yesterday they put up their winning points on the board against the Krakens because it was Krakens who were cracking along very nicely with Samarasimha Reddy. But then came the might of the Kurnool Knights. So two teams on top two. So each pool, it's very important as only two teams will be qualified for the Super Fours from Pool A and Pool B. Well, again, as I said, this is going to be an interesting matchup. Amaravati Crushers and the Krishna Defenders are right there set to run in. Let's go down and welcome these two teams on the mat. దేవతల రాజధాని నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నుంచి వచ్చేస్తున్నారు అమరావతి క్రషర్స్. కూచిపూడి పుట్టిన నేల, జాతీయ పథకం ఆవిర్భవించినటువంటి నేల కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చేస్తున్నారు కృష్ణా డిఫెండర్స్. Well, the Vizianagaram Ninjas, they are right on top in this Pool A. But this is the Pool B match. Amaravati Crushers and the Krishna Defenders clashing on against each other. And more importantly, it's their first match where they will be wanting to go out there and put up a nice opening. Because Pool B, yeah, that's a time where on the day two, we'll be looking at these two teams clashing on against each other. Amaravati Crushers in the pink outfit. Right out, they come as Ankalo Jampana and Kurmala Dinesh will be in the corners. Yeah, Ankalo Jampana, he's also played the Yuva Kabaddi series before as well. Potla Gopi Chand, he is also featured earlier as well. And Pologoro Karthik and Muttanna Naresh will be the raiding trio. And of course, Venkata Kakirti and Sita Ramudu, Boya Sita Ramudu will be there in the covers. And Kolomgiri Ramababu and Ravurum Sunil and Ashok Reddy, Narendra Nilendra and of course Nalendra Nidara and Shankar Reddy, Lochara Omkar and Devalla Sri Hari will be in the substitution lines. If, of course, Vai Suresh, the coach, if he wants them, he can bring along. And as I said, it's going to be a nice match. But to join me in the commentary box this morning, yeah, it is Navneet who will be coming in. But Potla Kopichan, look at this. 70 raid points in the 14 matches that he's played. As I said, he's also featured earlier in the Yuva Kabaddi series editions. And he will be definitely wanting to make a mark for the Amaravati Crushers in that pink outfit. But for the Krishna Defenders, the district, Navneet, where all the big mighty superstars come from, the NTRs, the ANRs, everybody's district is Krishna. And to welcome that team, I welcome you as well in the commentary box. Good morning, Navneet. थैंक यू सो मच जी हाँ नवीन. यहाँ पे कृष्णा डिफेंडर्स की टीम नजर आ रही है. जी लक्ष्मण रेड्डी राइट इन पे खेलेंगे, कोमू मधु रहेंगे सेंटर पे और बरला किशोर की बात करेंगे तो वो लेफ्ट इन पे है. आज राइट कॉर्नर पे करेटी रहेंगे, पलेपू हरीश रहेंगे राइट कवर पे, हरीश गद्दे ये लेफ्ट कवर पे और लेफ्ट कॉर्नर पे जी पवन कुमार. और जितने खिलाड़ी मैदान पे है उतने ही लगभग बेंच पे भी है. कृष्णा बाबू, एम सुमन, शीला भारत, पकम सुधीर,
एनवी मल्लिका अर्जुना और चंदका मुरली, ये है 6 खिलाड़ी जो कि बेंच पे है Yeah. फिलहाल। Correct. I understand why you said punch, because always the substitution are always five, but here we've got that extra substitute also. Yeah, it's good. In the purple outfit, as Lakshma Reddy, 101 rate points, and we know why, because he was being coached very nicely. Yeah, Lakshma Reddy was one of the players in the Yuva Kabaddi Series edition 11 in the second division, of course, and more importantly, nice story that will be going in will be that he'll be facing his coach as the opponent player. So it's really nice where you will want to go out there and put up that winning combination very nicely, because Pawan Kumar Gopinedi and Lakshma Reddy, of course, have been coached by Gopi Chand Potla. So yeah, the captain right there, but it's Krishna defenders in the purple outfit. Onto the left of our screen and onto our right, it's Amaravati Crushers in pink, and Krishna defenders won the toss and they want to defend. So the first trade will happen, of course, I think from say probably Potla Gopi Chand to take on and to see how Lakshma Reddy performs, because Potla Gopi Chand is the ex-coach of Lakshma Reddy, and that's how tables turn, isn't it, Navneet? Where we've just completed the 79th Independence Day yesterday, and today we are in the second day of the Yuva Andhra Championship 2025. It's a feeder league to the Telugu Kabaddi League, and the tables have turned where the coach is taking on his ex-captain, probably. जी हाँ, क्या कमाल की बात आपने कही। कल इंडिपेंडेंस डे था और आज है कृष्णाष्टमी, और कृष्णाष्टमी के दिन खेल रहे हैं कृष्णा के डिफेंडर्स। और चलिए इसी बात पर काउंटडाउन भी हो जाए, एंड लेट्स गेट टू दिस मैच वेरी सून। Krishna defenders will go on in the day two in their first match, because the first raid will happen from Amaravati Crushers, and yeah, there we go. The raider runs in across very nicely. But yeah, Navneet, very nicely said. Today is Krishna Janmashtami and Krishna defenders, being featured. And yeah, most importantly, I would love to say that he is the world's best lover, a very good flirt, a very nice Makhan Chor, and yeah, he's celebrating his birthday, and a very good guide to people like us, maybe. His first raid is an empty raid. जी हाँ, बिल्कुल गाइड। और जब हम लोग गाइड की बात करते हैं तो कोचेस का नाम अक्सर याद आता है, और बहुत सारे शानदार कोचेस रहे हैं। यहाँ पे भी युवा कबड्डी के सीरीज में जब हम देखते हैं तो शानदार कोचेस हमें मिलते हैं, नवीन, और आप भी एक शानदार कोच हैं, क्योंकि बहुत सारी बात आप भी सिखाते हैं प्लेयर्स को और हम सभी कमेंटेटर्स को भी। नहीं, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मैं ये I don't take it from the Gita or whatever, but that's the first bonus attempt, and he went in deep. The covers came along, blocked it. First tackle point for the Krishna defenders. Wonderful work. No bonus as well. He went in very deep, Naresh, but then he could not get what was needed. Muddara Naresh has been just pinned down very nicely. Combination works, but Lakshman comes in. Yeah, Lakshma Reddy, the captain, and look at his performance. 101 rate points, 16 matches, and 2 Super 10s. And definitely Potla Gopichand will know what he can do. He's claiming a point on the right cover and probably gets it as well. He's confident. Yeah, very cool, calm, no fuss sort of a raider, and he gets his point. Well. What a start for the Krishna defenders here. Navneet on Krishna Janmashtami, and he's got Sitaram. जी हाँ, कृष्णा ने वहां पे सीताराम को पकड़ा है। देखिए दाहिने तरफ से रेड करते, ओहो, बहुत ही शानदार तरीके से नीचे वो झुकते हैं और शायद हाथों से टो टच किया है। और बात करेंगे पोटला गोपीचंद की। यहाँ पर निश्चित रूप से मिनिमम 2 पॉइंट है, नवीन। Definitely, it's a super raid. Well, he's also got a bonus. Yeah, 2 touch points, Navneet, as you said, but that bonus point. Well, Ankalo Jampala
should have just controlled himself. That's a problem there. Look at that left corner going in, and Kareti Sambasivarao, and also the right cover, but they could not stop the tall Potla. Well. Potla Gopichand begins nicely. First points as well for the Amaravati Crushers. Super raid. And yesterday we did not see a super raid in the first match, but then here, today, day 2, first match, we get the super raid and the kick. Brilliant kick. You had that from Balakishore coming in. He was running actually towards left corner, but Naresh did not expect that kick at all. See, Naresh was not ready. Now watch where Naresh is. Of course, that was a super raid, but if you see where Naresh was, Muddada Naresh, he was right in the middle. We'll come back to that frame when possible, but that kick was unexpected. But then, Navneet, you were mentioning about the Krishna Janmashtami and guide and all that, but talking about that, I never knew that Gita line was there, but I used to always tell people, listen, whatever I say, it's just the way, one or two. Which way, which direction should be selected, that depends on you. That's all I always used to tell anybody, and even, that's what even my coach also told me as well. So every time you don't influence the thinking of anybody. As Lakshma Reddy tries to influence that bonus point, I guess he's got it. He's very confident. Doesn't look happy after looking at the umpires. Probably got the bonus then. And now Potla. पोटला वहां पे आए हैं. पोटला गोपीचंद आप बात कर रहे थे. कबड्डी में किक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन आपके जिंदगी में भी किक रहना चाहिए. जिस तरीके से किक के साथ कमेंट्री करते हैं नवीन, वहीं किक के साथ आपको खेलना पड़ेगा ये कबड्डी का मैच. यहाँ पर जर्सी नंबर 10 को आउट किया गया, पर वो कह रहे हैं मुझे तो रिव्यू चाहिए नवीन. Don't understand why Pawan Kumar wants that review on that right corner. Probably they are saying Raider stepped into the lobby without a touch or something like that. Ask what the review is. I think the review is all about I don't understand why Lakshma Reddy is standing out there. Potla Gopichand, first attempts, look at where. Oh, well, he's not got a touch. Potla Gopichand might not have had a touch on Pawan Kumar, but I wonder why Lakshma Reddy is standing on the lobby. It's not about Lakshma Reddy, it's about Potla Gopichand. Yeah, Gopichand is again a big name of a hero who was a villain starting his career, but then he turned out nicely to be a hero. Nice tall gentleman. That's the name even Potla Gopichand shares. But has he got a touch now? Has he got a touch is a big question. There he goes into the lobbies as well, and it's not Lakshma Reddy, it's going to be Pawan Kumar in question. Or has he touched Lakshma Reddy? That's why probably Lakshma Reddy is being made to stand on the lobby there, Navneet, but I don't see Lakshma Reddy getting involved. It's going to be Pawan Kumar versus Potla Gopichand. But if he's not touched Pawan and he's gone into the lobby, that's why Pawan has reviewed it, saying there was no touch. First of all, there's no bonus, so let's forget that. Lakshma Reddy is way deep. Where was there a toe touch? Was there some shoes? Oh, hard to say that. Pawan feels that there is no touch. But if we roll back, is there a touch on Lakshma Reddy as well? The decision any which ways is in favor of Potla Gopichand and Amaravati Crushers, but if this review is successful, then Potla needs to go back on the bench because it's the review of the Krishna defenders. Now, this is the point. That is the point where the TV umpire needs to decide whether there was a touch. Oh, the decision has come in. Here are some claps, but is there a touch? No touch. He's gone to the lobby.
Why? No, Gopi-chan. Don't do that. The rule is gone. Oh my God. This is so unaware of the situation and the rule. He thinks the defender also should be given out. I'm sorry, Gopi-chan. That rule is gone. Once the raider steps into the lobby, that's it. The raider is out. Oh, Lord. Oh, Lord. Potla Gopi-chan, you were the ex-coach. Nah. I don't see any defender going into the lobby even. My God. Potla Gopi-chan feels, Navneet, that because he's gone in, he also thinks the defender should be given out. I don't think so. That's the rule. That probably is being taken off. I think that's where Potla Gopi-chan has gone back and taken that review. The coach should understand this. The real important clog is the coach. They're going to lose a review. Any which ways, Amaravati Crushers have lost their, the raider, Potla Gopi-chan, and with that, they probably will also lose their review maybe. And Navneet, the reason why they're going for that is because it's Lakshma Reddy. They want Lakshma Reddy on the bench. But you cannot pull out something which is not there in the rule book. Yeah. एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आपने कहा कि जैसे ही वो खिलाड़ी आउट होता है तो लिटरली वो कोर्ट के बाहर हो गया, उन्हें आउट दे दिया गया है. तो क्या बाहर का खिलाड़ी रिव्यू दे सकता है? ना, बाहर का खिलाड़ी बिकॉज इज नॉट गॉन आउट ऑफ द बेंच. हाँ, लेकिन वो कोर्ट से बाहर हो चुके, टेक्निकली वो बेंच पे ही है. Yeah, that's a review that can be given, because I'll tell you why. The playing area is considered as the live area, so he's still in the lobby, and see, some sense prevails. They lose a review. I reckon they lose a review. They should lose a review. Yeah, because Amaravati Crushers went in because it was Lakshma Reddy, and see, that is the confusion. Because Potla Gopi-chan wanted Lakshma Reddy also to be given out, because he thought he's also stepped into the lobby, but no. When the raider is out, that's it. The raid ends. And Krishna defenders also lose their review. Amaravati Crushers also lose a review in one review. My God. Only one review can be taken for one raid. But, yeah. Amaravati, luckily for Amaravati, they don't lose the review. They keep that review for that little unaware rule that they were not aware of. But yeah, good question, good thing from you as well, Navneet. I think when you say the raider is given out, that's it. The review should be finished there. But one review per raid. So yeah, Balakishore comes in. No bonus, only 5 defenders. Yeah, bonus is on if it's only 6 or more, 6 or 7. Nice diving ankle hold from that right corner. Brilliant Ankalo Jampana, in fact, and Karmala Dinesh actually started that, but Ankalo Jampana went in for the support. Yeah, really good work from Karmala Dinesh from that right corner. And he spent a lot of time there. Look at that. In the defense of 5, you spent a lot of time in front of the right corner. That's it. And gave a lot of time to Dinesh to pounce on. जी हाँ, यकीनन. और मैच बिल्कुल रोमांचक अंदाज में शुरू हुआ है और कोई भी टीम एक दूसरे को गैप नहीं दे रही है. पर यहाँ पर कार्तिक ने गैप ढूंढा है. नवीन क्रॉस किया है मध्य रेखा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिया है अपनी टीम के लिए. Brilliant. And the way he escaped Pulagora Karthik, wow. And that is so nice. The block came in from the frontal way, but then he found a space to free his legs. A definite Kamal moment this. Yeah, because it was all Harish Gade. Harish Gade from that right cover came in across for the block but could not keep it down. What a good thinking. Pulagura Karthik, yeah. Dangling leg. दोनों पैर डैंगल कर रहे थे.
Yeah. Oh, there was a nice dangle, but then the dangle has been clogged into a tongle here, and he's been just pulled back, and the dangle is being tangled down. I got too much of a tongue twisters, but then that's how that raid was. Lakshma Reddy was so close to the midline, he was about to escape, but then a very scattered defense. First Ankalo Jampana, but then Karthik and everybody, but more importantly Karmala Dinesh's both leg pull. That's what happened there. He pulled him by closing the knees. So there, Lakshma Reddy did not get any opportunity to defend himself and escape. And wow, Rambabu, Kollamagiri Rambabu, yeah, nice running hand touch. But Navneet, if you look at these names, for people watching this for the very first time, hearing these names, Ankalo Jampana, Karmala Dinesh, Pulagara, and of course, where you say Karketi, Samba Sivasa Rao. So Karketi is probably the family name. Pulagara is a family name. Boya is a family name. Boya Sitaramudu. So family name is in Telugu or in the Telugu belt. What we do, the surname probably you call it as a family name. We use it in front of the name rather than behind. But this is a frontal attack. Nice running hand touch once again. And it is Ankalo Jampana now needs to go back. Well, that was a very fiery running hand touch from the left raider. Runs in, attacks the left corner, and in no time, he's got that point. Wonderful work there from Kommu Madhu. See, now Kommu is a family name. Unlike, say, Reddys and Naidus, it's that family name. And of course, anybody will relate to it when anybody has seen the movie Pushpa. In Pushpa, we always know what it is. It's the family name, the pride. Oh, there is no pride here for Kollamagiri Rambabu. I guess he stepped into the lobby. No, he saves his pride. He saves his pride by not getting into the lobby. Yeah, you remember what? Yeah. You've seen Pushpa movie, right, Navneet? हाँ जी, पुष्पा 1 मैंने देखा है. पुष्पा 2 देखना बचा है. अच्छा, जितनी जल्दी हो सके देख लीजिए. But I'll ask you something. What was Pushpa's family name in the movie? As it is Pushpa. No. There's a family name. Bonus point, yes. But then he wants to break the chain. And Potla Gopichand understands that this is a time. Because there is no Lakshma Reddy and Amaravati Crushers can come racing back into the match. And Pawan, with his weak attempt, with a single chain that he was holding into, breaks the chain. Potla goes back. Amazing. Yeah, the coach definitely knows how to take those points. And also, see, what he has done is Potla, he understands that there is no Lakshma Reddy and this is an opportunity for the Amaravati Crushers to inflict the all-out. So that's why he's gone in so quickly. But Palakishore, we've seen one kick earlier from him. He's actually kicked a raider standing right in the middle. Now he attempts a bonus point. Has he got it? He's also got a touch point with that. He wants a bonus, but unfortunately, Krishna defenders don't have a review. Bonus plus 1 point. One defender. Oh yeah, now they agree. Now they agree. Bonus plus 1. The umpires looked at it, discussed, then gave the decision. It's a super tackle situation now for Potla, but where did he get the touch point on? It's a running kick or a running toe touch, and then the bonus. Brilliant. Ankalo Jampana was off balance. What a time to get that bonus. Brilliant work. And Potla now charges up, Navneet, and I'm waiting for that family name to come out from you. But then, has he got 2 points? The name is Pushpa Raj. Pushpa Raj is a full name, correct? But there is that family name which he fights for. But Harish Gade once again does not stand up to the fight that came in from Potla Gopichand. And any right corner defender should block him. That does not happen with Potla. He's a strong lad. They've taken a big time out here. Krishna defenders, what is their coach saying? Let's listen to it and then come back to Pushpa's family name. రెడీగా ఉండు ఓకేనా రెండు బోనస్లు పోయినాయి మనకు ఉపయోగం ఏం లేదు ఓకేనా సరే ఏం కాదు Okay. Amaravati Crushers have got Vai Suresh. He says, Eng Kadu, that means it's okay, it's all fine, don't worry, we are in the lead, but don't give away bonus. That's all he said.
bonus ke ready ga undu. That means they will take the bonus, so you be ready for that. That's what it meant. And we wanted Krishna defenders' discussion. Yeah, we'll see if the coach or someone comes along to talk to them, but not to be. And now, important raid here, because Varla Kishore understands that the bonus is open. He can run in. He's also attacked Ankalo Jampana twice before this, but no, right corner comes in so strongly. 1 point. Wonderful work, Karmala Dinesh. It does not allow Varla Kishore to run away towards the left cover or the left corner. Please back. Bounces on him. And Navneet, actually Pushpa fights for his Moletti. Thanks to Sundar Pichai, right? Oh, absolutely. I know. You should be thanking Mr. Sundar Pichai for that. Jersey All number out 39. has been inflicted. Krishna And no defenders. thanks to Lakshma Reddy, because when Lakshma Reddy is on the bench, Krishna defenders have been pushed to the all out. And the reason where Lakshma Reddy was tackled was Ankalo Jampana and Karmala Dinesh's combination. And now Lakshma Reddy is back. He now has a mountain to climb. Yeah, the Krishna defenders, as I said, Mulleti Pushparaju. Yeah, Mulleti is the family name that he fights for, which he does not get it. But then he fights for it with his biological brother, who was not from the same mother. But then, yeah, that is where it is. And 11 to 20th minute, Lakshma Reddy becomes very active. He scores 76% of his raid points, and now he starts off with a nice bonus. Navneet, the moment he's been revived from the bench. What a nice stat that was. 11 to 20th minute is Lakshma Reddy's game, but Kollamagiri running and touch on that left corner. 1 point. जी हाँ नवीन, Jersey number जिस 8 तरीके से पोपाई जब स्पिनच खाता था ना, तो वो पावरफुल हो जाता था। उसी तरीके से 11 से 20वें मिनट में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। 76% उनका जो सक्सेस रेट बढ़ के हो जाता है। Yeah, but when I saw Popeye for the first time, I thought spinach is some foreign cuisine. But then I realized it's our Indian greens. Oh, 2 points! Some rub of the green here going to the Krishna defenders. Barla Kishore. Jersey number 20 and 17 out. Right, Boya Sitaramudu and Ankala Jampana. Yeah, the Defender, left defenders, corner please. and Defender, the right please. cover. Number 20 and 17 Combination working Wait a out minute. until now, but Barla Kishore's is pacey raiding. Yeah, something like Popeye and the spinach. Spinach in Hindi is what? I think पालक। palak. Yeah. I knew someone called Palak, but then yeah, Palak was something that I did Palak. not know. Official timeout. Official timeout. But yeah, पलक, ऑफ कोर्स, आईलिड, आंखों को जो कवर करता है, पलक। Right. I thought I said someone, but you nicely put it across. Yeah, Palak Chapakte hi. Okay. Right, but Palak Chapakte hi, Lakshma Reddy is back on the mat, but then he's also got that bonus point. Can we look at his number once again? That 11th to 20th minute, 76% of his raid points out of the 100 plus raid points that he's got in the Yuva Kabaddi Series editions. 11th to 20th minute. ये पलक चपकाए बिना देख रहे हैं, वहां देखिए उनकी आंखों को. My God, look at that kid. Oh, let's go back to that frame if possible. You're talking about Palak and Palak Japakna, but look at that kid. He did not wink his eyes even for a second. He's just wide open, checking what's happening for the Amaravati Crushers. I think he's a fan of Lakshma Reddy. Yeah, I'm sure he's a fan of Krishna defenders as well. He's in a bit of a shock, but look at this. 11th to 20th minute. Navneet, this is his game. This is the place that Amaravati Crushers needs to be really careful of, because Lakshma Reddy can take off in this period of the game. बिल्कुल, वो टेक ऑफ करने वाले हैं, उड़ान भरने वाले हैं, और देखते हैं कि उस 11 से 20वें मिनट में क्या होता है। और आप पलक झपकने की बात कर रहे थे। कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है कि अगर आप पलक झपकोगे, पूरे आंखों को खोल करके रखे पूरे। Yeah, true. We should really keep that eyelid open.
But Potla Gopichand, of course, played a player first, edition 11. He came in because of that knee injury. He was not able to play, so he was coaching the team, and now he's back. He's back on the mat as a player. Wow, what a story for Potla Gopichand as well. And he's done pretty well in this match. He's also gone out there and got a lot of points as the bonus line. Yeah, that's a tape that comes off. And this is the kid. This is a kid who did not. Oh, that is so sweet. The elder brother or the elder friend just making sure the correct way to hold the flag. He again holds it the other way around. But then any which ways, it's saffron, white and green. That's what matters a lot. Yeah, that's exactly what matters a lot. But yeah, now if you look at Potla Gopichand, he's got 5 raid points already. And Barla Kishore has also got that 5 raid points. But more to come in from Lakshma Reddy, Navneet, because he's only got 3 raid points as of now. And out of those 3, it's only 1 bonus point. So, or rather 2 bonus points and 1 touch point. Now that's a problem, right? He needs more touch points, and Amaravati Crushers needs to come out and, delete that deficit of 3 points very soon, the Krishna defenders. वे ये पूरे 7 खिलाड़ी यहाँ पे बोनस का प्रयास हुआ है. Bonus point, Amaravati Crushers. Yeah, they've got it. See now, Kollamagiri is the place. Giri in Kannada or in Telugu means mountain. Konda also means mountain. Giri also means mountain. And see, 2 bonus points and 1 touch point. That's it. And he says enough is enough. Lakshma Reddy, please go back on the bench. And look at this. Now this time it's Venkata Kareti who's got out there and had that nice diving ankle hold. Brilliant work. Superb. Yeah, see, so much cultural exchange that's gonna happen with a lot of talks. But Potla Gopichand, yeah, what a player. First knee injury, turn the pages around, Navneet. Now he can go back for more. He can definitely go back for more. Harish Gade and the other defender. Yeah, the turn the pages came out for the first time in this Andhra championship. Now I love this move. So quick to turn it around, push him, and then also get another player while going back. Amazing work. जी बिल्कुल. आप पन्ने पलटने की अक्सर बातें करते हैं नवीन. पन्ने यहाँ पर वो प्रेजेंट में पलटते हैं, पर इतिहास बदल देते हैं वो पन्नों को पलटते हुए. 12 और 19 का स्कोर है. 5 मिनट का खेल बचा है. 7 खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर. दाएं से बाएं, बाएं से दाएं. वो जो फुटवर्क देखने को मिल रहा है नवीन, फुटवर्क देखने को मिलता है कुचिपुड़ी डांस में भी और कबड्डी के खेल में भी. Oh yes, and that is the dance, that's the tune that Kishore is making the defenders of the Amaravati Crushers dance to his tunes basically. Now see, it was not a place to come in for the attack at all. The right cover came in, and because Kishore has that little pause and turn, that's really good. And that is where Barla Kishore has got so many points. And now Kollamagiri, has he stepped into the lobby? Yes, the right corner actually appeals for it, and he's got it. Pawan Kumar, he's been good in that right corner. The moment he saw the Raiders step into the lobby, he says, okay, done and dusted. Yeah, Kollamagiri Rambabu was one Raider who was doing well to support Potla Gopichand. And in the previous, he slides on into the lobby without a touch. You cannot do that. The lobbies are not activated. Lakshma Reddy tries to jump away from that double ankle hold. That is his trademark escape, Navneet. We've seen that so many times. You've got that 2 ankles or knees in your grip there, Dinesh, but then it's Lakshma Reddy who has that jumping escape. I've not seen that from many Raiders. Look at this. The moment you are holding both the legs together, he just tries to jump away and reach the midline. But I should say this, it's a very risky escape. You may hurt yourself, as Potla Gopichand has got a bonus point, but you may hurt yourself in the process of turning and jumping. So Lakshma Reddy needs to be very careful.
और आप हम लोग अक्सर बात करते हैं लायन जंप की, तरह तरीके की जंप की, लेकिन वो जो स्पेशल जंप था, क्या वो फ्रॉग जंप था? और यहाँ पर स्लाइड देखने को मिला है, यहाँ पे जंप नहीं स्लाइड देखने को मिला है। डिफेंडर्स जर्सी नंबर 1 Yeah, it's that 76% of points that he gets it, and he's got the big fish. He's got Potla Gopichan. Potla did not have any responsibility to go for the dash. He did go, but then Lakshma Reddy the slide through the lobby. Now it's time for the Krishna defenders to come back strong, because no Potla Gopichan, and of course there is no strong raider left on the mat. Watch out time for the Amaravati Crushers. They can go out there. All right, look at this for a raid. Pavan. Yeah, Polugara, Karthik. I think, Navneet, you know what? He's been in the shadow of Potla Gopichan, generally, Polugara. But then he's also come out and delivered when it is needed. Look at this. Pavan was busy trying to, direct the defense of the left corner, but then he forgot to trail back. He forgot to backtrack himself. But there is still time. There is still time for Potla's revival. Even now, Krishna defenders can come back into this match. Barla Kishore and of course Lakshma Reddy, they have done well. It's the defense what has been hurting for the defenders, isn't it? Krishna defenders, they have the defenders in their name, but the defense points is rare to come by. But this is once again making sure that the defender or the raider does not escape from Venkata Karketi's nice ankle hold. Yeah, Pani on his jersey, of course. Venkata Pani Kareti, that's what his full name is. Good work. Oh my god, Navneet, what just happened? What just happened? Ram Babu just went out there, enjoyed every bit, and just revived his captain as well. Confused defense. यहाँ पे लक्ष्मण रेड लगाने के लिए आए हैं और आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं। यकीनी तौर पे हम पर अपना वर्चस्व बनाया है। 7 पॉइंट्स की लीड है। जिस तरीके से ये हेडेड है फर्स्ट हाफ। Yeah, see, that's the whole point, isn't it? The entire story of the first half is the Krishna defenders' defense point. They have the defenders in their name, but they have not defended anything. That's the problem. And once again, Kolamagiri Rambabu goes into the lobby without a touch. This is the second time that's happening for him. It's the second occasion that Rambabu has gone into the lobby without a touch point, and then the half time for the breather that Krishna defenders wanted. Yeah, because they've been petrified. They've been, actually strangled in the throat, I should say, by Potla Gopichand and Pulgara Karthik in the raiding department, and Ankala Jampana and of course Venkata Kareti, both of them in the defense with a very nicely knit unit. The Amaravati Crushers, they are crushing the Krishna defenders for sure. The defenders, for their name, they've got only one tackle point in the entire first half. Now that's a story that Lakshma Reddy could be changing it. Of course, Samba Sivarau's got that one tackle point. That's it. Apart from him, nobody's got the tackle point at all. Pavan, on the other hand, he looks good on the right corner, but then he forgets to trail back sometimes, plays a lot of high-line defense. Yeah, the Krishna defenders. But Navneet, Krishna is the district where the great NTR comes from. ANR, NTR, both of them, big stalwarts, the icons of Telugu film industry. They come from the Krishna district. So it's the inspiration factor that the Krishna defenders should definitely take, especially in the tackle points. Only one. Defenders, सिर्फ नाम के वास्ते, that's what is happening. जी हाँ सेकेंड हाफ में हम चाहेंगे कि वो डिफेंस बेहतर करे। सिर्फ महज एक पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट्स अमरावती क्रशर्स के पास है। रेड पॉइंट्स की बात करेंगे तो वहां पे भी अमरावती लीड कर रही है 16 और 13।
एक्स्ट्राज में पॉइंट्स मिले कृष्णा डिफेंडर्स को 4, सुपर 8 1 लगाया है अमरावती ने। और अभी तक की बात करेंगे तो पोटला गोपीचंद नाम आपने सुना है, रेड पॉइंट्स उन्होंने लगाया 8। और वेंकटा करेटी, जी हाँ, 3 टैकल पॉइंट। और वो जी आप टैकल की बात कर रहे थे, 14 बार प्रयास हुआ है नवीन, 1 बार सफलता मिली है, यानी कि महज 7% के आसपास। Yeah, see, the problem for that is where you are trying to stop Potla Gopichand a lot of times, and you are trying to stop, Palugara Karthik. So, Palugara Karthik just does not look as if he will be able to be stopped. That's where the defenders of the Krishna defenders have actually had a big worrying point. They've tried to stop Potla Gopichand. It's not the Raiders coming to the defense and taking away points, the running hand touches and everything. But it's the defenders who have given away those points. That's why that 14 attempts and only 1 tackle point. And that too, that 1 tackle point came in from Karate Sambasiva Rao. I think that's the only point. Probably after that, there is nobody to stop this man, Potla Gopichand. Look at this. 8 points today, 6 touch points, and 2 bonus and 1 super raid as well included in that 6 touch points. So yeah, brilliant. See, if you look at these visuals once again here, Navneet, they should understand that the Krishna defenders that you need to stop attacking Potla Gopichand. He's quick, he's strong, he's tall, he's got the reach, and he's got the skills. So dry him up. Dry him up. That's what I always say. Dry him for points. Make him run around. Let's see how the second half opens up as Komu Madhu comes in. जी हाँ, बिल्कुल। वो सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए धर करके दबोचा गया है। 1 point. Wow, Amaravati crushes. he's good. He's very, very good. Is Venkatapani. Wow, that was something for the pace that he actually brings in. Komu Madhu is a pacey raider, but look at this. He caught him midair, he pinned him down, and a double ankle hold. Brilliant work. And that's probably, why the Amaravati Crushers are not bothered, even if Potla Gopichand is not on the mat. Because they've got that defense which can bring matters back into their control. Pulgara Karthik once again just trying to check the field, but because he does not have to do anything silly, because he's got that 6-point lead behind him, so he can happily go back. Yeah, good work, very good thinking, very good work as well. लक्ष्मा रेड्डी यहाँ पर आए हैं, हाथों को एक्सटेंड किया, बहुत ही कैजुअली एक्सटेंड किया था नवीन हाथों को। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी बोल रहे हैं आपने मुझे टच नहीं किया है, वहीं लक्ष्मा रेड्डी बोले निश्चित रूप से किया है, मैं रिव्यू लेने के लिए भी रेडी हूँ। Perfect. Oh, and Potla Gopichand wants to review this. The running hand touch on Lakshma Reddy, and he's gone into the lobby as well. Potla Gopichand, the ex-coach of Lakshma Reddy, knows it. Yeah, okay, it's Boya Sitaramudu who's been now called into the lobby. It's going to be interesting. They are saying no touch point. And it's a very crucial review. Okay, we'll get the audio sorted very soon, but the whole point is where Potla Gopichand thinks that Lakshma Reddy has gone to the lobby without any touch point. What a story, of course, for of Lakshma Reddy, the son of a farmer, Anji Reddy, and of course his mother Danamma managing the homes. It's been hard toil for him right from the young age as well. For Lakshma Reddy, if we can look at him, it'd be really nice. And the review is successful. They've given Lakshma Reddy the direction to go and sit on the bench. What a review! What a review from Potla Gopichand. We'll have to look at the replays as well.
to completely analyze what has happened. He's been venturing into the world of sports right from the age of 15 years to support his family, but here is not able to support his team with that attempt. He attempted something on the right shoulder, he thought, but no, said Boya Sitaramudu immediately. He shouldn't have gone to the lobby. And Potla Gopichan, has he gone out of the lobby fully? Yeah, read it out. It's a super tackle. It's a super tackle. Samba Sivarao finally disbalances Number one, please. Number one, please. Potla. Jersey number 8. Jersey They've number given 8. Raider out. Jersey It's a number 8, super please. tackle. First ever super tackle here for the Krishna defenders, but they want to discuss this first. The umpires. Let's look at the replay. It's going to be an interesting super tackle here. I thought he was completely out, Navneet. Watch this. First attempts on the right corner, the right flank, and then Samba Sivarao comes in. Has he taken his leg off? Has he taken his leg off, Potla? There, that's the place he took his leg off. He's completely out of the lobby, no connection with the mat. Very good decision there from the umpire, who's standing. Super tackle. 2 Yeah. points. Krishna defenders. It's a super tackle here for the Krishna defenders. Can this be a small window of a comeback for them? जी हम नवीन बात कर रहे थे कि डिफेंस में पॉइंट्स नहीं ला रहा है और सीधे यहां पर सुपर टैकल किया है. And Potla wants a review. Potla wants a review. No, Potla, you need to go back on the front, captain. Please go back on the bench. He's again taking a review for what? 1, please. The decision has Jersey come number in 1 saying it's a super tackle. Potla will understand when he goes back and watches the replay on one of our feeds. Krishna. The Yuva defenders. Sati, Please, of course, wait, everybody wait, streaming please. it. He's inside. A bit delayed. Jersey number 10. Dan Fan Code, of course, our official partner. But then all the Yuva Sati streaming it on the websites, on the digital platforms. And of course, Sportsmaster is one of our Yuva Sati who's also been a very good partner for us. Then there's Yuva Andhra Championship 2025, a feeder to the Telugu Kabaddi League that's going to happen from Yuva Kabaddi series. But Right. yeah, Potla, if you go back and see, you had lost contact from the lobby. That's the problem. Right. That's where you were being given out. తెలుగులో చెప్పాలంటే మీరు లాబీతో అక్కడ టచ్ని వాళ్ళు వీరు వదిలేశారు, కంప్లీట్గా బయట పోయినారు. తర్వాత దట్స్ వై ది సూపర్ టాకిల్ వాస్ గివెన్. సో ప్రాబ్లీ జస్ట్ ఫర్ పోట్లా టు గో బ్యాక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వై వాస్ హీ గివెన్ అవుట్. और बरला किशोर, बरला ये अगेन यूनिक नेम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस यूनिक है. क्या वहां पर क्रॉस किया है, क्योंकि टच निश्चित रूप से किया है. Venkatapani Kareti, that's his fourth tackle point. 100% tackle success rate for this defender. He's been very impressive. Please. Barla Kishore was so close to the midline. No review. Sorry, Krishna defenders, you've lost a review. Only one review per match. But look at this. It's so close. Touch and go. Touch and go. Yeah, he touched it. Now he has to go. He did not cross the midline. Venkatapani Karketi. Oh, do they? Krishna defenders had lost a review in the first half. I mean, are we awarding 2 reviews per match? Are we awarding 1 review per half? I thought it's only 1 per match, but then it's Barla Kishore. But whether it's 1 review per match or 1 review per half, he's definitely out, Navneet. He's just touching the midline. He did not cross it. Yeah, Raider out. Yeah, so it stands at 1 review per match. It's not 1 review per half. It's 1 review per match. Krishna defenders, I'm so sorry you lost a review in the first half itself. And now Barla Kishore touches the midline, doesn't cross it. कहते हैं कि मुंह लगा पर आप खा नहीं पाए, वैसा ही कुछ हुआ. और यहाँ पर निश्चित रूप से खाया है. That is safe. 2 points. Amaravati crosses. Oh my God. Jersey number 8 Oh my God. and 7. Again, the issue of going and attacking Potla Gopichan. That's the problem.
Samba Sivarao need to understand that that is not the time, that's not the place. He's one far away from the Raider, two no support, three no grip, and Potla is a strong, strong lad. You just can't stop him with these hasty efforts. Wow, what a player. Yeah, it is one review per match. So they've lost that review. And Potla also has lost the review for Amaravati Crushers. So no teams have left with the reviews. What a match. What a match. He is trying to have 8 raid points, Navneet. And he's just doing what he does always the best. Lead from the front, whether it is the coach or the captain. He's doing it nicely. And what I love about the points that he scored is he's got the Super 10. Congratulations there. Right. Whatever he's done, he's got all touch points, only 2 bonus points. But that is where it is very, very nice. You get more touch points. You always try to push the defense, and you also push the opponents to the all out. Now, this is the second all out that the Krishna defenders are staring at. Only one man left on the mat. Only one player, because the previous raid, he went out there and crushed the entire defense system. That was really good. और यहाँ पे रेखाएं मिट गई हैं नवीन. यहाँ पोटला गोपीचंद अमरावती क्रशर्स के 8 रेड, 8 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, एक सुपर रेड भी लगाया और आज उन्होंने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया है. Yeah, now that's why I was always impressed with him. 8 touch points, Navneet, means a lot. And look at the skills that he's got. He's brutal. He does not bother who's coming in front of him. He pushes them, turns the pages around, and he's got that attacking mode. Yeah, this was a super tackle. This probably shouldn't have been in this visuals. This is a super tackle that happened. This is why he was being given out. But then apart from that one error, he has done wonderfully well in this match. Apart from that super tackle, second Super 10 in the Yuva Kabaddi series is career, but first one in the Yuva Andhra Championship 2025 as Pakam Sudhir comes along. Yeah, Krishna defenders need raiders, but the Tupki doesn't work out. They need defenders now, and Krishna defenders have been pushed to the second all out. Yeah, they've got the bonus point though. They inducted in a raider just because he was the last man standing. He wanted a touch point. He went in deep, but look at this. Nice cover that was being put along from Karmala Dinesh, and then the support came in from behind. Please come. So second all out, Navneet. I think this is getting tougher and tougher for the Krishna defenders. Krishna defenders. Wait. Please turn back. Jersey number 2 out. 16 in. ये नवीन And जैसे again, वक्त गुजर जाएगा और 2 बार ऑल आउट हो गए जैसा कि आप कह रहे थे. जी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे. Mallikarjun now has come in the left cover defense. So somewhere the coach is thinking that the defense system needs to change. Yeah, 10-point difference, but it really can be nullified. Because Amaravati Crushers, if you don't give them points, that's enough. But Kolamagiri Rambabu once again takes exactly on Mallikarjun on that left cover. Yeah, he was just been substituted in and he's now back on the bench. See, you playing highline defense, and what is happening is Kolamagiri Rambabu and even Potla Gopichand, they go deep. And when you have a raider who is coming to you attacking so deep inside, why take the risk of play a highline defense? Now that is the problem with the Krishna defenders even until now. Lakshma Reddy can do what he does best. Only one though. Out.
But Navneet, जी हाँ, बिल्कुल। if you take off that super tackle, okay, it is only 1 point on the defense, and thankfully now Potla Gopichand has been pushed back. Well, another luck factor can come in. जी बिल्कुल, आप यकीनी रूप से कबड्डी की बेसिक्स की बात कर रहे हैं और ये बेसिक्स सही नहीं रख रही है कृष्णा डिफेंडर्स। एक खिलाड़ी जो अंदर तक अटैक करने के लिए रेडी है, उसको आप एडवांस टैकल बार-बार बारंबार कर रहे हैं। Crushers, jersey number 16 out. Yeah, true. I mean, see now once again, see what is happening is where the defenders, they're trying to play again the covers more importantly. When again it is Mallikarjun, he needs to understand that it is not the point of the defenders now bringing the Krishna defenders back in the match. It's going to be the Raiders, because this match now with the difference of say more than 11 points, it should be the Raiders. It's Parla Kishore, Lakshma Reddy, and yeah, someone from the bench. If there's a Raider, there's a good Raider, he can come along, because Komu Madhu has not done well at all. And even now, watch out, Navneet. The defense needs to let Gopi Chand loose, but then again they go to pounce on him. But finally they have. Number 13. Oh no, they have not. Please, They have one. not. Potla 7 Gopi Chand, eight. he's And unstoppable. jersey number 4. Jersey number 4 also go. My God, even with such a number 4. combinative effort, they're not able to stop. Is that a 4-point raid? Yes, it is. It's a super duper raid. 4 touch points, and once again, Potla Gopi Chand shows why Jersey number, sir. he's the coach and he is the captain of Amaravati Crushers. He's definitely crushed the defense in this raid. Brilliant Sir, please, raid jersey number of the tournament for me until now. sequence, sir. Sir, please, jersey number order, sir. Yeah, they're worried about the jersey number on the order. Yeah, because the the line umpires and the substitution umpires and the revival umpires, they really Sir, need to please, take jersey number order, please. into consideration of who's gone first. Let's look at the replay. Let's look at the replay and help the umpires out here. Let's see who touched Potla first. I'm sure it is Samba Sivarao. Yeah, first it was left corner Samba Sivarao. 8 corner, sir. Yeah, 8 is the corner, correct. That is 7 Karketi Samba Sivarao. and corner. Okay. 7 4 8 and corner. 12. And then it was the others. First 7 4 8 last. Yeah, okay. 7 First- 4 OTP 8 जैसा है। next. Yeah, 7, 4, 8. 4 points. Amaravati Crushers. Yeah, Jersey number 4 4 touch points. 7 8 and 12 out. Oh my God. Yeah, so first they say Keela Bharat. Then, of course, there's another defender, Palepo Harish, I guess. And then Karketi Samba Sivarao. My God, he's once again wiped off the entire Krishna defenders' side. And Parla Kishore can keep kicking in thin air. He will not get anything from this defense of Amaravati Crushers. They've played like such coordinated unit. Ah, come on. Karmala Dinesh. I was just trying to appreciate your defensive move, but then 10 out. there is a small heroic that's been shown. But I think, you know what, Navneet, overall, Potla Gopichand has managed the team nicely, because I don't see why Suresh coming in and getting involved too much, the coach. It's all Potla Gopichand who manages the movement of the defense, who manages the raiding front, and look at how deep he goes. Look at how deep he goes. It's a super tackle situation. And then he's been tackled for the second time. Brilliant work. Enough, boys. That's fine. The Raiders Super given up. tackle. 2 points. Yeah, Krishna coach, come on. defenders. I like the umpire, how he said that, Navneet. 2 points, Krishna defenders. No, the way he said super tackle. Yeah, Mallikarjun needed that. And also, I understand why that effort from the umpire, because it's Potla Gopichand. Because it's the big man. Now needs to spend some time on the bench.
क्या आपको एक बार पूछना पड़ेगा अंपायर से, क्या वो कमेंट्री में भी इंटरेस्टेड है। मॉडरेशन अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर कोई मॉडरेशन नहीं कर पाए बरला किशोर। धर दिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। Yeah. Barla Kishore. Yeah, once again, see now that's again the Raiders also not contributing now because see it's that momentum, right? Ankalo Jampana has got the momentum for himself. He's got Venkata Pani with him. Yeah, everybody, especially Venkatapani Karketi for me is a standout defender today for the Amaravati Crushers. And another super tackle situation here. Kolama Giri Rambabu has come along. The defense of the Krishna defenders now at least needs to understand it's more than 9.5 minutes left. So you just don't. Oh, well. Can they? No, they can't. It's a nice attempt from Mallikarjun once again. But then Kolamagiri Rambabu was almost nabbed. But then at the last minute, the fish somehow escaped the nets. Yeah, the ankle hold was very strong, Navneet. And a Kamal moment definitely for the escape, what he showed. The presence of mind, what he showed. And even if Samba Sivara was coming along from that right corner, but he did not just lose sight of the center line. या उस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड के बाद भी अगर कोई निकल जाए तो आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, मछली जाल से निकल गई। और यहाँ पर मछली को पकड़ने के लिए बहुत खराब कोशिश, एडवांस टैकल। Yeah, it was a bad attempt. But see, even in that bad attempt, you know, Sitaramu has gone in. Boya Sitaramudu, he's gone in only as a one defender. See, he's got the bonus point, only one defender, so that's okay. So the touch point is only one. So there is only one revival. Even now, there's a chance of a super tackle situation. And Potla Gopichan wants to somehow take a point out of that. And he marches along. Jersey number 13 out. And now the umpire did not have that feel. Back. Yeah, now the umpire did not have that feel, no? Where, first he went to Lakshma Reddy. First he wanted Lakshma Reddy's blood, but then he thought, okay, Komu Madhu also is a good raider. So 2 raiders. Yeah, small thinking needed there from the Krishna defenders to put a defender in. And now it's Lakshma Reddy, the last man standing. It's going to be the third all out if this happens. And this match has, I think, slipped away from the Krishna defenders, Navneet. It's very, very unlikely that they will probably come back. And now see the momentum, the body language, everything is positive for the Amaravati Crushers. And the third all out, yeah, Krishna defenders have lost a lot of self-motivation and confidence. या मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, अगर आपको आगे बढ़ना है, निरंतर प्रयास करना है, तो वो मोटिवेशन फ्यूल की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पर वो फ्यूल लग नहीं रहा है कि कृष्णा डिफेंडर्स में है, वो आग। Yeah, strategic timeout as well. They can discuss things, the Krishna defenders, but what do they discuss? They need to discuss why are we now trying to stop Potla Gopi Chand. Remember, every team plays each other twice. But this man, number 18, Venkatapani Karketi, he is the man who's got the high five as well for the Amaravati Crushers. And Navneet, 100% tackle success rate. Not even once. He's put a move wrong. Ante. Yeah, see, why Suresh wants the lead to be continued. Krishna defenders don't have somebody to support them. जितनी बार जाल फेंकेंगे उतनी बार पकड़ेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट खत्म होने वाला है, सीटी बजेगी, खेल फिर से शुरुआत होगा। Yeah, see, they don't want to give the Krishna defenders even 1 point out of this match. There's a defender who's coming in. I think there should be a defender. M. Suman comes in. He should be a defender for me. He looks like a defender. He's hefty. He's got broad shoulders.
Amaravati Crushers. Okay. Please come. They are trying Please to check back the them. bench, I guess. Yeah. Jersey number 20 out, 11 in. Please turn, Ankalu please Jampana turn. goes out. Ashok Reddy Please comes come. in. Jersey number 16 out, 19 in. Yeah. Pulagara Karthik goes out. And yeah, 19. I think it's Sri Hari. Yeah, he comes in. That's nice. Rider, wait, rider. Devala Sri Hari. Yeah, that's nice. Where the coach is trying to check the bench as well. In the first match, because of that massive lead, yeah, Devala Sri Hari. This is the man. Oh, wanted to escape. Doesn't get it. Doesn't get it. He was not allowed to settle down at all. 1 point. See, this is what Krishna happens. Defenders. Navneet, any raider or defender coming in from the bench, you should not try too much in the first raid. And that right cover saw that opportunity. He went in deep. He saw that and then pounced on him. Poor Devala Srihari needs to go back on the bench. जी हाँ, जंपाना बाहर गए, रेड्डी अंदर आए हैं और 3 चेन यहाँ पर बरला किशोर को शिकार बनाने के लिए अपना जाल बुन रही है। वहां पर बोनस निश्चित रूप से किशोर ने लिया है। Krishna Defenders. Yeah. Again, that's not going to hurt the Amaravati Crushers at all. So they are okay, they are fine. And see, if the defense is more than 7 points, Krishna defenders don't get even 1 point out of this match. So they need to make sure the difference, the score difference stays 7 or within that. Oh, well, he was blinded, but then Rider safe. what a handy Amaravati dash that Crushers. was from Jersey Rambabu. number Brilliant. 7 and Kolamagiri Rambabu, he should start in the starting 7. He was from the bench. And he also completed his Super 10. A second raider from the Amaravati Crushers to complete his Super 10. What else? What else a defender can do? He tried his best, Kila Bharat. But then जी और वो they are the अपने anti-dash. नीज में थे। जब वो ब्लॉक कर रहे थे तो अपने नीज में थे, फाउंडेशन उनका सही नहीं था और इसीलिए उनको पुश करना बहुत आसान हो गया था रेडर के लिए। bonus point. Krishna Defenders. Yeah, very true. He did not have that proper base, and what is Lakshma Reddy trying to do only by taking a bonus point? See, this is what I don't really appreciate and support. He's thrown in the white towel. Is Lakshma Reddy. Kolomagiri Rambabu, of course, has thrown in the red flag and say, yeah, that's my 11th point. Yeah, I was really unhappy with Lakshma Reddy. Kolomagiri Rambabu says, okay, Naveen, don't be so unhappy. I will touch him, send him on the bench. Rider, please back. Why I was unhappy with Lakshma Reddy is because you're the lead raider of the team. Amaravati Crushers. In the last 5 minutes, your team is trailing by so many points, and you go there, take a bonus point, and come back for what? You should now try to make that score difference come down to 7 points. Jersey number It's 10 massive. out, 6 in. Okay, they are putting in Ravaru Sunil Kumar. Yeah, in the place of Karmala Dinesh. Okay, Substitution. there's another defender Krishna who's been Defenders. replaced. Please come. Please turn back. Jersey number 8 out, 17 in. Okay. Now this is once again another opportunity for Murli, Chandaka Murli. That dress is definitely happy Krishna Janmashtami. Brilliant. जी हाँ, ये फेस्टिवल्स में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। करमाला दिनेश बाहर गए हैं। ओह, बरला किशोर को 1 point. Krishna एक और Defenders. पॉइंट मिलेगा, Jersey number लेकिन ये 11 एक पॉइंट से नहीं चलेगा नवीन। यहाँ पर गुच्छों Yeah. में पॉइंट्स लाना पड़ेगा। Yeah, see now, I think Krishna defenders have a big opportunity here, Navneet. You know, see, because it's Ashok Reddy, it's not Ankalo Jampana, it's Ashok Reddy. No proper combination there in that left corner. Because the coach wants to try the bench for the Amaravati Crushers, and that's the opportunity where the Krishna defenders can come in and reduce that score difference. They need to score 40, remember, they need to still score 8 points, Krishna defenders, and now that's a good start. You put out Potla Gopichand on the bench, you definitely can score 8 points within this 4.5 minutes that's left. Well, can they get 1 point, the Krishna defenders, out of this match? Nice double thigh hold from the front from Yam Suman.
My God, that's the Time skill. out. That's the skill what was Amaravati needed. Crushers. Suman again coming in from the bench. Navneet does well. What's he trying to say? जी हाँ నెక్స్ట్ ఇదిగో నెక్స్ట్ రైట్కి వస్తారు అబ్బాయి వస్తారు అటాక్ ఆడతారు ఓకేనా రైట్ కాంటర్ లెఫ్ట్ కాంటర్ మీద అటాక్ ఆడతారు ఓకేనా చూడు వెనకాల ఫాలో చూసుకో ఓకేనా Okay. So what he's trying to say is the Raiders will come in and try to attack the left corner. Yanakala follow chusko means Yanakala is behind. Okay. So be ready to have the follow through of the dash from behind. Oh, M Suman, he should be concentrating on the defense. Oh well, that's a nice whirl kick and a tumble to escape. He's got a body of a defender. He showed how Potla Gopichand needs to be stopped, and look at this for the agility. Navneet, being so hefty, being such broad-shouldered, and that strong-chested man. Look at this, like a flubber, he just escaped. जी हाँ बहुत आसानी से वहाँ escape किया और क्या कमाल के Defenders. rolling on the floor. Yeah, but Devala Srihari wanted to roll up something for his team, but could not. Again, this substitution is hurting Amaravati Crushers. But then why Suresh, the coach of Amaravati Crushers, should not be bothered too much. Because his team has done well, and Lakshma Reddy gets 2 points. No, Raider out! Raider out! Super Is the call, don't have a 2 review. points. Amaravati It's a Crushers. super tackle that's been going in. Because they don't have a review is the Krishna defenders. The dash, Navneet, that was detrimental for Lakshma Reddy. I think he got a touch point while the way he was being escaped on the lobby. No, they don't have a review. Krishna defenders don't have a review, sir. Defender. Come on, Lord. You also. Jersey number 17 come. They lost the review. The TV umpire will probably tell them that. The TV umpire will probably tell them that there is no review. Reviews over. No review. Yeah, thank you, sir. Please go. Only one review per match. Kadabai, okka review, okka match ke ante. That's what they need to say. They're thinking that it's one review per half, but not there. Number 4, please. So let's look at what happened to Lakshma Reddy. In between this confusion, let's not forget what happened to Lakshma Reddy there. He went in deep, attacked the right corner, but then during his escape, the dash came in at the right time. Check those footage. Raiders set. 1 point. Amaravati Crushers. Jersey number Yeah, Navneet 16. Rambabu gets a out. point, and Mallikarjun is being targeted now. Oh well. Red out. 1 point. Barla Kishore, he was the only man who could have revived Lakshma Reddy. But then, now he's also been sent back. See, if you look at this defense, why is it so non-coordinated? It's because they're all from the bench. And Goya Sitaramudu, of course, just tries to support. And this is 51 points. Amaravati Crushers become the top team to get a lot of points. Because in the previous match yesterday, 48 was the highest. That was the highest one from Vizianagaram Ninjas. But now this is 50. Potla Gopichand, of course, is the main man behind that. But then he's been really well supported by Komalagiri Rambabu. And Suman now, Navneet. Gets another point Bonus plus with 1 his point. Krishna defender. confusing Jersey moves. number 11 out.
out. Wait. Well, he's just tried to come in and have few tackle points and touch points, but then this is too late. This is very, very late now for the Krishna defenders. The train has left Krishna and he's gone towards Amaravati. The train's name is Victory. Yeah, that's it. Match over. And Krishna defenders will try to go back and analyze their problems, especially their defending errors. But Potla Gopichand, what a man, what a captain, and what a raider. He's led from the front. He's managed the defense unit very, very well. He's been ably supported by Kollamagiri Ram Babu and more importantly, Venkatapani Kareti. Brilliant. It is that cohesive effort for the Amaravati Crushers to register the highest number in a match at the Yuva Andhra Championship 2025, a feeder to Telugu Kabaddi League. This is an amazing output. In the first match, they scored more than 50. That's 51 to Amaravati Crushers. And of course, they finish in with 37, the Krishna defenders. So that means they don't get even 1 point out of this match. And more importantly, if you really look at those numbers, the tackle points got better in the second half because they got a couple of super tackles for themselves. That's it. Nothing else. Apart from that, it's nothing that is really gone in the way of the Krishna defenders at all. जी बिल्कुल 1 पॉइंट से 8 पर तो पहुंचे, लेकिन दिस इज नॉट एनफ फॉर कृष्णा डिफेंडर्स। 51 और 37 पे ये मैच नंबर 5 की समाप्ति हो गई है और अब क्रशर्स ने डिफेंडर्स को बिल्कुल क्रश सा कर दिया है नवीन। और 34 में से सिर्फ 6 बार सफलता, यानी कि महज 16%। ऐसा तो कोई भी बच्चा परफॉर्म करेगा तो हार मिलेगी उसे। Yeah, the number of attempts. I mean, we saw what happened in the first half. See, 14 attempts in the first half, 1 point, and they've added on. My God, another 20 attempts in the second half. Very, very poor for the Krishna defenders in terms of the defensive skills. But we expected too much from Lakshma Reddy. Did not happen. But Potla Gopichand, the coach of Lakshma Reddy, in one of the Yuva Kabaddi series edition, I think season 11. The second division matches, but he's got 15 raid points in this match, 13 for Komalagiri Rambabu. He came in from the bench, did really well, but look at this. Venkata Kareti, Pani Venkata Kareti, brilliant with that 5 tackle points, high five for him. And Karmala Dinesh also contributing with 4 tackle points. And yeah, don't forget, Pulagara Karthik with 4 raid points. So it's a very, very good all-round unit that is being given in for the Amaravati Crushers. But Navneet, yeah, Barla Kishore was somewhere good, but he should have been really good. Lakshma Reddy, I did not really get impressed with him today because he was just trying to get the bonus points. But then the defense of the Krishna defenders, what do you call now the Krishna defenders when they don't get defense points? Probably Krishna trying to be defenders. Maybe they should try, and there is no time. They really need to try very quickly. And Amaravati Crushers, watch out, they have another match in the evening that's going to come up. And they are facing another opponent who will be now really worried of this man, Potla Gopichand. 15 raid points today out of 12 raids. And the intention, the aggression that he brought on the Kabaddi match was speechless. It was really good. He just completely went out there, flummoxed the defense of Krishna defenders, and he was totally flabbergasting on this match. No words for what he brought about today, the captain of the Amaravati Crushers. Yeah, earlier in the match he looked a little silent, I should say. He did not go out there and blast off from the first raid, but then when he saw the moves of the defenders, he knew what exactly needs to be done. Go out there, derail them, break their confidence and crush their motivation. That's what the man did, the captain of the Amaravati Crushers. 1400 points, 1400 rupees for him. That's really good. Your best raider of the match. और डिफेंस की बात करेंगे तो वेंकटा करेती, इन्होंने 5 टैकल पॉइंट्स लिया है, 6 बार प्रयास किया, सक्सेस रेट 83% और सीजन का एवरेज नहीं दिखाया जाएगा।
क्योंकि शायद इनका ये पहला सीजन. Yeah, that's why. That's why. But he was really impressive even in his first match in the first season. Venkatapani Kareti. He was playing at the left cover, but 1400 rupees for him, the best defender of the match. But he also did really well from the left corner. You know, I think we'll have to pan up and show his face as well. Zoom out. Yeah, there we go. That's the man. Yeah, wonderful. So, what he did also really well is he played in both the positions, Navneet. He was playing in the left cover there. He went in for those thigh holds, he went in for those waist holds. But then when Ankalo Jampana was not around, he was also attacking the Raiders from the left corner. Especially against, now look at where he is. He's in the left corner. There. Even in the left corner, he goes out there and attacks the Raiders with so much ease. Yeah, because it's the same feet position, it's the same body position in the left cover and the left corner. But yeah, the next match is the Vizag Commandos taking on the Tirupati Raiders. That's going to happen in a short while from now from Chennupati Ramakotaya Municipal Corporation Indoor Stadium at 11:45. I'm Naveen Shori signing off alongside with Navneet. See you soon in this match. Check, check. You want check. One. Check. You want okay one. Check 1 2 2. Check.
check, 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 check. Check, check. Check, check. Tanmay, am I audible? Test on to. Test, test, test. Check, check, 1, 2, 3, check 1. You one na. Sir. Check, check, check 1, 2. Test, test, test 1, 2. Test, test 1, 2. Check, check. Check 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. A very good morning and welcome to day 2 of the Yuva Andhra Championship. The first match, of course, which just got over, featured the Amaravati Crushers and the Krishna Defenders. A crushing defeat for the Crushers as they beat the Defenders by 14 points. An exciting matchup. But right now we're going to witness match number 6, where the Vizag Commandos will take on the Tirupati Raiders. 3 more matches will follow after, and we will see the Kakinada Kraken take on the Vijayanagaram Ninjas, after which the Kurnool Knights will go up against the Bhimavaram Guardians, and
And the last match for this Saturday, we'll see Amaravati Crushers in action again against the Tirupati Raiders. So double headers for both of these teams today, and it will be quite interesting to see how teams play when they have to play two matches on a certain day. But let's shift our focus to match number 6 here at the Yuva Andhra Championship. Vizag Commandos, Tirupati Raiders, two strong teams that's going to go up against each other for the first time live from the Chennupati Rama Kotaya Municipal Corporation Indoor Stadium. And now it's time to bring both the teams on to the mat. విశాఖ సముద్ర కెరటాల్లో మ్యాట్ పైన పోటెత్తడానికి వచ్చేస్తున్నారు వైజాగ్ కమాండోస్. వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ గాడ్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువు ఉన్న తిరుపతి నుంచి వాళ్ళ సత్తా చాటడానికి వచ్చేస్తున్నారు తిరుపతి రైడర్స్. A feeder into the Telugu Kabaddi League is exactly what the Yuva Andhra Championship is paving the way for. And these teams here in day 2 will look to settle in to the tournament and, of course, set their sights towards going all the way. Before all of that, we will witness match number 6 between the Commandos and the Raiders. Let's take a look at the starting 7 for the Commandos. Corners, we will see Rai Narendra and Sheikh Akbar. Along with them, the defensive lines. The covers will be Ram Mohan Rao and Cholangi Anil Kumar. Let's look at the Raiders starting in. We have on the right side Shiva Ganesh Reddy with Durga Prasad, and not to forget, coming back into the Yuva platform, Teja Noli, the captain, a vicious Raider. Let's look at the substitutes. That's Kampala Mahesh, Prithvi Raju, Rupesh Kumar, Yashwant Kumar, and Sarkesh. So this is the starting lineup for the Commandos. And along with me in the commentary box today, we have Naveen joining us. Good morning, Naveen. Good morning, Ryan. I hope everything is good with you. But the Tirupati Raiders are all bright and nice in that orange outfit. Have come along, and Vellore Srinivasu, of course, will be the captain. Ayagam Veerababu will be on the other corner. Sivaramakrishna, Sai Sankar, and Babi Nayak will be there in the raiding trio. Hari Prasad Reddy and Maladi Srihari will be in the covers as well. And Mahesh, of course, will be there. Durga Rao, Ravindranath Tagore. Wow, that's a lovely name as well. And yeah, Bhide Brahmaya, Janardana Reddy, and Gangadhara Srikant and Anand Babu will be there, of course, in the substitution lines. And on to our right, of course, is Tirupati Raiders in the orange outfit, as I said, and Vizag Commandos in that purple on the left side of our screen. And the toss, yeah, it's very important that it was being flipped over, and it went into the favor of course, the place where it is really known for the laddus. Wanted to actually snatch the coin away on that occasion, Vellore Srinivasu. But then, yeah, it is Tirupati Raiders who won the toss, and they will be asking Vizag Commandos to raid first. Now, Ryan, I'm sure you'll be really familiar with the Tirupati Laddu.
one of the world's best. And yeah, more than the laddu, the place is so divine. Is Tirupati, Tirumala, of course, is the Konda. Tirupati is the place, and Tirupati Raiders have won the toss, and the Vizag Commandos will be charging first. Oh, the Tirupati Laddu reference definitely brought water into my mouth. As it's a morning, we want to get that sweet in because of the adrenaline rush. Let's not keep the viewers waiting and head into the countdown to get this match underway. Yeah, all important match for both these teams because they will want to put up their winning score on the board because we saw what happened in the previous match. It was the Amaravati Crushers who crushed the Krishna defenders big time. 51 points in that match and a massive score difference. So it's that Pool B matches that we are all into. And Vizag Commandos, of course, first raid. Nuli Teja, the captain, he'll just check some waters and come back. Empty raid to start off. Oh, good to see him starting off on a composed note. You usually see recurring players on a platform like this want to go guns blazing from the very first one, but he was quite patient. Nevertheless, it's Srini Vasu who's come in for the Raiders, and he has struck as a Raider in his very first raid. Let us say. Yeah, Valluru Srinivasulu, wow, the captain. Is that left corner defender also starts off the raid as well. Nice. He got that kick going in. First of all, yeah, he just tried that kick and then that hand touch. So easily done. Valluru Srinivasulu, and he gets the left corner. Sheikh Akbar. Shiva Ganesh Reddy has come in for his first raid of the Vizag Commandos, and he's gotten the bonus, which means he's opened the tally for his team. Much needed. Looked good in that move. And open that first point. It's so necessary. Once again, Babi Nayak. Babi Nayak is a tall raider. He knows that the defense will pounce on him from that left cover or the right corner. He's playing in that VR. Nice. He pushes them back. That's a good move. Yeah, he does not want the defense to analyze and settle down into his moves. Yeah, good that he pushed them both back. The left cover and the left corner. Commandos now introducing the third player. This is the third raid, and Durga Prasad. Did he snatch a point there? He did seem to stretch his arm out, and he has. Plus 1 point. Yeah. Vizag Commandos. Yeah, because Hari Prasad Reddy was playing high line defense in that left cover. Yeah, there you see. So high line and no backtracking skills. Does not go back at all. It's so easy for the young lad there, Durga Prasad. Sai Shankar now has met the chain of the Commandos that will stop him and get that tackle point to send the Raider back. Oh, Rai Narendra. Nice that they both went in with the chain, Rai Narendra. And of course, it was Durga Prasad. And see, the chain also ran so nicely put across. The defender goes to the top half of the body, and the legs have been taken care by the defender, and in fact, by the raider. So, that's the combination you always want to check when you're in the chain tackle. And Nuli Teja now has been ankle held by Valluru Srinivasulu. Captain does well from the left corner. Yeah, he can raid. He can go out there and get those tackle points. What am I seeing in that jersey? Ayanam Veerababu has got Kabaddi as his jersey name. I could read Kabaddi. Did you notice that? Number 8 jersey on the Tirupati Raiders. Yeah, this lad.
We'll get back to that. Run it out. 1 point. Shiva Ramakrishna this Vijay time Commandos. was not able to have his way. He went in on that right side, but just too many commandos charging at him at once. Yeah, again, that combination, isn't it? Look at this. The defender goes to the top of the body and the support comes in at the legs. And this is a cover combination that's really worked well. Chalagiri, Anil Kumar and Ram Mohan Rao. And that kick. Ganesh. Wonderful. He knew that Vellore Srinivasulu was making matters difficult for the Vizag Commandos, and he's taken off the man who's only the lone bread earner. He went in, got the touch point, then the tackle point. After that, nothing for the Tirupati brothers, and now the bread earner is on the bench. Ganesh with that nice side kick. Look at how deep he goes in. The right corner had to come in. That's what Vellore Srinivasulu was asking for. Look at this. He raises his hands and says, "What are you guys doing?" It's a beautiful replay to watch as well. And now it's Babi Nayak who's in for the Tirupati Raiders. He's deep in on that left side, challenging the right corner, but it looks like no point coming off of it. Yeah, they should now. I think Vellore Srinivasu now becomes the only, as I said, bread earner. He needs to be revived. That'll help. That'll really help. Good work. Run it out. The diving ankle hold. Look at that Kabaddi written on his jersey. Number 8. I am Veera Babu. You should have said, I am Veera Babu. Instead of that, he's written Kabaddi on his jersey. But then this is Hari Prasad Reddy getting the tackle point with the diving ankle hold. Look at this. Number 8, Kabaddi, right there. But it is I am Veera Babu, the right corner defender. That's the first time, right? We're watching that. Kabaddi. Oh yes, I think he's decided to have that on as his brand name. Usually we see players put in their nicknames. Perhaps I'm sure we will learn the story behind that in the days to come. And now it's Babi Nayak once again not able to go in deep, and I think the Raiders are hesitating a bit given the fact that the Commandos were setting the traps pretty well. Ooh, look at this for a trap! Look at this for a trap! 1 point. Babi Nayak! Tirupati Raiders. Surprise! That would have made the Sultan of Surprises proud. The angle was set in from Hari Prasad Reddy, but Babi Nayak came in from that left in. Did not realize that at all is Durga Prasad. We will go back to that replay once again when we get that. But that's something which was really good. And this is the first do or die raid of this match, and Tirupati Raiders got it. Sai Shankar, onus is on him. The previous 2 raids from his team, we saw them not force themselves towards getting the point. Here he'll have to, but the defender is going to have the last laugh of that. Vijay Commandos. Yeah, the reason why Rai Narendra had that last laugh is because he covered the angle very nicely. Sai Shankar just got sucked into that angle. Look at this. Yeah, there. No position to move. And brilliant positioning from Narendra as well. We always keep talking about, kicks, touches, feather touches, escapes and all that. But look at that for the positioning in Kabaddi. And look at this. Shiv Ganesh Reddy, the position where he was in, he went in deep, has that side kick. Let us say 1 point. Vijay Commandos. Chest number 9 Again, out. it's a well orchestrated raid. If you look at how Shiva Ganesh, he was setting his eyes elsewhere, and that sudden charge towards that right inside, the defender did not see that coming, and he did more or less kick him out of the match. So a good raid again, which keeps the Vizag Commandos at top 8-4. And Siva Ramakrishna in that previous raid also was a raider. So that's where he did not have any clue of going back. Now Babi Nayak here. I don't think so. He'll get anything. That defense of the Vizag Commandos is really good. Babi Nayak is just spending a lot of energy running in and out. Durga Prasad now. And here, there we go. It's going to be the first multi-pointer, at least from the 2 touch points coming through. And both the defenders in the corners giving it away here.
Yeah, see again, both are good defenders, Hari Prasad Reddy and of course I am Veera Babu. See again, the problem was no coordination. First, there, the press and the jump, and then why did Veera Babu go in? He could have just left him to just cross over. That could have been only 1 point. See, that's a good skill from the Raider. When you've got that good skill across, just let him go. Abhinayak, he's gone deep on his left. He's switching sides over, looking to find a way. We've seen him get more or less these empty raids itself, and he's searching for ways to get points, and the bonus has finally come through in his favor. Yeah, luckily the bonus, because if he had not got the bonus point, the next raid would have been a do-or-die raid, and now it's a super tackle situation on. And it's Malladi Srihari, only defender who's left, and Babi Nayak is a raider. And I'm sure Shiva Ganesh Reddy will go towards Babi Nayak and he will touch him. He definitely will touch him at the first instance. And then Babi Nayak came out there to save the defender. That's all happened there. Good thinking there, Ryan. You go out there against the raider first. Yeah, there. And then Babi Nayak did not have any other go just to push Ganesh off. This is a situation no team would want to be, or they more or less avoid being. That is down to the last player, and you know you're staring at a potential all out. And we have our spectators enjoying the game from the stadium. Of course, they will be hoping that this match goes down to the wire. Only if the wire would have been too long for the Tirupati Raiders there. I think probably they are all players and they've got that worried look because Vizag Commandos can come out there and face them. But in the first match, Amaravati Crushers, the way they played, my God. And they have a match in the evening to be played. And also Tirupati Raiders also have a match to be played as well. So it's going to be tough for them if they don't get that confidence going. Now last player standing, he will be coming into raid. He's warming up on the mat. Should have warmed up, I think probably half an hour ago. There we go. This is Mahesh who is coming for this last instance. A substitution was made and Mahesh was given the big duty of getting a point, and he's done it. This is a big raid for Mahesh. Massive raid in the context of the game. He's saving an all out, and that's something rare today. We have not seen that happen. And Mahesh confusing the defense a little, and Rai Narendra, he was good. He was good until then. But Mahesh, yeah, he keep him there on the mat. As Veloru Srinivaslu, the captain, has been revived, but has he been touched out? Yes. Durga is just made sure Veloru looked clueless. 1 point. That's a big blow again. Chest number 7 out. He's currently raiding at a strike rate of 133, which is why there was no doubt perhaps the moment he came in for that raid he was going to get a point, especially in a situation where there was 2 defenders. And now we're back to the same fiddle where Mahesh has to save his team from an all-out. Question is, will he do it again? This is where the Commandos can ensure they get that first all-out, add on to their lead. And Mahesh, the substitute, I think he's gotten the bonus when he went in towards that left flank, and he seems to have gotten a touch point as well. Oh, what a substitution this has been, Naveen. Chollangi Anil Kumar. The problem was, see, Ram Mohan Rao, the right cover, was playing highline and he came back. But Chollangi Anil Kumar, watch that. He does not backtrack. He wanted to go to the follow through and then doesn't backtrack. Oh my God. And look at that look that came in from Nolli Teja, the captain of Vizag Commandos. He just said, why? Is this a super tackle? Is this the super tackle that they were waiting for? Mahesh is turning out to be a big inclusion here for the Tirupati Raiders. He's gone out there, saved the team for the all-out twice, and now he's put in a super tackle. Wonderful effort here from Tirupati Raiders, and especially Mahesh. Yeah, that's it. It's 2 points. And Mahesh is making a mark already here, Ryan. 2 points. Come out there, save the team from the all-out twice, and now a super tackle.
Oh boy, that has to be something. Given the fact that Mahesh was not allowing that all out to happen, Ganesh wanted to target him, and there we go. It's a Kamal moment because Mahesh has gotten that super tackle. 5 points off the bench, Naveen, and it's come in a span of perhaps a minute and a half. He scored those 5 points, and Yeah. he's turned the game around. Yeah, just three raids. Just three raids. That's probably even a quicker way to put it across. And Sai Shankar, for me, Sivaramakrishnan has come out, but point is Sivaramakrishna shouldn't have been raiding. Mahesh had the momentum. He had checked the moves of the defenders. He should have been raiding, but nevertheless, Tirupati Raiders will take this. That's it. Even Sivaramakrishna Tirupati just Raider. goes out there, has the running hand touch on that Number right 16 flank. Out. And they are reviving players slowly and surely. Rai Narendra once again. Time out. Vijay Commandos. What are the coaches saying? Let's listen to them. Tirupati brothers, in fact, Tirupati Raiders. We'll check this out. Sudhakar. అంత డైరెక్ట్ కొట్టు పండు కంట్రోల్ చేయకొద్దిగా నువ్వు స్లో చేయి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డిఫెన్స్ స్లో చేయండి అర్థమైందా నువ్వు మాత్రం రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు చెయ్యి చాపు చేతులు ఇలాగే ఉన్నాయి చేతులు చాపు కొట్టు Right. True. So what Sudhakar was trying to say, I think so one of the raiders is raiding వెళ్ళినప్పుడు చేయి చాపు. That means it's like you spread your arms. You're not spreading your wings. చేయి ఇలాగే ఉంది means you're just keeping your arms closer to your chest. Don't do that. Don't even have to be saying this. 1 point. Is that I am Veera Babu again? Says number 1 out. No, it's Hari Prasad Reddy. That was too quick for an attempt, Ryan, isn't it? He should have allowed the raider to come in. You're trailing behind, no hurry. And the coach exactly said that. Defense slow change the match. That means just slow down the game. Slow the game down. Let the raider come in for the points. He did not listen to the coach at all. Yes. Well, it's Shiva Ramakrishna this time, and he has made up for that instance, the error which his teammate made prior. And Shiva Ram's doing a good job as he gets the better of Ramya. Yeah. Ram Mohan Rao. And I'll tell you what, Ryan, in the Telugu pronunciation, we don't have Sh. It's Siva, not Shiva. It's Siva. Siva Ramakrishna. It's not Krishna. Yeah, Krishna Janmashtami today, but today Durga Prasad has been pinned down for the first time. Well. That defense unit did not look coordinated. It was very staggered. Vijay Commandos. But then it is working out because Mahesh is there. I think Number 5 out. 9 Mahesh was trying to escape, but this tackle point will go to him. Nice ankle hold. Yeah, third tackle point. 2 all-outs being saved. Well, next match he is definitely in the starting 7. Oh, it's a good point, Naveen. I think this shows how important it is to grasp the opportunity, right? When you're coming off the bench, you need to prove your point, and that's what he's done. Meanwhile, Shiva Ramakrishna has taken pressure off Mahesh, especially in that raiding front, and this is perhaps his third point after coming back. Tirupati Raider. Correct. And the first time they go into the lead. That's the very first time they go into the lead is the Tirupati Raiders. Mahesh on the other side just goes back. Yeah, because it was a super tackle situation. It should have been the defenders actually trying to nab Sivaramakrishna down, but no. And look at the change that has happened. Only Teja comes in for a raid where he's the captain, and he did not even expect that the Tirupati Raiders will take the lead from just being one man. It's been a one-man show, and it's been Mahesh. Yeah, we speak of Mahesh and one man. There is just one Mahesh Babu for the entire Telugu industry. Something like him. But this is not Mahesh Babu though. Mahesh Babu, the Number 18 out. super actor. 13 in. And he also acted in a movie called I Am the One, Nenokkadne. So ikkada Mahesh garu ఒక్కటే ప్లేయర్ లాగా వచ్చి దే హావ్ సేవ్డ్ ద తిరుపతి బ్రదర్స్ ఐ షుడ్ సే ద నేనొక్కడనే మీన్స్ ఐ యామ్ ది ఓన్లీ వన్ సో దట్స్ వాట్ మహేష్ హస్ డన్ హియర్
Bobby Nayak this time, can he find his way back? Yes, he can. And the Tirupati Raiders have cleaned the slate. They've come back from being down to one man, and they've turned the tide to inflict the all out on the opposition. They would be pinching and kicking themselves, the Vizag Commandos. Really, what has just gone completely in favor of them has now turned against them. Bobby Nayak, nice way to have that Swachh Bharat Abhiyan going on. Cleans up nicely. Brilliant work, and now they'll have to regroup. They really have to regroup in this occasion. The Vizag Commandos. Yeah, that's a good place for the coach to talk. Let's listen to the coach. Let's listen to the coach. No, not him, not him. Suresh, the Vizag Commandos. బ్యాక్ ఆడండి, నలుగురు ఉన్నప్పుడు డిఫెన్స్ చేయండి. నలుగురు ముగ్గురు అయిపోయారనికి ఈజీ అయిపోద్ది వాళ్ళకి. సో నలుగురు ఉన్నప్పుడు సీను చెక్కింగ్ ఆడండి, స్లో చేయి మ్యాచ్. Yeah, that's all. He's even told the captain to just slow the game down. And Mugrunte easy అయిపోతుంది. That means if the defense is reduced to 3 men, and again it's going to be tough for us. That's what Sudhakar said. But we really wanted to listen to what Suresh would have told Vizag Commandos. Oh, come on! Vellore Srinivasu, come on, your coach just said slow chahi game ni. That means slow the game down, don't attempt stuff. He said okay Anna, and now see what he has done. He's gone in for the advanced tackle, reverse ankle hold, missed out. Now it's a 4-point game, and I think Naveen, we will constantly talk about that collapse because we don't see it happen quite often in Kabaddi, although they are more or less recovering in a certain manner. Shiva Ramakrishna gets caught here, and all the players playing a role in that. Yeah, true. Shiva Ramakrishna again. Now see, after the all-out, Vizag Commandos have understood that it's the defense, and now Rai Narendra gets the chain going in. Brilliant work. And there is Nolli Teja, the captain. He'll be really happy. And of course, Nolli Teja, the son of Nolli Kanakarao Garu, who works in the Vizag steel plant, of course. And and more importantly, Komali, his elder sister, always cheers him, watches all his matches from the sidelines. So yeah, it's nice to have that sort of a sister. Is Komali. Komali Akka, thank you for going out there and supporting. ఎప్పుడు మీరు మ్యాచ్ చూసి ప్రోత్సహించారు అని అనుకుంటాము. ఇక్కడ నొల్లి తేజ వాళ్ళకి that's why this ankle hold, and that's why his team is doing good. Durga Prasad gets another one. And Ryan, just after the all-in, Vizag Commandos have looked in a commanding position. Not ideal. It was the Raider who was clearly in desperation to get a point. For some reason, he was in a hurry to get that, and the defender just gave that one away. Nevertheless, it's the man we've been talking about who changed it up for the Raiders. Will hope to keep it up here, as he has a strike rate of 150. So in those 2 raids of his, I mean, he's not come back after that. Correct. And what a good thinking. Watch this for the thinking. He knows that the Tirupati Raiders have won the toss. He goes in, puts in an empty raid and comes back, because the second half it's going to be Mahesh who will be raiding in. What a good Kabaddi brain. Yeah, that is what is needed. Did you even just get a little glimpse and sense of that there? And look at that, because he knows the Tirupati Raiders will be raiding first in the second half. He did not try too much in that raid is Mahesh, and comes back. And it's all credit to him that the Tirupati Raiders have got 18 overall points. You don't see Mahesh's name in the raid points. You will see Durga Prasad, but I would put Mahesh in the Raiders front, because he was really very good in saving the team from the all-out. And then came the super tackle. Definitely, all of it led to that all-out being inflicted. In terms of raids, the Commandos have had 2 more successful raids, and in terms of tackles, it's 1 more successful tackle for the Raiders in more attempts to
Do-or-die raids, of course, it was just one in the entire game where the Raiders could not captivate, but a couple of bonuses scored by both the teams. So it's still all in for the taking. Yeah, all in, correct. But again, the way they have come back after the all in, also, the Vizag Commandos, that's also really good. See, first they attacked Velluri Srinivasulu, and then they also knew that it was Sivarama Krishna who was getting them the points, so they've attacked him as well. Now they'll be eyeing Mahesh. So every time you're singling out players, right? See, the Vizag Commandos now need to just rely upon Durga Prasad and of course Noli Teja, the captain. We need to do well. Yeah, because as I said, his sister Komali will be watching. So yeah, it's all there for the Vizag Commandos. But if Mahesh goes in for the first raid of the second half, that is going to be interesting. He did a brilliant job in the last raid of the first half, is keeping it very quiet. And that is what Mahesh now needs to do, who's done really well. Let's look at what he's done until now. He came in, he is really making sure that the all-out was not a problem. And he's also contributing in the defense. And more importantly, Ryan, he's not phased by the situation. He's not getting completely overwhelmed with these lights, cameras, and anything. He's playing his natural game. This was the first time that he saved the all-out, thanks to Cholangi Anil Kumar there from that left cover, who went in for the follow-through dive, and then he came in with the ankle hold to get that super tackle going. Of course, he got the support from Sai Sankar, but nevertheless, I think the first raid will be Mahesh. Now, this will be interesting. His last raid of the first half was very well thought out. Now, what do you think, Ryan? I feel he'll go for a bonus attempt first, because he's a very good Kabaddi player. Oh, come on, it's not Mahesh at all. Yeah, should have been Mahesh for me. Should have been Mahesh. See, when you have the momentum, you keep raiding. You should be raiding. Hari Prasad Reddy goes in just to break that momentum. Now, what happens is, as Mahesh is an youngster, now I don't know if this is that seniority level that will come in. See, now he goes in with an empty raid, comes back. Now, the pressure on the Tirupati Raiders are, they will get the do-or-die raid first. They will be now facing the do-or-die raid. Noli Teja should think about it and come back with a quick raid possible, because first the do-or-die raid will be for the Tirupati brothers. I wanted him to come back quickly, but then he goes in too deep. A nice diving ankle hold. And it's not been ideal in the raiding front for Noli Teja. He's not been able to show his true colors. And here once again went in too deep. And that first grasp towards his legs along with the support saw it through. And Mahesh is finally back, Naveen. And he's 100% off the raiding front, 100% on the defensive front as well. Yeah. And the defense of Vizag Commandos need to let him in. See, he's playing on the back line. The moment he goes in, the ankle hold attempt, but then 2 more points. Brilliant. He does not get the bonus though. That's the first ever time that he's gone in so deep towards the left corner. Sheikh Akbar should have just held on to your horses a little more. Ram Mohan Rao just came in to support Sheikh Akbar, but not there, not there. Again, Mahesh, Ryan keeps up that 100%. He's gone over it at this point. We will get the confirmation soon, as the Raiders now are holding on to that lead to start off. So they've started on a good note, and here again the defense allowing the Raider to come in, setting a trap of sorts. Yeah, and the trap was set up really well, because see, it's that I am Veerababu who comes in with the chain, but the trap was set in from the right cover. I really want to appreciate Malladi Sri Hari out there. He played that high line defense. He showed as if, he's going to come in and attack, and then he moved out at the right time for I am Veerababu to go out there with a chain tackle. And now a super tackle situation here for the Vizag Commandos. It's Bobby Nayak. Simplest of the touches that you can ever imagine. And what Mahesh has done, I'll tell you what, he's got 100% in the tackle success rate.
And of course, he's got 75% in the raid form because he also needs to go out there and put in those empty raids, Ryan. We're talking about his raid percentage, 75%. So 4 touch points and 1 bonus point. So he thinks like a Kabaddi player, but Durga Rao, has he got him? Yeah, he's got his man. Another set, 1 point, Vijay Commandos, jersey number 1 out. Durga with a smart approach went in deep on his left, and that running hand touch which was inflicted suddenly to get a point. And the commandos will call a timeout. Let's listen into what the coaches say here. Yeah. उसको చెక్ చేసి ఆడిచాడు అదే లోపల ఎక్కించుకుని ఆడిచాడు 30 సెకండ్స్ కాబట్టి ఒక 50 సెకండ్స్ ఆడిచాడు రా ఆటోమేటిక్ అయిపోతాడు రైడ్ ఓకేనా జాగ్రత్త తీసుకొని చెక్ చేసుకోండి. Okay, so what he said is allow the raider to come in deep. Okay, 30 seconds or 15 seconds aadipichandi. That means just make the raider run in deep to you. You don't attack. Very good point from Suresh, the Vizag Commandos coach. And it is not Mahesh. I really wanted Mahesh to keep raiding. Bobby Nayak, yeah, he can give a breather to Mahesh. But why am I asking Mahesh to raid is only because as a raider, right, the momentum should not drop. The adrenaline, the blood rush should not stop. So if that has been kept along, you can keep getting points. Until now, the defense has done really well. Nulli comes in with the support. Nulli Teja supports his defender. It's a super tackle nevertheless. They have listened to the coach. They heard him well. They understood it well. They executed it to perfection. And Rai Narendra with a super tackle. Yeah, the coach said allow the raider to come in. They did allow. And at the last dying moments of the raid, they've got 2 important points now. And look at this startling stat that's coming in. From Mahesh's entry, the Vizag Commandos have only 6 points and the Tirupati Raiders have got like 17 points. And now with the super tackle, it's going to be 8 points only. 7 plus 2, 9 points only for the Vizag Commandos since Mahesh's entry. Talk about making an impact, but still it's just a 3-point cushion, and given the fact that we have 15 minutes, they will have to keep up that same level of play, and Mahesh is still not come in for the raid. Shiva Ramakrishna got some momentum in the previous half, but this half, this is the second time where he's been tackled out. Now, can I say something where the Tirupati Raiders' supporters won't like something? You know what? The next raider, you put Mahesh in, I'm sure there'll be a lot of pressure on him, and there are more chances that he'll be tackled out. 1, because he's not been raiding. 2, because he's just standing in the defense. Momentum's gone down, and now Nolli Teja will kill time. He will stand, he will cross the balk line, he'll stand near the center line, and he will kill time because he knows it's that just 2 points. That's it. It's no more that comfortable 5-6 points. It's just 2 points, and now Mahesh will be put in with so much pressure, and there are more chances that he'll be tackled down. Ryan, do you agree with me, or do you want to see what happens in this raid? Well, I think there's a very good chance of that happening. You mentioned the pressurous situation is always something that gets to players, but he was in a pressurous situation 2 occasions, right, in the first half. So I think given that he's got the composure to not do something unnecessary, and he settled for the empty here. That's a good word. That's a good word. The calm, cool and composed manner. It's a do-or-die raid. It's a do-or-die raid. Nice turn! Brilliant anti-turn. Galuri Srinivasulu went in very far away from the defender, I felt. Very far away from the raider is Durga Prasad. And he saw him coming, I think 50 miles away. Look at this. He starts to come in from very far. And then that anti-block, turn, use the lobby. Good escape. Yeah, good word that you mentioned with Mahesh. Yeah, he had that composure. Good. So that's why that empty raid. And now he cannot afford an empty raid because the next raid will be a do-or-die raid. He attempts the bonus in the gap that's been avoided. Being calculative, which is what the team would want to see. Take a look at this. Oh, the block coming through. He almost got his way, but the block was a lot stronger than what Mahesh had to offer. So somewhere, as I said, the Tirupati Raiders will not like what I said is come true now. Look at this. It's been tackled out. Nolli Teja again coming into good support to Ram Mohan Rao. And now, Tirupati brothers don't have
Mahesh, they are in a situation now only one man will be left along. I am Veerababu again. Doesn't get the ankle hold. Oh, well. Is that the biggest casualty moment in the history of Yuva Kabaddi series? Unbelievable. This is so much of a pressure that has been soaked in by the Tirupati Raiders. I should say they have been completely bogged down in the pressure. Well. That's the biggest casual move I have ever witnessed in a Kabaddi match. No more doing about that. I am Veerababu. I think you need to go back and change your jersey name from Kabaddi to your original name. You've not done justice at all. But what a good thinking from Durga Prasad. Oh my God. It's important to never let your guard down. And in the last 5 minutes, Vizag have scored 10 points and Tirupati have scored 0. So it's a 10-0 run, Naveen, and that reflects on the scoreline. Yeah, and since Mahesh was tackled out, the first all out for the Tirupati Raiders. See the impact that he's brought along, and Babi Nayak gets a bonus, which is good. But that impact, now they are keeping Mahesh back. And Mahesh is just standing, not getting tackled in the defense. Oh, did he slip? Did Nolli Teja slip? But even then, Malluri Srinivaslu did not come in for the proper grip on the ankle hold. He wanted support from the right cover. But did he slip on that occasion? Nolli Teja, or was it just another strategy of his? There. He actually missed his footing. He did really miss his footing. But let's look at Mahesh. The moment he's come on, it's something else. And the moment he's on the bench, the Tirupati Raiders have succumbed to the all-out. And I don't understand why he is not raiding back-to-back. He gets a bonus again, Babi Nayak. That's good. Nolli Teja here, his previous raid showed signs of him getting points, getting into his raiding groove, but right after that, he's not found his path. Yeah, even now he slipped, he missed his footing, but he missed it for the good for the Tirupati Raiders. There, he slides away in the wrong direction. But I think now if Mahesh is raiding in, no, he is not. Come on. Yeah, it's all Babi Nayak because, okay, he's getting bonus points. That's okay. So on that right corner, now it is more important for Rai Narendra to understand what's happening. Couple of bonus points, and there he has understood what has happened. Third time, he does not allow the bonus point. Brilliant work from Rai Narendra. 2 bonus points stolen away under his nose from Babi Nayak, and the third time, yeah, he gets a better of Babi. This is what we want to see, how the defenders, how the Raiders are all adapting to the situation. And he's, of course, upgraded himself from that, decoding what the Raider had in mind and playing accordingly. This is Shiv Ganesh Reddy, and this time the point will go in favor of the Raiders. I think this was a strategy. I tell you what, he went in for a suicidal bonus point. I think they wanted to cut the bonus off. There, see, he's gone in so deep. I think it's a suicidal raid, Ryan, because they want to keep the bonus off. They want to play with 5 defenses. That's what I feel, the Vizag Commandos. So he's gone in, he's got the bonus point, and he's been tackled out. So even now the bonus is on, which is okay, but I think that's a strategy. Now, if they get another point out here, the defense bonus is off. There, this is the plan. This is the plan. Sheikh Akbar, yeah, did not look in any plan though. But I think now they've switched the bonus off for the Vizag Commandos. If that's a plan, Teja Noli's acting was brilliant because he didn't seem quite frustrated with his teammate there. They both were in that left corner. And here's Nolli Teja Naveen. Speaking of him, he's not put out his ideal raiding performance, but I think he's shown his experience very well on the mat today, from being the support defenders, although here he gets tackled out once again.
I think that was not the plan. I think we kind of guessed it wrong. Now there is no point at all because he had to just come back. I wonder why he went in so deep and again showed his back completely to Velluri Srinivasulu. He goes in so deep and showed his back completely. Doesn't get anything, not even a bonus. Now he's on the bench, and now with 4 defenders, Bobby will not have the cushion of that bonus point that he used to get. Now it's 30 all. And it's so important now for the Vizag Commandos to understand one thing. See, Mahesh is not raiding. So if Mahesh is not raiding, when a raider goes in, okay, he needs to attack Mahesh. It's Durga Prasad now, I think, who will go in for the next raid. So Durga Prasad needs to attack Mahesh or Bobby Nayak. One of the raiders needs to be attacked. Now let's look at what's going to happen. That should be the plan. Strategic timeout. I think let's listen to Suresh, the Vizag Commandos, because they are in a spot of a bother. Let's listen to him. రైడ్ లోపల ఈక్వల్ స్కోర్ అంటే డూప్ ఆన్ చేసి రా బయట రా వాళ్ళు పక్క కొడతారు బ్లాక్ డూప్ చేసి ఆడొచ్చు నువ్వు నన్ను చూసుకున్నావా నువ్వేం చేస్తా డిఫెన్స్లో మనం ఆడిచ్చాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లోనకపోతే టైం చూసి 5 ఎంత ఉంది 6 minutes ఉంది మనకి లోన చాలా ఇంపార్టెంట్ మైసూర్ దగ్గర ఆడిచ్చాడు నరేంద్ర చూసుకో తమ్ముడు రాము దొరగా నువ్వు లోపడే డూప్ ఆన్ ఓకేనా డూప్ ఆన్ చేయి వాడిని పంపించండి రైడింగ్ ఏంటంటే వాడిని పంపించండి ఆడి దగ్గర ఓపిక అయిపోయింది దీన్ని పంపించు రైడ్ నెక్స్ట్ ఓకే ఆడు పంపించు ఓకే కానీ ఎవడు is the point because he just said send him to raid but I did not get which player. But on the other side, Suresh, the coach of Vizag Commandos, he did not have a proper plan, right? The complete plan was here and there and it was all over the place. There was no proper guideline that was being given because he said Lona manaki chala important. Okay, agreed, the all out is very important, correct, but how do you get it? That was not being told by Suresh. And now Durga, yeah, see, but did he kind of guess or think like what I am thinking? He needs to go out there and target Mahesh or Bobby Nayak, and it's a right cover defender. Okay, they will take it. Just number 14 and 7 out. Oh, have they got Durga? Yes, is it? Oh, almost. Durga nicely worked up towards Bobby Nayak, but does not get him. But nevertheless, 2 points, Ryan, means a lot at this stage. I agree, and we are of course heading. The clock is ticking against them. We're into the last 6 minutes, and the Commandos know the momentum is very important at this stage. But here, Bobby Nayak, wonderfully done to find his way back to the mid lane. Yeah, good escape, very good escape. Yeah, but that was a weak attempt also, I should say that. Yeah, from Mahesh, it did not look like as if he was in any position from that left cover to go out there and for to attempt the block. But Mahesh, yeah, we were talking so much about him. But suddenly, there you see, Mahesh once again, diving angle hold. Velluri Srinivasulu not there in that left corner, and it is Mahesh again. And in this match, he's gone out there and has become a biggest differentiator between these two sides. Single-handedly, like the superstar Mahesh Babu, he's brought single-handedly the Tirupati Raiders into this match. You have to love how this game is unfolding. They're tied at 32 each, and the next all-out, if it goes to that situation, is going to be very crucial. But here, Bobby Nayak once again comes back, kicks his way through. Yeah, Sheikh Akbar has been very, very weak in that left corner. I have not seen him attempt anything positive. Look at the way he takes the kick on his chest. That shows how high line he played, does not backtrack. Yeah, no skills being shown from Sheikh Akbar. Kind of disappointing in the way Vizag Commandos wanted him to. But Mahesh, look at this, 25 points after he has come to the Tirupati Raiders. And before he came in on the mat, it was only 6 points. And I am Veerababu. Jersey number 8. And Ryan, I think that jersey name should kind of now be changed. Oh my word. Here he's on that right corner, and Durga
was smart enough to wait for him to jump on towards him. Last 4 minutes of And a play. simple point yet again. And we are tied once again, 33 all. And this is where it's so important for the players to be calculative on what they do. And here, Bobby Nayak, he went in and he stopped, I guess, for a second as the right corner jumped towards him. Yeah, Rai Narendra again gets him for the second time in the second half. Is Bobby Nayak. Again, he's playing too much in front of the right corner. See, again, he does not have that running hand touches. He does not run across towards the left cover in the left corner. He spends a lot of time in front of the right corner. Now, that is where Rai Narendra has gone the better of him. And now, Durga, if he can get Mahesh in this raid, now that will be a big icing on the cake. And Mahesh is also very intelligent. Look at where he is standing. He's standing on that right in position. Durga is a left raider. He stands in at right in. So there is no options of the running hand touch. It's only Mahesh who will be targeted. That is why he's standing there. But this is good. Velluri Srinivaslu with a dash. The captain does well. And once again, the momentum swings towards the Tirupati Raiders now. Good stuff from Srini. I think it was just his first tackle point early on in the game where he had a successful tackle. After that, he's committed a lot of errors, but this is the big moment in the game. He's gotten that important point, and we're tied once again at 34 each. Shiva Ramakrishna had a good run to close out the first half, but here he hasn't gotten his way. But this time, he seems to have gotten the point. Yes, he has. Tirupati Riders. Jersey number 16 Yeah. out. Major error from Rai Narendra now, isn't it? Yeah, major error. He was confused with the way Sivaramakrishna's footwork was. See? There, complete confusion. Whether he goes to the legs or the hands. And yeah, the escape route, Sivaramakrishna does well. And what is now the coaches now got to say? Tirupati Raiders, again, just a slender lead. పెట్టుకుని ఆడండి టూ మినిట్సే ఉంది అందుకని అది జాగ్రత్త అది జాగ్రత్తగా ఆడండి Okay. Velluri Srinivaslu has a point and the coach agreed to it. He says we will allow the bonus. And there the situation is a kind of a super tackle situation. We'll try for the all out. Last 2 minutes of play. Yeah, good thought. Good thought. And there's a Mahesh on the other side as well. This Mahesh hasn't done too much well. Kambala Mahesh. He's done too much in the defense department. Not so much in the raiding department. And now, it's a super tackle situation. This is what Velluri was hinting at. What a lovely escape there. Sivaramakrishna there ran. He knew the defender was coming to his legs. Tall, lanky fella, and he just makes sure that long legs of his doesn't get into the graps. Wow. Malladi Srihari, I mean, look at this. Ram Babu does everything correct. Yeah, it's a definite Yuva Andhra Championship Kamal moment. Also a Kamal moment because it adds on to their lead, and now more pressure is on the Commandos. They're down by 2, a minute and a half on the clock, and it's important for them to start reducing this gap, not allowing it to grow, because once he's going to go back, it's pressure on the Commandos here, and that's why Nayak came in quickly. This is Bobby Nayak, and he has the time to kill as well as try and go in for that point. This is a big raid, a big moment. The Commandos, if they get the super tackle, we will be tied once again. But Bobby Nayak will not let that happen as he gets a point at ease. Tirupati Riders. Jersey I was number even 19 feeling, out. why is Bobby Nayak trying Last 1 so minute of much? play. Because there were two good raiders only, Kambala Mahesh and Nolli Teja. And Nolli Teja will be substituted out. Turn back. Now, why is this? Jersey number He's 1 a out. good raider. He could have Two gone in in. and raided. But they are bringing in a better raider maybe with that brilliant effort that we saw from Bobby Nayak. But Nolli Teja has been sent out. This is the all-out situation. 1 minute to go and Rupesh Kumar. Oh, just imagine how quickly his heart would be pounding now, Ran. Oh, well, you might think, would you have preferred someone like Nolli Teja itself, given his experience? I know he's not had the best of games, but this is a big moment. And here, Rupesh Kumar, of course, as you said, his heart was pounding and he does succumb to the pressure.
Yeah, it should have been. It should have been Noli Vizag Teja. See, Commandos. for me, Kabaddi is a game of momentum. Kabaddi is a game of that adrenaline rush. You need to have your blood pumping every single minute of that 40 minutes, every single second of that 40 minutes, I should say. But you cannot have a player coming from the bench because he is not his blood is not completely hot. He's little cold, and that's what happened. And it should have been Noli Teja. Oh, he's crossed over. He's definitely crossed over the center line for sure. This is going to be a massive raid. One Oh, point. raider out. Can Vizag they review Commandos. this? Right. But he crossed One over. review. Please go. Yeah, they can. They need to. It's going to be a big raid. Sivarama Krishna, I really felt he crossed the center line. Ryan, your thoughts? It was very close. It's definitely touched the line, but we've seen that smallest of margins. We will get a glimpse on this. TV umpire. Tirupati Raiders challenge. Raiders have 3 points. Our decision. Raider out. Please review. Yeah, it's going to be the touch and go, as you said. Yeah, the crossing or the touching and going back. And it's only 4 seconds on the clock. This is going to be a big raid. He's crossed it. He's crossed it completely, Ryan. Come on. I keep telling you, eat carrots, eat carrots. You never do that. And this is what happens. You eat carrot, eyesight would be really good. And Tirupati Raiders with that carrot color outfit today have definitely taken the carrot away from the Vizag Commandos, I should say. Indeed. And yeah, after seeing something so close on that speed, yeah, definitely I'm going to go clock in my carrots for the day. Oh, massive raid for Sivarama Krishna in this dying moments. Yeah, they did have the lead though, but how much is the point now? That's going to be, a problematic issue for the Vizag Commandos. Because there's 3 points, and make sure the score was neck and neck. That's what we wanted. They wanted 1 point at least, the Vizag Commandos. But it was 6 points. But with this super raid, Sivarama Krishnan probably has, I think, clocked in that super raid as well, and also super 10. Maybe let's look at what the decision is. If he's got these 3 points, it's the super 10. I'm sure it is, and the difference goes off. Vizag Commandos don't get a point. They should have let Sivarama Krishna go back. If they had at least let him go back, they would have got 1 point out of this match, the Vizag Commandos. It's going to be Mahesh and Sivarama Krishna. That'll be celebrated all throughout. And of course, their captain, Veluri Srinivasulu of the Tirupati Raiders. Sorry, again, sir. And don't forget Bobby Nayak, though. 4 points, sir. Yeah, 3 points, sir. Yes, maybe. Review successful. 4 points. Boy! 4 points. Super duper raid. Who's Tirupati the fourth Raiders. one? We thought 3. Captain, your reviews. They'll be really disappointed. We They'll did. be really disappointed with the way they have played the last 2 minutes of this match. The Vizag Commandos. Until then, it was all good. Chest number. Until then, it was Just neck number. and neck. And who's going to take the carrot 18, away? 18 Who's out. going to take the leg piece away from the 18 out. biryani? And this is what happens. Tirupati Raiders say no. We are here to eat the entire plate. Again, sir. Yeah, it's okay. It doesn't matter who's sent out. It's 4 points. That's what matters now. There's 4 seconds on the nine. clock because they're not going to be revived. But the rules are rules. They will follow it. 4, 9, 2, 19. 14, Yeah, again, this is all. 19, 2, 18. Okay. But let's go back to that raid. Good. Until they figure out, let's go back to this raid. Brilliant raid here from Sivarama Krishna. Finally, they've sorted who needs to go first, who needs to go out. When Potla Gopi Chand put out that 4-pointer raid in the previous game, this is the second raider. Sivarama Krishna putting on that 4-pointer raid. Of course, Ram comes in. Then there was the support staff coming in all across, and everybody had to just
say finger on the lips, because this is Siva Ramakrishna taking away every point, and 1 point. 1 point here for the Vizag Commandos. Bonus plus 2 points. Oh, bonus plus 2 again. Super raid, right? What is happening? What is happening? The last dying moments of the match, they've allowed a raid to go in. What's the score difference now? Oh, well. Ryan didn't see that coming. Siva Ganesh Reddy, I think, who went in. It's 3 points. So have they clocked 44-37? That's the final score. My God. And they do get 1 point. Vizag Commandos off that raid. Of that last raid. Can you believe this? The score difference is exactly 7 and they get a point. It's Vizag Commandos in the last 1 second of the match. Yeah, that's why. That's why we all love Kabaddi so much, isn't it? We were all, gaga and heaping praises on Siva Ramakrishna. Look at what I think it's Ram Mohan or Siva Ganesh Reddy. I think it should be Siva Ganesh Reddy who went in, number 6 jersey. Siva Ganesh Reddy is the man who went in. Got that super raid and they've got a point. Let's look at that last replay as well. What just went wrong with the Tirupati Raiders? Yeah, it is. It is Siva Ganesh Reddy who went in. First the bonus and then both the covers. Well, take that. Take that, says Siva Ganesh Reddy. And what a way to get 1 point out of this match, Vizag Commandos. And Ryan, this is going to be very crucial because only 2 teams from each pool for going in. And Tirupati Raiders, of course, are on top. But of course, Amaravati Crushers will be on top of them. But Vizag Commandos at least open the account with that 1 point. And how important was that last raid? I think a lot more than just important. The Raiders, if they have to be disappointed about one thing, it is that, because as you said, end of the day, it's a competition. As we look at that 1 point separating the 2 teams on the raiding front, tackle points 4 more for the Tirupati Raiders, couple of all-outs inflicted as opposed to just 1, and it was 1 super raid for both the teams which came in the last 2 raids of the match, and 1 super tackle for both the teams, which of course happened across the span of 40 minutes. In terms of successful raids, again it was the same number of raids for both the sides, but the Raiders had 2 more, doing justice to the team name. And in terms of tackles as well, in spite of not having it on their team name, they've brought in 4 more tackles. So the Tirupati Raiders playing a complete game of Kabaddi, one can say. Oh, totally, no doubt at all. And more importantly, it is Mahesh. And see, he's just gone under the leaf once again, Mahesh. He came in from the bench. He created that bit of a stir in the Vizag Commandos, and then later he just went back. He did not hog the limelight at all. He just completely left it to Siva Ramakrishna and the others, and especially Velluri Srinivasa to go out there, and even Bobby Nayak for that matter. He just went in to the shadow. Why am I mentioning that? As of course, Vizag Commandos, Durga Prasad was the only person who did really well. But then Siva Ganesh Reddy with that super raid in the last raid has got a super 10. That 3 points and that match saving. I should not be saying match game that they saved it, but it was saving enough for them to get that 1 point. But why Mahesh, Ryan, I'm talking about him, he slid under the radar. That shows Kabaddi brain. You don't have to be too flat, too very open about what you're trying to do on the Kabaddi mat. Look at that, 9 points, stands out. Okay, forget Siva Ramakrishna, forget Bobby Nayak, they've got their super 10s. But if it was not for Mahesh, who came in, saved the all-out twice, put in those super tackles, and then had that Kabaddi sense to put in that empty raid, come back, and also manage the defense really well. And for me, a special award from the commentary box goes out to Mahesh for sure. Yeah, the best raider can be, Durga Prasad from Vizag Commandos. It's a special award for Mahesh to go out there. What's your take on that? Oh, very, very well put out, Naveen. I think, of course, we had Durga Prasad, who was the best raider, 14 points for him. In a game, right, you have the best raider, you have the best defender, but the performance that Mahesh had on both the fronts shows that he had an MVP caliber game. So your most valuable player doesn't have to be the best defender or best raider.
But yeah, of course, we will go on and talk about how Mahesh put out with that performance. But Durga was sensational. 14 points for him. A very impressive strike rate as well. And Commandos have a major commando out here who's leading them in that rating side. A good award for him as well, 1,400, because he is the best trader. Yeah. And since because it's just that feeder league that we are talking about to the Telugu Kabaddi League, we don't have that Kamal moment. And for me, a definite Kamal moment winner was Siva Ganesh Reddy. But nevertheless, it is Rai Narendra. Yeah, he also did well as a commando, as a right corner defender. It's okay. But for me, I have good mention MVP, the most valuable player of the match, the impact player of the match, of course, is Mahesh. The way he went out there and did his stuff. But Rai Narendra, yeah, Rai Narendra for me, he actually tackled. This was Durga. In fact, yeah, now this is the tackle. Babi Nayak was tackled a couple of times from Rai Narendra from that right corner. Babi Nayak should understand not to play too much in front of the right corner. He takes a lot of time. But having said that, Rai Narendra, 1,400 rupees for him, best defender of the match. Good work. But yeah, two special mentions going in for Siva Ganesh Reddy as the Kamal player maybe, and then of course Mahesh, the impact player of the match. Yeah, and given the fact that he played probably 15 minutes lesser because he came in as a substitute, so we could see him, start the next game, and he got 9 points today. He could probably get a lot more. But let's look at the next game at 1:15 p.m. The Kakinada Kraken taking on the Vizianagaram Ninjas, Naveen. Yeah, of course, it's Vizianagaram Ninjas, of course. Kakinada Kraken yesterday lost to Kurnool Knights, and Vizianagaram Ninjas are the table toppers. So it's going to be nice. It's going to be really nice, this clash. We will see you soon. I am Naveen Shorey signing off alongside with Ryan James. And yeah, we'll see you at 1 p.m. for this match. 1:10 rather.
check once. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, thank you. The mic 1, 2, 3, testing the mic. You won the championship. शर्मा जी फिर की ले रहे हो हैं पहले ना फिर हाँ नहीं, जब आपने मैसेज डाला तब आपकी आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने मैसेज टाइप करके फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद आपकी आवाज़ आने लगी थी। इसे ही कहते हैं भाग्य मित्र भाग्य
जब वो माखन चुराते थे तो सबको बहुत पसंद आते थे, जब युद्ध सजाते थे तो अच्छे अच्छे घबराते थे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। चोरी आज भी होगी मगर पॉइंट्स की, युद्ध आज भी सजेगा लेकिन कबड्डी के मैट पे। युवा परिवार की तरफ से पूरे भारतवर्ष को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। हम तैयार हैं युवा आंध्रा चैंपियनशिप फीडर टू तेलुगु कबड्डी लीग के लिए। और यहाँ जो 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, अलग अलग 2 पूल्स में एकत्रित होकर 4-4 के पूल में और अपने ही पूल की प्रतिद्वंद्वी से 2 बार टकराने के लिए तैयार है। सबसे पहले निगाह डालते हैं कि आज के दिन की शुरुआत में हुआ क्या। अमरावती की टीम कृष्णा डिफेंडर्स के साथ में भिड़ी थी और वहां क्रशर्स यानी कि अमरावती ने पूरी तरीके से 14 अंकों का बड़ा फासला अपने नाम किया था। तिरुपति रेडर्स बनाम वाइजैक के बीच में खेला गया वो मुकाबला जहां रेडर्स की टीम ने कमाल की रेड लगाते हुए 7 पॉइंट्स की जीत अपने नाम की थी। अब आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तैयारी है। काकीनंदा और उनके सामने विजयनगरम आमने सामने आएगी, लेकिन दिन में 2 और मुकाबले बचते हैं जहां पे कुन्नूर नाइट भीमावरम की टीम और उनके सामने अमरावती क्रशर्स और तिरुपति रेडर्स आज के दिन के आखिरी मुकाबले में 5:30 बजे आपके सामने रुक करने के लिए, शिरकत करने के लिए होगी पूरी तरीके से तैयार। लेकिन सबसे पहले आज जो दिन है वो महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के लिहाज से, यानी कि जो आखिरी का दिन है काकीनाडा की तरफ से वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। काकीनाडा क्राकेंस और उनके सामने विजयनगरम निंजास की टीम। हम युवा आंध्रा चैंपियनशिप 2025 को लेके आपके साथ चेनुपति स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में मौजूद और यहाँ मैदान जंग पूरी तरीके से सज चुकी है। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, इस कड़े मुकाबले के लिए। और आज के दिन की जो की स्टोरी रहने वाली है वो ये है कि एक ही खिलाड़ी है लेकिन बहुत लीतल है, अकेला है मगर लीतल है। समरासीमा रेड्डी जो चार्ज लेंगे अपनी टीम काकीनाडा क्राकेंस की तरफ से। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 2 चट्टान आपको टकराने वाली नजर आएगी, एक वॉल एक ढाल। क्या उनको रोक पाएगी? क्योंकि क्रैकेंस की टीम की तरफ से जो रेडर है वो क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे एकम और पवन के ऊपर, तो आज इन डिफेंडर्स को चलना पड़ेगा। वहीं जो प्लेयर्स की बैटल है वो कालीगुला श्रीनिवास और उनके साथ में चेक्का नागा बाबू की रहने वाली है। नागा बाबू ने कल जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया था, इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था, इससे सभी को पता चलता है कि एक्सपेक्टेशन उनसे होनी चाहिए। और ये जो हाई स्टार रेडर नागा बाबू और 10 पॉइंट स्कोर करने वाले वामसी का जो फेस ऑफ होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल वक्त हो चुका है दोनों टीम्स को मैट पे बुलाने का। కాకినాడ కాజా ఎంత తీయగా ఉంటుందో మ్యాట్ పైన కాకినాడ కుర్రాళ్ళు చేసే గర్జన అంతకంటే భయంకరంగా ఉంటుందంటూ మ్యాట్ పైకి వచ్చేస్తున్నారు కాకినాడ క్రాకెన్. విజయనగరం కోటకింత చరిత్ర ఉందో మాకంత ఊపు ఉందంటూ మ్యాట్ పైకి వచ్చేస్తున్నారు విజయనగరం నింజాస్. एक तरफ काकीनाडा की टीम जो अपना पिछला मुकाबला शिकस्त के साथ खेल के आ रही है, तो विजयनगरम निंजास का ये खेमा जिसने पिछले मुकाबले में जीत हासिल की थी। अब देखना ये कि क्या एक टीम अपने मोमेंटम को बरकरार रख सकती है या दूसरी टीम इस संस्करण में अपनी पहली जीत दर्ज कर सकती है। ऑफिशियल्स मैच के करीब आ रहे हैं। सीधा सा मतलब यह है कि ये रोमांचक 40 मिनट का खेल हम और आप सभी का इंतजार फैन कोड के माध्यम से कर रहा है। युवा आंध्रा चैंपियनशिप 2025 फीडर इनटू तेलुगु कबड्डी लीग, जिसका इंतजार हम और आप सभी मिलकर करेंगे। लेकिन उससे पहले इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त करेंगे। देखना ये कि कौन सी टीम किस फॉर्मेशन के साथ आज खेल रही है, किन खिलाड़ियों पे जो भूमिका है वो थोड़ी ज्यादा रहने वाली है और जो टॉप आमतौर पे सबसे प्रबल चीज माना जाता है वो किसके पक्ष में जाएगा। कई सारे सवाल, उन सवालों के जवाब हमें यही फैन कोड के माध्यम से मिलने वाले हैं, क्योंकि अगला आने वाला मुकाबला भी और रोचक होगा। और आज के दिन में तो 2 बड़े मैचेस इस मैच के बाद आने वाले हैं, क्योंकि कुल मिला के हम 5 मैचेस आपके लिए रोज लेकर आते हैं।
और यदि आज के इस मुकाबले में हमारे विशेष अतिथि से आपको मिलाएं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्रा प्रदेश के जो डायरेक्टर हैं पेरम रविंद्रनाथ जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और ये एक अच्छा लम्हा है क्योंकि जब एक बड़े डिग्निटरी हमारे साथ में जुड़ते हैं जिनका स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा योगदान है, स्टेट लेवल पे इनका नाम है, और वो इन युवा खिलाड़ियों से मिलते हैं, तो आप एक बार प्लीज ये सोचिए कि कितना बड़ा अवसर इन युवा खिलाड़ियों के लिए। उन्हें पता है कि उनके पास बैकअप है, उनके पास सपोर्ट है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर पेरम रविंद्रनाथ उनका साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पे इस मुकाबले के लिए मौजूद। और हमारे देश की संस्कृति देखिए, इन युवाओं के संस्कार देखिए, और यही हमने इस माटी के खेल से सीखा है जो अब हम मैट पे लाए हैं। जान पहचान बढ़ाने का ये लम्हा, इन खिलाड़ियों को अपनी बात सरकार तक ऊपर तक पहुंचाने का ये लम्हा, और जो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कराई गई है उसमें अपना दमखम दिखाने का मौका, ये वो सारे लम्हे होते हैं जिसका इंतजार हर एक युवा खिलाड़ी अपने करियर के शुरुआती लम्हों में करता है। और ये प्लेटफॉर्म युवा टीम ने इस मंच पे युवा आंध्रा चैंपियनशिप के तौर पे इन प्लेयर्स को दिया है। ना जाने कितनों के करियर सजेंगे, ना जाने कितने वो स्टार होंगे जो सुपरस्टार बनेंगे, जो अपने घर के चिराग नहीं बल्कि पूरे देश को रोशन करेंगे। वो बुझ गए हवाओं के बहाव से जो चिराग थे, हम रोशनी हैं, हम पे हवाओं का बस नहीं चलता। लाइन अप एक नए अंदाज में आपके सामने। यहाँ जी समरशीर जो राइट इन की पोजीशन संभालने वाले हैं काकीनाडा की टीम के लिए, वहीं सिंगमपल्ली जो सेंटर संभालने वाले हैं, कारी जॉन लेफ्ट इन की पोजीशन पे नजर आने वाले हैं, कालीगुल्लू श्रीनी जो है वो आपको राइट कॉर्नर की पोजीशन पे दिखेंगे, कालतूरी मनोहर राइट कवर संभालने वाले हैं, नेतती कानकर लेफ्ट कवर के ऊपर रहने वाले हैं, और कारा तिमुती लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर रहने वाले हैं। थोड़े से नाम कभी कभी टंग ट्विस्टर से आपको नजर आते हैं, लेकिन वारी जब ये ट्विस्ट करते हैं तो ओपोनेंट के छक्के छुड़ाते हैं। शायद मुनवर, शिवा, कोमुजू, वातर परथा, गंगा बाबू और श्रवण कुमार, ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल सब्स्टिट्यूटेड बेंच पे है, लेकिन जब कोच चाहेंगे इन्हें बुला लिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलाने का मेरे साथी कमेंटेटर, एक टैलेंटेड युवा कमेंटेटर मोनू शर्मा को। स्वागत मोनू। थैंक यू आयुष। स्वागत तो सभी दर्शकों का हुआ है, स्वागत इन दो टीम्स का भी हुआ है मैच पर, और हमारे बीच अतिथिगढ़ जैसा कि आपने अभी बताया था वो भी पहुंचे थे। लेकिन आज के मैच पर किस पे निगाह रहने वाली है? प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हमारा गुनी मिनी, जो कि एक से तगड़े प्लेयर हैं और आज कुछ उसी प्रकार से खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर विजयनगरम निंजास की अगर हम बात करेंगे तो फिर उनके स्टार्टिंग 7 कुछ इस प्रकार से कि वामशी आपको राइट इन पे नजर आएंगे, सेंटर में वहीं पर राजशेखर, लेफ्ट इन पर नाग बाबू जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनके ऊपर भी नजर जरूर बना के रखिए। तो वहीं पर कॉर्नर्स की चर्चा करेंगे तो राइट कॉर्नर पर वेंकटा गोपी आपको नजर आएंगे, राइट कवर पर आपको जो नजर आने वाले हैं राम बाबू, लेफ्ट कवर शेख वाशु, और लेफ्ट कॉर्नर की चर्चा करेंगे तो वेंकट कुमार। वहीं पर जो प्लेयर बेंच पे नजर आएंगे अकाला पवन, संदीप, साडुपू, श्याम, साई कुमार, लक्ष्मी और दुर्गा, कुछ इस प्रकार के प्लेयर्स आपको नजर आने वाले हैं आयुष। अच्छा लाइनअप है। एक ऐसी टीम जैसे हमने आपको पहले बताया जो विजयनगरम के तौर पे आई थी, जिन्होंने पिछला मुकाबला जीता है। पवन जब वहाँ टॉस के लिए गए तो देखना ये कि हुआ क्या, सिक्का किसके पक्ष पे गिरा है। आज के चीफ अतिथि ने सिक्के को उछाला था, और ये भाग्य आपका पूरा भाग्य तो नहीं, लेकिन हाँ कोर्ट जरूर निर्धारित कर देता है। विजयनगरम निंजास की टीम ने टॉस जीता है, अपने कोर्ट का फैसला किया है। काकीनाडा क्राकेंस की टीम इस मुकाबले की पहली रेड लगाकर आएगी, और इसका मतलब ये है कि पहले ही रन से आपको तबाही देखने को मिल सकती है। पहले वक्त हो चुका है काउंटडाउन का, लाइव एक्शन उस पार। युवा आंध्रा चैंपियनशिप ए फीडर इनटू तेलुगु कबड्डी लीग, आज के दिन का तीसरा मुकाबला। ओवरऑल इस संस्करण के छठे मुकाबले की शुरुआत यहां हो चुकी है। 20 मिनट का वक्त जो पहले हाफ में जहां आप अपने मोमेंटम को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और अविनाश की तो कोशिश यहाँ ये रहनी चाहिए कि पहले अपनी टीम को पहली रेड में कम से कम पॉइंट ले ना ले, लेकिन देना। यहाँ ऐसा लगता है मोनू कि पहला ही शिकार इन्होंने कर लिया है। काकीनाडा क्राकेन और पहली ही रेड में अगर आपने शिकार किया है, पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है कि आप उन सारी चीजों को भुलाना चाहते हैं जो पहले मुकाबले में आपके साथ घटी थी। ये वो टीम है जो एक कल क्लोज मुकाबला खेल कर गई है,
और बहुत ही क्लोज पहुंच गई थी, लेकिन जीत नहीं इनके हाथ आई थी। लेकिन आज जरूर चाहेगी, ऐसी टीम के विरुद्ध खेल रही है जो बड़े मार्जिन के साथ अपना पहला मुकाबला जीत कर पहुंची है। तो एक तरफ वो है टीम जो जीत का स्वाद चख चुकी है, दूसरी वो है जिसको पहली जीत अभी भी तराशनी है, और जिसको तराशनी है वो है काकीनाडा क्रैकन्स। लेकिन अगर इस प्रकार से गलतियां करते रहेंगे, एडवांस टैकल की तरफ जाते रहेंगे, तो फिर आप नागा बाबू को तो नहीं पकड़ सकते और बहुत पीछे भी जा सकते हैं। ये एक टेस्ट था। मैं वाकई में देखना चाहता हूं कि विजयनगरम के सामने जो भी इनकी ओपोनेंट टीम होती है वो किस प्रकार का डिफेंस दिखाती है, क्योंकि यदि आप इस टीम के डिफेंस को देखें तो बहुत ही होशियार डिफेंस है। कभी भी आपको गलती करते हुए विजयनगरम के डिफेंडर्स नजर नहीं आएंगे। कल के मुकाबले में वेंकटा गोबी का जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा था, बीपी वेंकटा कुमार का जैसा प्रदर्शन रहा था, दोनों ही खिलाड़ियों ने कॉर्नर की पोजीशन को सटीक तरीके से निभाया है। बहरहाल समरा अगली रेड लगाने के लिए जर्सी नंबर 20 का खिलाड़ी 7 के घर में है और कुल मिला के 21 मुकाबलों में 5.3 पॉइंट्स प्रति मुकाबले में निकाले हैं। 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन का इनका स्ट्राइक रेट है। सुपर 10 इन्होंने अपने करियर में 2 बार लगाए हैं, लेकिन पहली रेड खाली। बहुत समय, जैसा कि आपने भी बताया, 20 मिनट पहले हाफ में आपके पास 20 मिनट हैं। अगर एक दो आपकी एम्प्टी रेट चाहती है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बस मुकाबले में पीछे ना जाएं। दोनों ही टीम बेहतर हैं। वेंकटा कुमार थोड़ी सी चहलकदमी की है, लेकिन इस बार ज्यादा क्लोज गए नहीं। सोच रहे होंगे कि शायद कोई डिफेंडर एक बार फिर से गलती करे, लेकिन इस बार सही हम दिखाया है काकीनाडा क्रैकन्स के डिफेंडरों ने। टीम के कप्तान भी है वेंकटा कुमार, कॉर्नर भी संभालते हैं। गोपी से बच के रहिए। कल वाले मुकाबले में ये खिलाड़ी अपना हाई फाई पूरा करके आया। हम जानते हैं कि अविनाश को मुकाबले की पहली रेड में पॉइंट मिला था, लेकिन वो पोजीशन कॉर्नर की नहीं थी। आपने कवर को टच किया था। सेंटर का खिलाड़ी बिल्कुल पीछे है, वो ज्यादा रेड में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा नहीं। और आखिरी के 5-6 सेकंड जब बचे हैं तो बस अपनी टीम के लिए बोनस जो आप इंश्योर कर सकते हैं वो लाने की कोशिश कीजिए। उसके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुष आप। अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब रिस्क लेने का समय आएगा वहां पर आप रिस्क लीजिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स अक्सर हमने सुना है, लेकिन समय का इंतजार कीजिए। ओहो, इस बार थोड़ी सी चतुराई दिखाई है। कॉर्नर के ऊपर तो टच करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। चलिए, लेकिन काकीनाडा क्रैकन की टीम अब खाली हाथ जाना अफोर्ड कर नहीं सकती। पिछला मुकाबला आपने गंवाया है और इस संस्करण के जो नियम है वो हम आपको एक बार फिर बता दें। एक पूल में कुल मिला के 4 टीमें हैं जो डबल राउंड फॉर्मेट के तौर पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में अपने ही पूल की बाकी टीमों से 2-2 बार टकराती हुई नजर आएगी। चेन टैकल, खूबसूरत टैकल। वेंकटा जो टीम के कप्तान है उन्होंने ये कमाल का शिकार किया है और रेड लगाने आने वाले रेडर को मैच से बाहर किया है। और अभी आपने वो डबल की बात की थी, यहाँ पर डबल प्लेयर यानी कि चेन गई थी और सामने से एक प्लेयर ने पूरी तरह से ब्लॉक किया है। पावरफुल टैकल था ये। चेन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता रेडर के लिए। आप डुबकी लगाते हैं, आप सोचते हैं कि शायद नीचे से निकल जाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर डिफेंडर का भी ठीक ठाक रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मौका रहता है। अगर आप एक टीम से हार जाते हैं तो अभी आपको एक और चांस मिलेगा, क्योंकि आप सेम ग्रुप की टीम के साथ खेल रहे हैं, यानी कि अपने घर वाली टीम के साथ खेल रहे हैं। अब एक नहीं 2 मौके यानी कि 2 मैच आपको मिलते हैं, लेकिन इस बार बड़ी ही आसानी के साथ इस बार रेडर ने शिकार बना लिया डिफेंडर्स का, चकमा देते हुए वापस आए। ये एक आसान सा टैकल एरर है क्योंकि डिफेंडर सोलो आ गए थे। लॉबी के बहुत करीब रेडर वहां पे थे और जब भी आप देखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी मिड लाइन यानी कि जो सेंटर लाइन है उसके और साथ ही साथ जो बॉक लाइन है उसके बीच में हो तो अकेले टैकल करना किसी भी डिफेंडर के बस की बात होती नहीं है। काकीनाडा क्रैकन की टीम को यहाँ रिवाइवल चाहिए। बोनस पॉइंट आपको पॉइंट के लिहाज से भले सजीव रखेंगे, लेकिन यकीन मानिए विजयनगरम निंजास की टीम ने कल अपने प्रतिद्वंद्वी के खेमे को 3 ऑल आउट मारे हैं, तो ऑल आउट से बच के रहना पड़ेगा इस टीम के विरुद्ध। बिल्कुल बचना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारी चीजें पहले से देखी हैं, कैसे क्या चल रहा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान भी रह जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर आसान रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नागा बाबू, इनका नाम बड़ा ही कमाल का है। बचेगा नहीं डिफेंडर। देखिए थोड़ी सी गलती तो हुई थी, रेडर ने पूरी तरह से मौका दे दिया था डिफेंडर्स को। 4 का घर है, आसान नहीं रहता रेडर के लिए, और आपने मौका भी दिया, लेकिन
डिफेंडर भी कुछ इस प्रकार का प्रयास कर नहीं पाए जो होना चाहिए था, जो ब्लॉक होना चाहिए था वो हुआ नहीं। समझदारी का फैसला है। एक एक रेड आप चलते रहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के पॉइंट निकालते रहिए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं बल्कि गोपी से यहाँ गुना हुआ है। कॉर्नर की पोजीशन पे मौजूद थे जिसे राइट कॉर्नर कहा जाता है। अटैक जो किया गया वो वेंकट की तरफ से किया गया था लेफ्ट कॉर्नर पे, और जैसे ही देख लिया कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ा। और अच्छी चीज ये हुई है कि रिवाइवल मिलेगा यहाँ, और रिवाइवल इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आप कम प्लेयर्स के साथ तो नहीं खेल सकते, थोड़ी देर तो सरवाइव कर सकते हैं। कल हमने देखा था यही वो टीम थी काकीनाडा क्रैकर्स जिन्हें बैक टू बैक सुपर टैकल भी किए थे, लेकिन परिस्थिति को बहुत ज्यादा देर टाल नहीं पाए, वो विपरीत हो गई थी, ऑल आउट का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज टीम चाहेगी कि वो ऐसी सिचुएशन में पहुंचे ना, कंफर्टेबल तरीके से मैच को चलाएं और पहली जीत तराशें, क्योंकि एक एक जीत बहुत जरूरी है। आपको अगले राउंड के लिए जाना है या टॉप 4 की रेस के लिए अगर अपने आप को देख रहे हैं, तो फिर जितने भी मैचेस आपको मिलते हैं आपको हर मैच खेलना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ओ चलिए, इस बार समर सिम्हा रेड्डी, ये कल के मैच के बड़े प्लेयर, आज थोड़ा सा वहां पर फिसले और थोड़ी सी ऐसा लगा है कि शायद दिक्कत परेशानी भी महसूस कर पा रहे हैं। ऑफिशियल टाइम आउट। इंजरी कंसर्न। और कभी भी लोअर बॉडी पे जब अटैक होता है, किसी प्रकार का स्प्रेन आता है, तो आसान नहीं होते ये दृश्य। और हमारे जो फिजियोथेरेपी पार्टनर है वो तुरंत यहाँ पे आएंगे, एक मैजिकल स्प्रे का छिड़काव करेंगे। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस खिलाड़ी को दिक्कत ज़्यादा ना हो। जर्सी नंबर 20 पहनते हैं, लड़खड़ाते हुए बाहर जाएंगे, इंजर्ड है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जर्सी का नंबर थोड़ा सा रोचक हो। नी बैंड हुआ, पीछे से बैक होल्ड किया गया वेंकट कुमार के द्वारा, और फिर ऐसा लगता है कि जब बाकी का डिफेंस, कवर्स का डिफेंस उनके पाँव की तरफ जा रहा था, तो शायद थोड़ा सा स्प्रेन आया है और उसी का खामियाजा इस खिलाड़ी को भुगतना पड़ा है। और वो 20 नंबर की जो जर्सी है, मोनू संभव थे, उसका राज ये हो सकता है कि इनका जो जन्मदिन है वो 20 अगस्त को आता है। तो क्या अपने जन्मदिन के नंबर की ही जर्सी पहन के खेलते हैं? बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सुपर टैकल की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बन गई है। कल इन्होंने सुपर टैकल पे सुपर टैकल किए थे और आज भी वो अपॉर्चुनिटी आ गई है काफी लड़के क्रैकर्स के लिए। लेकिन रेड्डी बिल्कुल से तैयार है, बिल्कुल तैयार है कि वो अटैक करने की तरफ देखेंगे। शायद वो कोई टच मिला नहीं है, उन्हें भी पता है कि ये वो टीम है जिसके पास मजबूती है ऐसी सिचुएशन में टैकल करना, रेडर को पकड़ना। तो ज्यादा रिस्क उन्होंने भी नहीं लिया है, लेकिन अभी कुछ तो बड़ा क्लाइमैक्स आने वाला है आयुष। देखना पड़ेगा, सिर्फ 1 अंक का फासला दोनों टीमों के बीच में, जो बहुत बड़ा नहीं है। काकीनाडा क्रैकर्स की टीम की तरफ से एक ही खिलाड़ी रेड्डी था जिससे ज्यादा एक अपेक्षाएं थी, वो भी अब इंजर्ड होके बाहर आए। और ऐसी परिस्थिति में जो 2 शुरुआती पॉइंट अविनाश ने निकाले थे, उन्हें ही पॉइंट निकालने पड़ेंगे। दिक्कत देखिए आप, जितने भी पॉइंट यहाँ पे काकीनाडा क्रैकर्स के लिए निकालता हुआ ये खिलाड़ी नजर आया है अविनाश, वो सारे के सारे बोनस है, यानी कि रिवाइवल में योगदान नहीं रहा इनका। और रिवाइवल में योगदान नहीं रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर पर उन प्लेयर्स को नहीं लेकर आ सकते जो बाहर जा चुके हैं। चलिए, काकीनाडा क्रैकर्स ने अपने एक और योद्धा को खो दिया है। थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा था जहां पर रेड्डी साहब को बाहर जाना पड़ा था, जो कि एक ही प्लेयर पिछले मुकाबले में दमखम दिखाता हुआ नजर आया था। यहां रेडर ने थोड़ा सा पैर आगे किया, एंकल को पकड़ने का प्रयास था कॉर्नर प्लेयर के द्वारा, जो कि सिंगल था। चेन देखती रह गई और उससे पहले शिकार कर दिया है रेडर ने डिफेंडर का। अविनाश को अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा। बोनस के अतिरिक्त अपने टीम के लिए पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, वरना विजयनगरम निंजास की टीम इस ऑल आउट को इतनी आसानी से, इस मौके को इतनी आसानी से गंवाएगी नहीं। यही काबिलियत रही है इस टीम की। शुरुआती लगभग 9 सवा 9 मिनट का खेल खेला गया है और ओवरऑल यदि हम देखें तो 11 पॉइंट्स का लेन देन हुआ है। जिस पॉइंट की आवश्यकता थी, जिस रिवाइवल की आवश्यकता थी, वो राजशेखरा के तौर पे टच मिला और पॉइंट भी मिला। 2 से भले 3। चलिए, यहाँ पर चतुराई, चालाकी सब कुछ दिखाया है। कहीं पे नजर, कहीं पे निशाना, चाह कहीं और रहे थे, अटैक कहीं और करना था, लेकिन सीधे अटैक किया है इनके ऊपर और वो एक रिवाइवल जो चाहिए था वो मिल गया। फिर से सुपर टैकल ऑन है काकीनाडा क्रैकर्स के लिए। कल इस टीम ने 2 लगातार और 1 अलग, यानी कि टोटल 3
सुपर टैकल किए थे, लेकिन आज टीम उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है क्योंकि पहला मुकाबला गवा कर गई है। जब पहला मुकाबला गवा देते हैं तो फिर नागा बाबू जैसे रेडर के विरुद्ध आप अच्छा खेलें, उन्हें टैकल करें, शायद आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन भी हो जाता है। सुपर टैकल की परिस्थिति, सीधा सीधा निशाना लेफ्ट कॉर्नर को बनाना चाह रहे थे, एक आसान सा रनिंग एंड टच मारा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं आंकड़ों की दुनिया को खंगालने का प्रयत्न कर रहा था। काकीनाडा क्रैकेंस की टीम ने कुल मिला के 7 पॉइंट निकाले हैं और वो सातों के सातों पॉइंट अविनाश के नाम आए हैं। एक भी रेड इस जवान की खाली गई नहीं है। एक रेड ऐसी थी जिसमें 2 पॉइंट निकाल के लाए, बाकी सब रेडों में एक एक पॉइंट निकाले हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो रेडर हो या वो डिफेंडर हो, जिसने अपनी टीम काकीनाडा के लिए एक भी पॉइंट निकाला हो। और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी हो जाती है कभी कभी टीम की। जैसे कल रेड्डी ने काम किया था, सुपर 10 लगाया था, आज वो कार्य दूसरा प्लेयर कर रहा है, साथ नहीं मिलेगा किसी का तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। एक बार फिर से चहलकदमी किया, किक भी लगाई, बोनस का ट्राई किया, सुपर 10 के आसपास तकरीबन पहुंच गए। బోనస్ ఇచ్చేంత వెనక్కి పెట్టుకోవటండి, అర్థమైందా బాస? నువ్వు మాట్లాడు బాస, కార్నర్తో ఉండేటప్పుడు మాట్లాడుకోవద్దుగా, మాట్లాడితే సరిపోతుంది. అన్న 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 పవన్ అన్న చూడు, మామూలుగా వాళ్ళు మాట్లాడమని చెప్పు అంటున్నాను, కొద్ది బ్యాక్ పెట్టినట్టు మైక్ ఉంది కదా చెప్తున్నాను, చూడు మాట్లాడమని చెప్పు అంటున్నాను, ఓకేనా? అండ్ బ్యాక్ ఆడమని చెప్పు సరిపోద్ది. जो टाइम आउट है वो इस समय लिया गया था विजयनगरम निंजास की टीम के द्वारा और संभवतः यही रणनीति होगी कि ऑल आउट कीजिए। बात जो हुई है वो ये है कि सीनियर प्लेयर्स को लगातार एकत्रित होकर और जूनियर प्लेयर्स से बात करनी चाहिए और मदद कीजिए अपने जूनियर प्लेयर्स की कि वो जितनी आसानी से पॉइंट निकाल सके या जिस भी कठिनाई में वो है उससे बाहर आए। वामसी की अच्छी रेड, एक आसान पॉइंट निकाल के उस सुपर टैकल की सिचुएशन में जॉन को बाहर करके एक और बार ऑल आउट के करीब धकेल दिया है। जॉन को यहां भी नहीं बनने दिया है डॉन। देखिए यहां तो पूरी तरह से फंस गए थे, लेकिन जो टीम है काकीनाडा क्रैकेंस, उसके आज जो प्लेयर्स है शायद मुझे लग रहा है कि उनके बीच में वो तालमेल नहीं बन पा रहा है। अगर ये तालमेल बनता है तो कई बार अपॉर्चुनिटी आई है कि आप टैकल कर सकते हैं, लेकिन उसको हर बार गवाया है, हर बार गवाया है। गवाएंगे यहां पर इस बार अविनाश को, जिसकी आपने अभी चर्चा की थी कि कोई भी रेड खाली नहीं गई है। अब उस योद्धा को भी टैकल कर लिया गया है, तो अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है काकीनाडा क्रैकेंस को। अविनाश सीधे जा रहे थे कुमार के पास, लेकिन दूसरे छोर पे गोपी और उनके साथी खिलाड़ियों ने, विशेषकर कवर्स के खिलाड़ियों ने जो फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट किया और उसके साथ ही साथ उनके साइड राइट कवर ने जो बैक होल्ड किया, उससे बच के निकलना अविनाश के बस की बात नहीं थी। एक तरफ विजयनगरम निंजास की टीम ने 9 पॉइंट कमाए तो दूसरी तरफ अविनाश के अकेले के नाम 9 पॉइंट है। सुपर टैकल में अकेला खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को रोक नहीं सकता और राजशेखर रेड्डी के नाम यहाँ 1 पॉइंट प्लेयर को आउट करने का, 2 पॉइंट अपने प्रतिद्वंद्वी को ऑल आउट करने के। और विजयनगरम निंजास की टीम ने एक बार फिर वही कार्य किया है जो पिछले दिन 3 बार करके ही आए हैं, धकेल दिया अपने प्रतिद्वंद्वी को ऑल आउट की तरफ। पलक झपकते ही ये ऑल आउट दे दिया है। ऐसी सिचुएशन में तो फिर रेडर का बोल बाला रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि टीम ऑल आउट हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो डिफेंडर पकड़ लेता है रेडर को, लेकिन यहाँ पर वो कार्य नहीं कर पाए। सिर्फ अविनाश एक ऐसे प्लेयर है काकीनाडा क्रैकेंस के लिए जिन्होंने बहुत सारे पॉइंट निकाले, आउट होते हुए भी वो पॉइंट देकर गए और ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक प्लेयर को एक मैच में, वो पहले हाफ में उन्होंने कंप्लीट कर लिया सुपर 10। और इससे बड़ा क्या ही हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। लेकिन आज टीम से वो साथ नहीं मिल रहा है। रेड्डी साहब पहले ही बाहर जा चुके हैं, लेकिन अभी उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वारी महेश को वो अंदर लेकर आए, यानी कि बदलाव किया गया है इंजरी के चलते। लेकिन ये बदलाव कैसा साबित होगा टीम के लिए, ये देखना पड़ेगा आने वाले तकरीबन 26 मिनट में। यदि मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है तो जब वो खिलाड़ी बाहर हुआ था टीम का स्कोर 3 पॉइंट था और तब भी तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो अविनाश के नाम पे थे और सुपर 10 अपना पूरा किया था। आखिरी जो रेड जब वो पकड़े गए थे तब भी उन्होंने अपना बोनस निकाला और वहीं अपना सुपर 10 पूरा किया। अब क्या किसी और खिलाड़ी का साथ मिलेगा? जॉन पिछली बार डिफेंसिव एरर करके बाहर हुए थे, यहाँ एम्प्टी रेड के साथ अपने ऑल आउट होने के बाद के सिलसिले की है शुरुआत। ओहो चलिए इस बार भी 1 या 2
2 points. 2 पॉइंट्स, एक नहीं इस बार 2 शिकार किए रेडर ने। और आयुष, ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ा आसान सा चल रहा है गेम इस समय विजयनगरम के लिए? कोई भी रेडर जा रहा है आसानी के साथ पॉइंट लेकर आ रहा है। जो डिफेंडर्स हैं काकीनाडा क्रैकन्स के, वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं रेडर्स को। अब जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी मोनू, तो हमने जिक्र किया था की स्टोरीज का, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि लोन बट लीथल, और वो खिलाड़ी था समरा सिन्हा। लेकिन आज समरा सिन्हा नहीं चला, तो दूसरी तरफ अविनाश चले। मगर दिक्कत जो इस टीम की, चाहे कल हो चाहे आज हो, जो निरंतर रही है वो है इनका डिफेंस। डिफेंस में किसी भी खिलाड़ी का कोई योगदान नहीं है। और आप किसी भी मैच को, चाहे वो कबड्डी का खेल हो, वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, आपके सिर्फ एक पहलू से नहीं जीत सकते। ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन दिखाना पड़ेगा। और आज वो बिल्कुल फीका नजर आया है काकीनाडा क्रैकन्स के लिए। 10 पॉइंट काकीनाडा क्रैकन्स, एक ही प्लेयर वो 10 पॉइंट निकालता है। बाकी के जो 6 प्लेयर्स हैं वो कोई भी योगदान दे नहीं पाए। और बड़ी अचंभे वाली बात है कि बाकी के 6 प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए, और प्रयास कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। रीड करने भी जा रहे हैं, डिफेंस में भी अपना दमखम लगा रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। ये भाग्य है, तो शायद भाग्य आज अच्छा नहीं है पहले हाफ में काकीनाडा क्रैकन्स के बाकी 6 प्लेयर्स का। इस मुकाबले की पहली डू और डाई की परिस्थिति। कारी जॉन रेड लगाने के लिए आए थे, थोड़े से डीप चले गए। गोपी और कवर्स के खिलाड़ी जो वैसे भी कोई गलती नहीं करते, उन्होंने बड़ी आसानी से जॉन डाडॉन को शिकार बनाते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला। एंकल्स, और एंकल्स पे जब हमला होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए वो तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब होंगे उनके। No bonus. Yeah, please. TV umpire, Vijayanagram challenge, no bonus. Our decision, bonus point. Please review. सीधे सीधे मांग की गई है विजयनगरम के द्वारा कि जो आपने बोनस दिया है रेडर को, वो भी नहीं जाना चाहिए। बोनस लेने का सही तरीका तो ये होता है कि आपका एक पैर बोनस लाइन के अंदर और उसी समय दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बोनस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है तो फिर वो बोनस पॉइंट भी नहीं मिलेगा रेडर्स को। और जहां तक आयुष, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही रिव्यू रखा गया है पूरे मैच के लिए। पहले पर हाफ हमने देखा था कुछ मैचेस में, कुछ सीरीज के दौरान, लेकिन युवा आंध्रा चैंपियनशिप की बात करें तो आई थिंक एक रिव्यू ही दिया गया, एक अनसक्सेसफुल रिव्यू पूरे मैच के लिए। और एक अच्छी सोच है, जब आप सिंगल राउंड रॉबिन में खेल रहे हैं तो आपके लिए इतना बहुत है। फिर जब टॉप की 4 टीम्स आएगी तो देखा जाएगा, संभवतः हर एक हाफ के लिए एक रिव्यू दिया जाए। पहले जो सवाल है उसका जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर तो बोनस लाइन नहीं कटी, मुझे ऐसा लगता है कि बोनस दिया जाना चाहिए। अब यदि नहीं तो मुकाबले के खत्म होने के बाद मैं तुरंत ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, स्पॉन्सर्ड बाय मोनू। चलिए फिलहाल टीवी एम्पायर को क्या दिखता है क्या नहीं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बोनस लाइन के अंदर तो था पैर, लेकिन देखना पड़ेगा क्या उसी समय दूसरा पैर हवा में था या नहीं। अब टीवी एम्पायर से तो कोई भी गलती हो नहीं सकती, ऊपर वाला सब देखता है। टीवी एम्पायर के पास बहुत सारे एंगल्स हैं, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत देर में क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन रिव्यू तो अच्छा किया है, थोड़ा जल्दी ले लिया है, वो 1 पॉइंट के लिए है। आप आगे जा रहे हैं फिर भी आप बोनस पॉइंट नहीं देना चाहते हैं। थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है ऐसी सिचुएशन में, आप बचा के रखना चाहते हैं, टीम चाहते हैं कि वो अंत तक जाए। लेकिन रिव्यू अच्छा किया है, बहुत क्लोज था ये। पक्ष में जाएगा विपक्ष जाएगा, बस ये फैसला आने वाला है, लेकिन सोच अच्छी थी। हमारे जो टीवी एम्पायर है उनके पास ज़रूर एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिससे उन्हें हमसे ज़्यादा एंगल्स दिखते हैं। और मल्टीपल एंगल्स का एडवांटेज ये कि आप अपना मन बना सकते हैं, जो निर्णय आपको लगता है। विजयनगरम निंजास की टीम को जो रिव्यू, जी मोनू, नहीं मुझे ये लग रहा था कि शायद वो रिव्यू अपना बचा लेंगे, रिव्यू रिटेन करेंगे, क्योंकि एक पैर बोनस लाइन की
पूरी तरह से अंदर तो था लेकिन दूसरा पैर उस समय हवा में नहीं था, ये मुझे लगा। और टीवी एम्पायर को यही लगा था या शायद कुछ और भी थी चीजें, बस वही देखना बाकी था। 4 का घर है इस समय रेडी के लिए, 2 रेड 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट चाहिए होंगे। 4 के घर से आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विजयनगरम निंजास के लिए वो नगर अपना बन गया है, ये नगर उनका है और उनकी ही चलने वाली है, क्योंकि पिछले मैच में भी वो एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके पहुंचे यहाँ पर काकीनाडा क्रैकन्स के विरुद्ध। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से नहीं रही है, किसी भी रेडर के लिए, किसी भी डिफेंडर के लिए मनचाहा पॉइंट्स पा रहे हैं इस मुकाबले में। काकीनाडा क्रैकेंस की टीम ऑल आउट होने के बाद एक भी पॉइंट नहीं निकाला। मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 7 मिनट के खेल में एक भी पॉइंट काकीनाडा क्रैकेंस को नहीं मिला था, और आखिरकार अब ये 1 पॉइंट उनको मिलेगा। बाशु को बाहर जाना होगा। पहला शिकार इस मुकाबले का जो खिलाड़ी हुआ था वो भी बाशु ही था, और यहाँ भी उन्हीं से गलती हुई है, उन्हीं को खामियाजा भुगतना होगा। और काकीनाडा क्रैकन्स के लिए ये वो पहला प्लेयर है जो अविनाश के अलावा पॉइंट निकाल कर लेकर आया है। मतलब टीम ने 11वां पॉइंट निकाला है और उसमें किसी दूसरे प्लेयर का साथ मिला है। पहले अविनाश ने वो 10 पॉइंट निकाल के दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 टाइम आउट। लेकिन आयुष, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी काकीनाडा क्रैकन्स के लिए तो अभी भी यही बनी हुई है, क्योंकि रेडर्स ने काम किया है। अविनाश ने 10 पॉइंट निकाले हैं, अपनी रेटिंग में निकाले हैं, साथ ही प्लेयर ने रेडिंग के दौरान ही निकाला है, लेकिन अभी तक कोई भी टैकल पॉइंट नहीं आया है। कल ये टीम सुपर टैकल पे सुपर टैकल कर रही थी, आज नॉर्मल टैकल नहीं कर पाई है। चाहे वो नागा बाबू सही या कोई अन्य रेडर सही, किसी का भी शिकार नहीं कर पाए। और गलतियां की है रेडर्स ने, लेकिन गलतियां किससे हो गई? काकीनाडा क्रैकन्स के डिफेंडरों के द्वारा। पीठ दिखाई है, पैर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन पॉइंट नहीं लेकर आए विजयनगरम के रेडर, क्योंकि डिफेंडर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद आज थोड़े से डाउन हैं। अभी मैच की जब शुरुआत हुई थी आयुष, तो आपने कहा था चोरी होगी आज, चाहे माखन चोरी की बात करें या फिर पॉइंट्स चोरी की। पॉइंट्स चोरी हो रहे हैं काकीनाडा क्रैकन्स के घर से। लेकिन यहाँ पे तो डिफेंस दिन दहाड़े डाका डाल रहा है। जिस आसानी के साथ रेडर को बाहर की तरफ धकेला गया, ये दृश्य देखने लायक थे। पहले यहाँ पे देखिए वेंकट कुमार जो पीछे की तरफ आते रहे, फिर कवर्स की कॉर्नर का कॉम्बिनेशन, कवर्स ने इनिशिएट किया था फ्रंकल ब्लॉक। बाशु उनके साथी खिलाड़ी, उन्होंने फ्रंकल ब्लॉक इनिशिएट किया, और उसके बाद जब एंकल को पकड़ लिया वेंकटा के द्वारा, जो इस टीम के कप्तान भी है, बाहर जाने का कोई अवसर नहीं, सेफली बाहर जाने का इनफैक्ट मैं कहूं तो कोई अवसर नहीं। डू और डाई की तो नहीं, लेकिन हाँ सुपर टैकल की परिस्थिति है। लुत्फ उठाइए मोनू। देखिए, कल तो मैंने कई बार आनंद लिया था ऐसी सिचुएशन का, और वहां पर टैकल भी किया गया था, लेकिन आज आपका सामना विजयनगरम से हो रहा है, और उन्हें अच्छे से पता है कि कैसी सिचुएशन में कैसे खेलना है। भले ही सुपर टैकल की सिचुएशन है, लेकिन सुपर डुपर रेडर्स को आप नहीं रोक सकते। 2 थे प्लेयर, सामने से ब्लॉक करने चले गए थे, लेकिन ब्लॉक में उतना दम नहीं, पकड़ नहीं। रेडर्स की जो मंशा थे वो सीधे साफ अपने घर वापस जाना है, और काकीनाडा क्रैकन्स एक बार फिर से दहलीज पर खड़ी हुई है दूसरे ऑल आउट की। सिर्फ एक ही प्लेयर बचा हुआ है। 11 पॉइंट्स काकीनाडा क्रैकन्स ने अभी तक निकाले अपनी रेडिंग के दौरान, लेकिन कोई भी टैकल पॉइंट नहीं आया है। आखिरी योद्धा बचे हुए थे, और आखिरी योद्धा को भी जाना पड़ेगा बाहर। मनोहर लाल आई थिंक रेड करने के लिए गए, बोनस दिया है, लेकिन 1+2 विजयनगरम के लिए ये आए। पलक झपकते पहले हाफ में हमने ऑल आउट देख लिया था, और जब पहले हाफ की समाप्ति होने को है तो दूसरा ऑल आउट भी हम सभी ने देख लिया है। आप सही कह रहे थे आयुष, टाका पड़ रहा है इस समय। देखिए यहाँ पर भी वो जबरदस्ती सी की गई है, वॉक लाइन और मिड लाइन के बीच में ज्यादा जगह नहीं थी, वहां पर जाकर टैकल किया है। कमाल की डिफेंडिंग रही है, लाजवाब डिफेंडिंग रही है विजयनगरम निंजास की टीम की तरफ से। ओवरऑल अभी इस मुकाबले में जो 22 पॉइंट इस टीम ने निकाले हैं, लेकिन उससे पहले रेड और टैकल का पॉइंट स्लिप अप देखें तो रेड लगाते हुए 12 पॉइंट है काकीनाडा क्रैकन के पास, और स्प्लिट अप को यदि आप देखेंगे तो एक भी पॉइंट नहीं। 0 सन्नाटा, खाता नहीं खोल पाई है काकीनाडा क्रैकन अपने डिफेंस में। वहीं दूसरी तरफ विजयनगरम निंजास की टीम ने ओवरऑल अब तक इस मुकाबले में 6 पॉइंट टैकल के निकाले हैं। ये तो ऐसा हो गया है कि प्लेयर, अगर हम क्रिकेट की बात करें, बल्लेबाज रन बना रहे हैं, लेकिन गेंदबाज मिठाई खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मार पड़ रही है उनके ऊपर, यानी कि रन्स दे रहे हैं पर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं।
फिलहाल शुरुआती 20 मिनट का खेल खेला जा चुका है, यानी पहले हाफ की कहानी यहाँ समाप्त होगी और इस समाप्ति में खुशनुमा चेहरे आपको विजयनगरम निंजास की तरफ से नजर आएंगे, लेकिन काकीनाडा क्रैकेंस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। एक तरफ निंजास के पास 23 पॉइंट और काकीनाडा के पास कुल मिला के 12 पॉइंट है, तो फासला बहुत बड़ा है, बहुत कड़ा है और सारे के सारे पॉइंट सिर्फ रेड में आए हैं। उसके नीचे आप देखें तो बिल्कुल वही स्कोर जो 10वीं के बोर्ड में लगभग हमारे आया करते थे, 0-0-0। यहाँ मोनू की मार्कशीट है जिसमें 13, 6, 4, 6 और 4 10 में से होंगे। नहीं आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो मार्कशीट आपने थोड़ी सी गलत बता दी है। चलिए, वो अच्छे मार्क्स जो आए विजयनगरम निंजास के आए, जिसमें 13 रेड पॉइंट है, 6 टैकल पॉइंट, 4 ऑल आउट के पॉइंट, यानी कि तकरीबन हर जगह से उन्होंने पॉइंट निकालने की कोशिश की। एक्स्ट्रा पे नहीं गए, कह रहे मुफ्त का नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए मेहनत का चाहिए, वो मेहनत का उन्हें मिला है। मेहनत की है किसी प्लेयर ने, तो वो किया अविनाश ने, सुपर 10 लगा दिया था पहले ही हाफ में और उसके बाद वो भी थोड़े से शांत नजर आए। 3 टैकल पॉइंट आए अभी तक राम बाबू के लिए, जो कि बेस्ट डिफेंडर है पहले हाफ के। सक्सेसफुल रेड की बात करेंगे तो 17 में से 8 बार सफलता काकीनाडा ड्रैगन्स को मिली है, लेकिन सक्सेसफुल टैकल्स पे नजर डालेंगे तो वहां पर 13 में से एक भी बार कोई भी सफलता नहीं मिली है। सिचुएशन डू और डाई की भी आई एक बार, वहां पर भी कोई सफलता नहीं। बोनस पॉइंट 7 जरूर मिले, लेकिन रिव्यू उन्होंने कोई किया ही नहीं, तो वही चर्चा करेंगे विजयनगर निंजास के लिए। 17 में से 12 बार सफलता रेडर्स मिली है, तो वहीं 11 में से 6, ये आंकड़े बेहतर हैं। 11 में से 6 बार आपको सफलता मिल जाती है टैकल करते समय, तो फिर आपका वो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। डू और डाई सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो रहता है किसी टीम के लिए, वो ये भी है कि आप डू और डाई में जाएंगे तो कैसे अपने आप को जीवित रख पाएंगे और पॉइंट निकालेंगे। 2 बार सिचुएशन आई, 2 बार पॉइंट निकालेंगे। लेकिन आज 24 वर्ग के खिलाड़ी अविनाश ने जिस प्रकार का खेल दिखाया है, अपनी टीम ने कुल मिला के 12 पॉइंट कमाए, जिसमें 10 पॉइंट यानी कि सुपर 10 इस अकेले खिलाड़ी ने लगाया है। याद रखिए, जब इस टीम का स्कोर 10 था तो 10 के 10 पॉइंट अविनाश के नाम थे, और अविनाश नामक इस खिलाड़ी ने जिस प्रकार की कोहरामी शुरुआत दी थी, ऐसा लगा था कि किसी और खिलाड़ी का साथ मिलेगा तो संभवतः स्कोर लाइन इनकी टीम में को एक अच्छा स्कोर डिफरेंस डालेगी। सिर्फ 16 साल के थे जब इन्होंने लोकल लेवल पे अपनी सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था और पड़कच्चे उड़ाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब इन्हें लगा कि इन्हें किसी और अच्छे कोच के पास जाना चाहिए, तो भाई श्रीकांत के पास ये गए थे स्काई एकेडमी में, और वहां से इनका भाग्य सुधरना शुरू हुआ। कुल मिला के 8 रेड लगाई और टच पॉइंट जो है वो 4 है काकीनाडा क्रैकन की तरफ से। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो ये एक ही खिलाड़ी की कहानी बयां करते हैं, अविनाश। उसके अलावा किसी खिलाड़ी ने प्रभावित नहीं किया। आज अविनाश, कल शमर सिन्हा रेड्डी, उन्होंने कल 12 पॉइंट निकाले थे। पहला हाफ उनका भी ठीक ठाक रहा था, सुपर 10 लगा दिया था, लेकिन दूसरे हाफ में सिर्फ 2 ही पॉइंट निकाल पाए थे। आज अविनाश ने पहले हाफ में बहुत अच्छा किया है, क्या इसी लय को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे दूसरे हाफ में, लेकिन अभी तो मार्जिन बहुत बड़ा है। विजयनगरम निंजास बहुत आगे पहुंच गई है। इधर से भी रेड्डी जैसे ही रेड करने के लिए आए, सीधे रनिंग हैंड टच किया और पॉइंट अपने नाम किया है, यानी कि पॉइंट्स पे पॉइंट आ रहे हैं। और इस बार किसको अपना शिकार बनाया है? अविनाश के ऊपर अटैक किया, यानी कि अब वो रणनीति साफ हो चुकी है कि अगर अविनाश ने सुपर 10 लगाया है, 10 पॉइंट निकाले, तो फिर उन्हें मैच से बाहर रखा जाए और हम मैच को इजीली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने पक्ष में कर लेंगे। बिल्कुल सही, एक अच्छी सोच, और यही होना चाहिए। आपको पता है कि वैसे भी सामने वाली टीम का डिफेंस लड़खड़ा रहा है, कोई भी खिलाड़ी उनके लिए पॉइंट नहीं ला रहा है। का सीधा सा मतलब यह है कि उनके रेडिंग डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दीजिए और पूरी टीम को एक ही जगह पे रोक दीजिए। काकीनाडा क्रैकेंस की तरफ से अब परिजॉन, जो ज्यादा इंप्रेसिव साबित अब तक हुए नहीं है, छोटी कद काटी के हैं, यदि दीप जाते हैं तो 7 का दर इनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है, यानी कि बोनस निकालने के लिए अवसर जो आपके हैं वो वैसे भी थोड़े से सूक्ष्म हो जाते हैं। चेन टैकल में फंसा लिया, मिड लाइन के इतने करीब थे, फिर भी अपने खेमे में अंदर बुला लिया। बाएं हाथ का खेल कीजिए, दाएं हाथ का खेल कीजिए। विजयनगरम इस समय दोनों हाथ से खेल को अपने पक्ष में रख रही है। रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, डिफेंस ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है। चलिए, एक बार फिर से एडवांस टैकल था, सामने से ब्लॉक किया है, ये पावरफुल टैकल एक बार फिर से हमें देखने को मिला है। और बात करें युग की, तो फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आज के दिन ही अवतरित हुए थे, जो कि बंसी बजाते हुए काफी ज्यादा वायरल भी हैं। तो पिछली जो रेड हुई थी विजयनगरम निंजास ने, उन्होंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अविनाश को कर दीजिए बाहर और हम गेम में बहुत आगे चले जाएंगे इजीली तरीके से। Raiders save 1 point, Vijayanagaram Ninjas
Jersey number 3 out. बांसुरी का आपने जिक्र किया, लेकिन जिस मृदुलता के साथ, जिस रिदम के साथ यहाँ धुन में थिरका रही है अपने प्रतिद्वंद्वी को विजयनगरम निंजास की टीम, उसकी दाद देनी पड़ेगी। सोलो टैकल थोड़ा सा एडवांस मैं इसे इसलिए कहूंगा क्योंकि जो रेडर का मोमेंटम है वो अपने खेमे की तरफ है, उनकी पीठ आपके सामने है और उनका जो चेस्ट एरिया है, उनका जो फेस है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन है, और ऐसे में रेडर को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ जज्बातों में बह गए गोपी। वेंकट गोपी वैसे गलती नहीं करते, लेकिन आज दिन इनके पक्ष में नहीं। 1 point, Kakinada Kraken. Jersey number 14 out. एक और पॉइंट आया है और वो भी रेडिंग के दौरान ही आया है। अभी भी वो खाता नहीं खोला है डिफेंस डिपार्टमेंट का। इस बार जंप बड़ी कमाल की थी, पहले से ही भाप लिया था कि रेडर थाइस पर जाएगा तो मुझे जंप लगानी है और अपने आप को बचाकर जाना है। काकीनाडा क्रैकन्स के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही रहा है कि सिर्फ एक ही रेडर ने काम किया, चाहे हम कल की बात करें समर सिम्हा रेड्डी और आज अविनाश, उसके बाद कोई भी रेडर कार्य नहीं करा है। इस बार रेड्डी साहब भी एकदम से तैयार हैं, रनिंग हैंड टच अस्त ध्वस्त किया है काकीनाडा क्रैकन्स के खेमे को, इतर वितर किया और पॉइंट अपने नाम किया है। दोबारा देखिए रेड करने की कला क्या होती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि रेडर हड़बड़ाहट में था, बड़ी आसानी के साथ गए, उसके बाद अपने डिफेंस को टच किया और राजशेखरा ने ये सुनिश्चित कर लिया कि लॉबी एक्टिवेट हो गई है, उसमें पांव रखा, वहां भी कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। जब उन्हें लगा कि अपने खेमे में आना चाहिए वहीं आए। दूसरी तरफ वारी मरेश को देखिए, 3 बार तो वो 360 डिग्री घूम चुके हैं। उनकी बॉडी की स्पीड बहुत तेज नजर आ रही है, लेकिन गति है पर प्रतिद्वंद्वी के लिए क्षति नहीं है। काकीनाडा क्रैकन्स 10 पॉइंट अविनाश निकालने के बाद सिर्फ 3 ही पॉइंट उनके बाकी प्लेयर्स निकाल पाए। अविनाश भी उसके पास ज्यादा चले नहीं, जैसे मैट पर आए सबसे पहले शिकार करके उन्हें बाहर कर दिया। और एक श्लोक मुझे याद आता है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। कहते ना कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होता रहूंगा, रक्षा करता रहूंगा। लेकिन काकीनाडा क्रैकन्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये रही है, एक प्लेयर ने वो जिम्मेदारी तो उठाई है लेकिन साथ नहीं मिला है। वहां पर कृष्ण को साथ मिला था बलराम का, यहाँ पर साथ नहीं मिला है। कल समर सिम्हा रेड्डी को किसी का साथ नहीं मिला, टीम हार गई। आज अविनाश ने वो जिम्मेदारी उठाई लेकिन किसी और प्लेयर का साथ नहीं मिला है। बिल्कुल सही आपने कहा है। अविनाश सुपर 10 लगाने वाला ये खिलाड़ी सुपर 10 के बाद थोड़ा सा रुक सा गया था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो महेश के नाम 2 पॉइंट है, मनोहर के नाम 1 पॉइंट है। यहाँ रेड लगाने आने वाले महेश के एंकल के ऊपर धावा बोला है, कप्तान ने शिकार किया है, अपनी टीम के प्रतिद्वंद्वी को मैच से बाहर किया है। और अब तो चाहे फिर कोई भी हो, इनके लिए सारे प्लेयर एक समान है, सबको एक नजर से देखा जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं। चाहे आप अविनाश को रेडिंग में लेकर आइए, बाकी के प्लेयर्स को रेडिंग में लेकर आइए, अगर प्रहार किया जाएगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा काकीनाडा क्रैकन्स के प्लेयर्स को। विजयनगरम ये वो टीम है जो पिछला मुकाबला जीत कर पहुंची है और 10 पॉइंट इस मुकाबले को जीता था। एक बार फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन, चलिए इस बार खाता खुलेगा और खाता खुलेगा कुछ इस प्रकार से कि पहला सुपर टैकल करेगी काकीनाडा क्रैकन्स। देर आए दुरुस्त आए। अब तक आपको डिफेंस में एक भी पॉइंट नहीं निकाला था और अब एक बड़ा अवसर था सुपर टैकल के तौर पे 2 पॉइंट निकालने का। वामसी जो कि रेड लगाने के लिए गए थे, उनके ऊपर सबसे पहले डबल थाई होल्ड हुआ, वहीं उन्होंने एक प्रकार का गिव अप कर दिया। फिर साथ ही कॉर्नर के खिलाड़ी ने जब पुश किया, यह सुनिश्चित हुआ कि सुपर टैकल के तौर पे ना सिर्फ 2 पॉइंट मिले बल्कि एक महत्वपूर्ण रिवाइवल भी मिले। क्या काकीनाडा क्रैकन्स की टीम अपने ऊपर तीसरा ऑल आउट इन्फ्लिक्ट नहीं होने देगी? क्या बचा लेगी? सुपर 10 लगाने वाले अविनाश फिलहाल रेड पे है, सामने 6 का घर यानी बोनस इनके लिए एक्टिवेट है। चेन पूरी 3 नजर आ रही थी, अब एक क्षण के लिए ऐसा हुआ कि लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन ने चेन को तोड़ा है। लेफ्ट इन क्या सरप्राइज टैकल देंगे? नहीं, लालच बुरी बरा है। अविनाश ने कोई लालच किया नहीं, अपना एक जो बोनस इंश्योर किया था उसके बाद निकल लिया अपने खेमे में। तो थोड़ा सा अविनाश को समझना भी चाहिए, आप बहुत लंबे समय के बाद मैच पर आए, तो जरूरी नहीं है कि आप पहला रेड करने के लिए जाएं और वहां से टच पॉइंट ही निकालें। पहले आपको अपने घर वापस आना है, थोड़ा समय बिताना है। एक बार फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन, कल भी किया था, आज भी किया था काकीनाडा क्रैकन्स। रिमेंबर द नेम, बैक टू सुपर टैकल्स। Kakinada Kraken. Super tackle, I think the only name which we remembered is Avinash because this tackle point will definitely go to Avinash. उन्हीं का इनिशिएशन था। आप दोबारा देखिएगा
कॉर्नर के साथ में इन चेन बनाकर अविनाश खड़े थे। चेन को यहाँ तोड़ा गया, ये एंकल के ऊपर अविनाश ने दावा बोला और फिर बाकी का डिफेंस उन पे टूटा। यानी कि अविनाश समझ चुके हैं, चाहे रेडिंग हो चाहे डिफेंस हो, इन्हीं के बलबूते पे, इन्हीं के कंधे पे पूरी टीम इस मैच में चलेगी। और इस बार चलते रेडर पर शिकार किया था। आसान नहीं रहता है कि आप चलते रेडर के एंकल पे जाएंगे और वहां से टैकल पॉइंट देखेंगे, लेकिन देखा है और किया है। जॉन को बाहर किया है और शिवा प्रसाद को अंदर लेकर आए। थोड़ा सा बदलाव जरूर किया है वहां पर काकीनाडा क्रेकेंस ने, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जरूर होगी टीम। बाकी के 12 मिनट में आप जो पिछड़ रहे हैं 10 पॉइंट से, इसको कवर कर सकते हैं। और आयुष, जैसा कि आप कबड्डी के बहुत बड़े एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, क्या लगता है 12 मिनट में ये 10 पॉइंट की लीड का सुपड़ा साफ हो सकता है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताइए कि आज तक मुझे ये क्यों नहीं पता था कि मैं कबड्डी का एक्सपर्ट माना जाता हूँ। मैं तो अभी कबड्डी के खेल में एलकेजी क्लास में एडमिशन लेने वाला था। नर्सरी भी क्योंकि थोड़ी बहुत जान पहचान थी, मैं क्लियर कर गया था। मोनू, यहाँ पे डबल एंकल होल्ड है, और कम से कम मैं ये जरूर बता सकता हूँ, मुझे लगता है देख के कोई भी बता सकेगा कि अब डिफेंस काम करना शुरू कर चुका है। पहले 2 लगातार आपने सुपर टैकल लगाए, उसके बाद राजशेखर को बनाया शिकार। कहते हैं कि इंटरवल के बाद मूवी में थोड़ा सा क्लाइमैक्स आता है, और जैसे ही बाकी के वो 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं, यहाँ से क्लाइमैक्स आना शुरू हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट बचे हुए थे जब से इन्होंने सुपर टैकल करना शुरू किया था। 2 सुपर टैकल के, उसके बाद एक नॉर्मल टैकल भी किया है, यानी कि हमने थोड़ी ही देर में 3 टैकल पॉइंट देख लिए हैं। पूरा बाज क्या बेटे, न्यू ही मार दे। हाँ, न्यू ही मार दे उसका पूरा बाज क्या, उसका सही लग गई, पूरा फुल फुल क्या हुआ है। सुन ले, अभी मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? अभी बेटे मौका, अभी टाइट हो जाओ, ठीक है? चल बेटे, ओए रेडर तू चल बेटे, टाइट हो गए, ठीक है? एक बार सपलिंग करके मार दे बेटे, ठीक है? चल सुनो, टाइट हो जा बेटे। जय बात। मोनू, ऐसा लाग रहा है जैसे 2 स्टेट मूवी बन रही है भैया। हमारे हरियाणा के कोच अपनी हरियाणवी भाषा में, और दूसरी तरफ जो साउथ इंडियन ये खिलाड़ी हैं युवा आंध्रा चैंपियनशिप के, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोच ने एग्जैक्टली कहा क्या है। लेकिन चीज बहुत सिंपल है, ये बात, कॉन्फिडेंस बहुत था कोच को और बड़े खुश है वो अपनी टीम के इस प्रदर्शन से। कुछ समय पहले जो स्कोर लाइन थी वो 28-13 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी आपको 28-19 नजर आ रही है। 1 पॉइंट भी विजयनगरम निंजास को नहीं दिया है, और वहीं बैक टू बैक 6 पॉइंट के आसपास काकीनाडा क्रैकेंस ने कमा लिए। कछुआ खरगोश की कहानी हमने अक्सर सुनी है। खरगोश बड़ी तेज गति के साथ जाता है, आगे पहुंच जाता है और सोचता है कि थोड़ी देर में एक नींद ले लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी धीमी गति के साथ जाता है और मंजिल पर पहुंच जाता है। क्या काकीनाडा क्रैकेंस उस कछुए की चाल को लगातार करती रहेगी और विजया नगरम निंजा से एक नींद लेने की फिराक में? क्योंकि आपने जैसा बताया कि 28 पर खड़ी थी, 28 पर ही खड़ी और 28 पर ही खड़ी रहेगी और 20 पर पहुंच जाएगी इस बार काकीनाडा क्रैकेंस। जब से इन्होंने सुपर टैकल किया उसके बाद एक अलग प्रकार का टोन सेट कर लिया है। थाई होल्ड हो, एंकल होल्ड हो, ब्लॉक किया जाए, वो सारे पैतरे इन्होंने दिखा दिए अपने इस मुकाबले में। क्या बात है, क्या कमाल का डिफेंस है। सोलो टैकल पे सोलो टैकल दे रहे हैं, डबल थाइस के ऊपर। जो खिलाड़ी राइट कॉर्नर पे था उनका इनिशिएशन आया, लेफ्ट कॉर्नर ने सपोर्ट दिखाते हुए कवर्स के साथ मिलकर बैक होल्ड दिखाया और बड़ी आसानी से पॉइंट कमा लिए। चलिए 20-28, 8 का फासला, सुपर टैकल की सिचुएशन। युवा प्रसाद कितने पॉइंट लेके जाएंगे? रेटेड सेफ है, ये तो आवाज आ चुकी है, 1 या 2। चलिए 1 आया है, बहुत आया है। ऑल आउट पे ऑल आउट तो दिया था आपने काकीनाडा क्रैकेंस को, लेकिन इस समय विजया नगरम ऑलमोस्ट ऑल आउट की दहलीज पर पहुंच गई है। सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं। आयुष, कहानी में जो हम ट्विस्ट की बात कर रहे थे वो यही तो है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग इज डन अंटिल इट्स डन। जब तक कोई चीज अपने आखिरी पायदान पे ना हो आप कुछ नहीं कह सकते। क्या फैंटाबुलस एफर्ट थे, लॉबी का इस्तेमाल किया था, हवा में थे लेकिन उसके बाद भी मिड लाइन को पार किया। वेंकट कुमार रिव्यू के लिए जा रहे हैं। टीवी एम्पायर, विजयनगरम निंजास चैलेंज, राइडर आउट ऑफ वन, आवर डिसीजन, राइडर सेफ, प्लीज रिव्यू। सीधे सीधे बात की है कि रेडर आउट है, उसको पूरी तरह से डैश आउट कर दिया गया है। सर प्लीज, अगर ऐसा है, डैश आउट किया गया है, तो आयुष सुपर टैकल की सिचुएशन है, एक रिवाइवल तो मिलेगा, साथ में 2 पॉइंट भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रिव्यू गवाया है तो फिर आपके लिए मुश्किल परिस्थितियां बढ़ जाएंगी। रिव्यू तो गवाएंगे लेकिन साथ में आप धीरे धीरे ऑल आउट की दहलीज पर भी पहुंच जाएंगे। और उस 2 पॉइंट की आवश्यकता है विजयनगरम की टीम को, क्योंकि पिछले 5 मिनट में हम देखें तो ओवरऑल 7 पॉइंट का आदान प्रदान हुआ है, या मैं कहूंगा सिर्फ एक ही तरफ आए हैं।
क्योंकि काकीनाडा की टीम ने ही वो 7 पॉइंट कमाए हैं। दोबारा देखते हैं, सुपर टैकल की परिस्थिति थी, दाएं से बाएं चहलकर्मी की, उसके बाद कप्तान को शिकार करने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ से यहाँ डैश आया, क्लोज है, इस एंगल से ये पहचानना मुश्किल, शायद बर्ड्स आई व्यू थोड़ी ज्यादा मदद करे। बॉडी उनकी हवा में थी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन क्या बॉडी का हिस्सा कितना बाहर था या कोई बॉडी का हिस्सा टच था, शायद एक पैर या कोई हाथ लॉबी के अंदर, वो सारी चीजें जरूर देखी जाएंगी। अच्छा रिव्यू किया है, बचा के रखा था और ये काम भी आया है। चलिए, जो नहीं होना चाहिए था काकीनाडा कैकन्स के नजरिए से वही हो गया है, सुपर टैकल कर लिया गया है। ये डैश आउट के सारे सुपर टैकल किया है, ये 2 पॉइंट ही नहीं कमाए आपने, ऑल आउट को बचाकर अपने आप को बहुत लंबे समय के लिए और एक अच्छे पायदान पर शिफ्ट भी कर लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पे शिवा बाहर हुए हैं, अपनी पूरी शक्ति दिखाने की कोशिश की थी, हवा में एक अच्छी सी डाइव लगाई थी, और देखिए दूसरे छोर पे ये चेक किया जा रहा है फैन कोड के माध्यम से। रेड कोई नहीं, सप्लिंग करता होगा, इधर हेल्पर टाइट हो जाना बेटे, ठीक है, जो टाइम है बेटे देख लो, ठीक है, 9 मिनट है, कुछ कर सकते हो तो ठीक है, कर दो बेटे। रेडर चल बेटे, तो खुल के चल बेटे, शाबाश। 2 जनों को, एक तो टिमोथी को कहा है कि आपको इस पोजीशन को, जिस पोजीशन पे आप राइट कॉर्नर और राइट इन में खड़े हैं, उसका ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ कहा गया है कि रेडर को भी चलना पड़ेगा। हमारे चीफ गेस्ट को अभी आपने देखा जो इस मुकाबले का सीधा प्रसारण का लुत्फ उठा रहे थे, और साथ ही साथ फैन कोड के माध्यम से भी देख रहे थे कि एग्जैक्टली इस मुकाबले की गति और हमारी ब्रॉडकास्ट टीम किस प्रकार का काम कर रही है। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश डायरेक्टर पेरम रविंद्रनाथ हमारे साथ आज मौजूद, और बातों ही बातों में एक और शिकार वामसी बाहर। वो बदकिस्मती रही थी काकीनाडा कैकन्स की, पिछली रेड में सुपर टैकल का शिकार हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड ही किया है, एक और टैकल पॉइंट निकाला है, यानी कि वो वापसी का डंका पूरी तरह से बचा चुका है। एक बार फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन है विजयनगरम निजास के लिए। पिछली बार तो गलती हुई थी रेडर से, लेकिन इस बार अविनाश क्या नाश कर पाएंगे किसी भी डिफेंडर का? लग तो ऐसा रहा है कि शायद अटैक करने का प्रयास था। 1 पॉइंट रिवाइवल मिलेगा, लेकिन रिवाइवल से कहीं ज्यादा जरूरी है आपके लिए सामने वाली टीम के घर पर वार करना, योद्धाओं को वापस भेजना। ऑल आउट बचा रही है विजयनगरम, कितनी देर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोच साहब ने कहा था 9 मिनट हैं और ज्यादा स्कोर डिफरेंस नहीं है। क्या पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं आप विजयनगरम निंजास पे? पहला सवाल तो यही है। वेंकट कुमार जो टीम के कप्तान है, जिन्होंने आज डिफेंस के अंदर जबरदस्त कार्य किया है, ओवर वेंकट कुमार की तरफ देखा जाए तो उन्होंने अपना हाई फाई संभवतः कंप्लीट कर लिया। कुल के 5 पॉइंट उन्होंने निकाले थे, जिसमें एक रेड का आया है और 4 पॉइंट जो है वो उनके डिफेंस में आया। तो चलिए, औपचारिक कॉन्फर्मेशन ये है कि 1 पॉइंट यदि अपने डिफेंस में निकालेंगे तो वेंकट का इस मैच का हाई फाई कंप्लीट होगा, और इससे बढ़िया अवसर मोनू मुझे नहीं लग सकता है कि होगा। और इस बार अविनाश ने एक बार फिर से नाश कर दिया एक और प्लेयर का। चलिए, जो आप ऑल आउट इन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया है 100%। मैं कहना चाहूंगा कि अब यहां से शायद वापसी नहीं कर सकती है। विजयनगरम ने पहला हाफ बहुत जबरदस्त अंदाज में खेला था, यहां पर किक लगाई, दूसरा जो डिफेंडर था वो देखता रह गया, आई कांटेक्ट एक दूसरे के पास ही रह गए, और इतनी देर में सामने वाली टीम ने, अविनाश ने वो कार्य कर दिया है। अब लीजिए, थोड़ी सी एक्टिव नजर आ रही है, झुंड में शिकार करने की तरफ भी देख रही होगी कि आप बोनस भी नहीं देना चाहते कि ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से देना चाहिए, पीछे चला जाना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश है नहीं विकंठा कुमार के लिए। बोनस दे दिया है, ओह बोनस के बाद ये बहुत कुछ दे दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है काकीनाडा क्रैकन्स ने, और इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि आप सावधान रहिए, लालच बुरी बला है। बोनस +2 टच पॉइंट इस मुकाबले की पहली सुपर रेड भी आ गई है आयुष इस क्रूशियल मूवमेंट पर। जबरदस्त रेड थी, हौसला दिखाया, लगातार अपने आप के ऊपर विश्वास दिखाते हुए अपने आप को बैक किया। कहां तो अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने की बात थी, 2 रिवाइवल और साथ ही साथ एक बोनस का पॉइंट टीम के कप्तान ने निकाला है। पहले जो फ्रंटल ब्लॉक कवर्स के खिलाड़ी कर रहे थे उन्हें धक्का दिया, और जो लोअर बॉडी को रोकने की कोशिश थी उससे भी नाकामयाब किया। कबड्डी कमाल मोमेंट अभी हमें नजर आया है अपनी टीम के लिए। टीम के कप्तान
वेंकट कुमार ने एक ऑल आउट बचाया है। जो राइट रहा होगा ना, राइट वाला वो पूरा भर के मारा आग उसका तू हो रही है हेल्पर ना टाइट रखी वो कैच बनाएगी, उसको कोई दिक्कत ना। और दो हम तोड़ के लिया वो ठीक है। और नागार्जुन भी आओगे बुरा आओगे उन्हें तोड़ दिए। मैच की सिचुएशन को पूरी तरह से अपने पक्ष में रखा था काकीनाडा क्रैकन्स ने, और अब क्रैक करना उन्होंने शुरू भी कर दिया था। वो एक लाइन मुझे याद आई थी कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई, ऐसे करके कुछ दो लाइनें मैंने सुनी थी। चलिए चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बड़ी रेड को देख लेते हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन थी, 2 पॉइंट मिलते हैं टैकल करने पर, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि 2 डिफेंडर्स को बाहर जाना पड़ेगा। जो आपने 2 पॉइंट दिए थे थोड़ी देर पहले, 3 पॉइंट दिए थे, माफ कीजिए 3 पॉइंट दिए थे, उसमें से आपने 2 पॉइंट निकाले और फिर से वही सिचुएशन आ गई है। यहां पर अटैक किया था सिंगल थाई पर, दूसरा डिफेंडर भी उनके संपर्क में आया, लेकिन दोनों को भेदते हुए रेडर अपने घर आया है और फिर से सिर्फ एक ही रेडर बचा हुआ है। आयुष, क्या यहाँ पर फिर से गलती दोहराने की तरफ देख रही है काकीनाडा क्रैकन्स? क्यों इतने एग्रेशन हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। जाने दीजिए, बोनस खोल के रखिए, वापस जाने दीजिए, अगली रेड में आप ऑल आउट दे सकते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेंगे कब। इनकी टीम को लगा कि डिफेंस का यही पॉइंट निकाला जा सकता है, ऑल आउट किया जा सकता है, और कर लिया। पहली बार इस मुकाबले में हमने देखा है कि काकीनाडा क्रैकन्स की टीम ने आखिरकार विजयनगरम की टीम को ऑल आउट किया है। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे मोनू, वो कुछ ऐसे हैं, जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये मैं पिछली रेड पर बोलना चाह रहा था कि आपने बढ़त ली है, आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप संयम दिखाइए, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। पहले आप बोनस भी दे रहे हैं, उसके बाद आप अटैक करने भी जा रहे हैं। जहां पर आप टैकल करने चाहिए थे या फिर बोनस लेकर रेडर को वापस दे देना चाहिए था, वहां पर आपने 2 टच पॉइंट भी दे दिए। तो संयम होना चाहिए आपके पास, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। कबड्डी यही कहता है, कबड्डी नहीं, हर स्पोर्ट्स यही कहता है। आपका जो रियल लाइफ है वो भी यही कहता है कि आपको मौका देखना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है। अविनाश के नाम इस मुकाबले में अब 2 डिफेंस के पॉइंट आ चुके हैं। साई कुमार को सब्स्टिट्यूट करते हुए वेंकट गोपी, और ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट ये वक्त बताएगा। लेकिन वेंकट गोपी आए, वेंकट गोपी गए। जो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होके अभी आपके डिफेंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए आया था, उसी को शिकार बनाया है। इसे कहते हैं चढ़ के खेलना। और आधे अधूरे मन के साथ शायद गले लगना चाहते थे रेडर के, क्योंकि चलते हुए आप हाथों से तो टैकल नहीं कर सकते किसी के, आप पास जाएं और पकड़े के शायद इसे मैं धकेल दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रेडर चौकन्ना रहता है, उसकी नजर अपने घर की तरफ वापस रहती है। चलिए बोनस का ट्राई किया है, और बोनस ट्राई करते उन्हें लग रहा है कि अब 4 मिनट बचे हुए हैं, 1 पॉइंट मिल जाता है तो हमारी टीम पहुंच जाएगी 34 पॉइंट पर। 5 पॉइंट से अभी भी आगे रहेगी, लेकिन 4 मिनट में 5 पॉइंट की लीड विजयनगरम निंजास के लिए कंफर्टेबल तो नहीं हो सकती। वो कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि पहले हाफ के 20 मिनट बिगाड़ दिए थे काकीनाडा क्रैकन्स ने, और दूसरे हाफ के तकरीबन 5 मिनट बिगाड़ दिए थे। उसके बाद जो वापसी का डंका बजाया है वो लाजवाब बजाया है। तो यहाँ पर बचाना पड़ेगा अपना मैच, अपने पॉइंट्स। काकीनाडा क्रैकन जिस पॉइंट डिफरेंस की आप बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा सूक्ष्म हुआ है, बिल्कुल तारीफ बनती है। सिर्फ 4 पॉइंट्स का फासला भी है, और एक वक्त था जब काकीनाडा क्रैकन्स और विजयनगरम निंजास के बीच में कुल मिला के 15 पॉइंट का फासला था, और ये फासला अब 4 से बढ़ के 5 पे पहुंच जाएगा। किसी भी प्रकार के क्षण पे कभी नहीं लगा कि टिमोथी से ऐसी गलती होनी चाहिए। कॉर्नर की पोजीशन को संभाल रहे थे, अपनी चेन को तोड़ते हुए एंकल पे डाइव मारी। अंडर को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया, साथ किसी का मिला नहीं, इजीली वो 1 पॉइंट मिलाए। और ऐसे ही अगर 4-5 पॉइंट की वो लीड चलती रही तो फिर मुश्किल हो जाएगी काकीनाडा क्रैकन्स के लिए। कैप्टन प्लीज कम। बोनस की मांग शायद वहां पर की जा रही होगी। बोनस प्लस 1 प्लीज।
TV umpire, Vijayanagaram Ninjas challenge, bonus plus 1 point. Our decision, only 1 point. Please review. सवाल बोनस का है। बोनस प्लस 1 टच पॉइंट, 1 टच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सभी ने देखा है। अब तक जितने भी रिव्यू लिए हैं, यदि मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है मोनू, तो 2 बार रिव्यू लिया है विजयनगरम निंजास की टीम ने इस मुकाबले में, और दोनों बार सक्सेसफुल रहा था। ये पहली बार हुआ है जब अनसक्सेसफुल गया। कैप्टन, योर रिव्यू ओवर, नो मोर रिव्यू। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहले रिव्यू लिए गए वो फैसला आपके पक्ष में आया था, लेकिन इस बार विपक्ष में गया फैसला। आप बोनस की मांग कर रहे हैं, टच पॉइंट तो आप आए, लेकिन यहाँ पर तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। लाइन भी पूरी तरह से वो कट नहीं की है। बस आपकी मांग थी कि शायद अगर ऐसे में 1 पॉइंट पर मिल जाता है तो क्यों ना फिर थोड़ा सा आगे और चले जाएं, बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और वो रिव्यू आपके पास बचा हुआ था, घर लेकर जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। बोनस तो यहाँ पर भी खोल के रखा है महेश के लिए। अगर बोनस है तो फिर बोनस लेकर वापस जाइए। जी आयुष, लॉजिक उस रिव्यू का इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि रेडर जो थे वो फेस कर रहे थे अपने मिड लाइन की तरफ, तो पीछे उन्होंने बोनस लाइन को पार किया या नहीं ये उन्हें दिखा नहीं था। और उसके बाद भी आप ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड किसी भी रिव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खेल का एक मोमेंटम चल रहा होता है, और अगर उस मोमेंटम में किसी भी प्रकार का कोई भी खलन आए तो संभवतः परिस्थितियां जो आपके अनुकूल हो वो कब प्रतिकूल चली जाए इसका आप कुछ नहीं कर सकते। 4 का फासला, बोनस लिया, वो निकले। समर सिम्हा रेड्डी जो कि पिछले मैच के सबसे बड़े प्लेयर थे, सुपर 10 लगाया था, टोटल 12 पॉइंट निकाले थे। आज मुकाबले में शुरुआती लम्हों में इंजर्ड हो गए थे, वापस चले गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर अविनाश के साथ समर सिम्हा रेड्डी अगर मैच पर होते तो फिर टीम जो 5-6 पॉइंट से पिछड़ रही है शायद 5-6 पॉइंट से आगे भी हो सकती थी, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिसने मैच के परिणाम को तो नहीं पलटा था लेकिन कोशिश पूरी की थी, क्लोज लेकर गए थे अपने पहले मुकाबले को भी। बिल्कुल सही। यदि ये दुक्की होती, ये 2 खिलाड़ी मैच पे होते तो संभवतः सूरत हाल कुछ और होता, लेकिन अब जो वक्त हमें बता रहा है वो ये कि लगभग 1.25 मिनट का खेल बचा है। विजयनगरम निंजास के पास इस मुकाबले में ओवरऑल अभी भी 5 अंकों की लीड है, और इस लीड को ना सिर्फ बचाए रखना है बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से जीत तक जाए। मनोहर फिलहाल बाहर गए, बोनस के साथ वहां टच पॉइंट लिया है, यानी कि जहां पर कुछ मिनट्स ही बचे हुए हैं, 2 या 3 मिनट जब बचते हैं ऐसे सिचुएशन में अगर आप बोनस के साथ टच पॉइंट भी लेकर आ रहे हैं, 6 पॉइंट की लीड आप लेकर चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि आप वो जीत के दहलीज पर पहुंच गए। विजयनगरम पहला मुकाबला जीत कर गई है और दूसरा जो जीत है तकरीबन उन्होंने अपनी जेब में रख लिया है। हालांकि अभी इस चीज की घोषणा नहीं हुई है, सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन अगर वो मैच को कुछ इसी प्रकार से चलाते रहे, ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने ड्रॉप नहीं किए, तो फिर धीरे धीरे वो मैच को अपने पक्ष में कर लेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है। अब जो रेड है आयुष, ये लंबी होनी चाहिए विजयनगरम निंजास के लिए, चाहे पॉइंट आए या ना आए, लेकिन 28 सेकंड जरूर जाने चाहिए टाइमर से। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण से एक चीज पूछी जाती है कि एक ऐसा वाक्य बताइए जो हंसते हुए को रुला दे और रोते हुए को हंसा दे। है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता है, और वक्त बदलता कैसे है ये हमें आज गोपी के प्रदर्शन से पता चलेगा। कल के मुकाबले में वेंकट गोपी जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट किया था, आज वो खाता नहीं खोल पाए हैं, एक भी पॉइंट उनके नाम नहीं है, और इसीलिए 2 बार उन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन उसी बीच यहां जब रेड लगाई गई तो टिमोथी जिन्होंने पिछली 2 डिफेंस में डिफेंसिव एरर किए हैं, यहां बैकट्रेल होते होते थोड़ी देरी कर दी जनाब। बिल्कुल सही कहा आपने, समय बड़ा बलवान है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, एक सिंगल प्लेयर गोपी के लिए, लेकिन टीम का समय कल भी अच्छा था विजयनगरम का, टीम का समय आज भी अच्छा है। यहाँ पर रेड करने के लिए गए थे अविनाश, जो कि पहले यहाँ पे सुपर 10 लगा चुके हैं। एडवांस टैकल इनके ऊपर किया गया है, और ये सोच कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें पता है अविनाश एक अच्छा प्लेयर है, ऐसा ना हो कि 3 से 4 टच पॉइंट ले जाए, इससे अच्छा है कि उन्हें 1 पॉइंट के साथ सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाए। समर सिम्हा रेड्डी जिनकी कोशिश थी, जिनका प्रयत्न था कि वो जैसे तैसे करके मुकाबले में अपनी टीम को ज्वाइन कर सके, तो दूसरी तरफ दूसरा छोर
जहां विजयनगरम निंजास की टीम बस अब औपचारिक तौर पे इंतजार कर रही है कि जो आखिरी का मिनट बचा है इस मुकाबले में वो समाप्त हो और उनकी टीम लगातार इस संस्करण में अपनी दूसरी जीत हासिल करे। और यदि ऐसा हुआ तो संभावना है बहुत ज्यादा कि आप अपने पूल में पहले पायदान पे पहुंच जाएंगे। राजशेखर रेड्डी संभवतः इस मुकाबले की सेकंड लास्ट रेड के साथ। विजयनगरम ने कल अपना पहला मुकाबला भीमावरम गार्डियंस के विरुद्ध खेला था। 38 पॉइंट निकाले थे भीमावरम गार्डियंस ने, लेकिन काकीनाडा क्रैकन सिर्फ अभी 34 पॉइंट ही निकाल पाई है। और अपने उस पहले मुकाबले में विजयनगरम ने 48 पॉइंट निकाले थे। 10 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता था। और वही हम दूसरी टीम की बात करें काकीनाडा क्रैकन्स की, तो इन्होंने 32 पॉइंट निकाले थे। कुर्नूल नाइट्स ने 36 पॉइंट निकाले थे। 4 पॉइंट से पीछे रह गई थी काकीनाडा क्रैकन्स, और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि वो 4 से 5 पॉइंट फिर से पीछे ही रहने वाली है इस मुकाबले में, क्योंकि अब आखिरी मिनट जब आप प्रवेश कर जाते हैं वहां से मैच के परिणाम को अमूमन तो नहीं पलटा जाता है। लीजिए वो पलटने के लिए मौके भी नहीं दे रहे हैं आयुष। 1 point, Kakinada Kraken, jersey number 17 out. मुझे ऐसा लगता है कि बासु ने जो गेम खेला, साइकोलॉजिकल गेम खेला, वो सिर्फ इसलिए था कि 20 पॉइंट पूरे ना कर पाए अविनाश, क्योंकि पिछली रेड पे जब अविनाश आए थे तो 18 पॉइंट थे। 1 पॉइंट का मतलब 19 पॉइंट आपने निकाले हैं। और नागा बाबू जो रेड लगाने के लिए आएंगे वो पूरी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए 8 सेकंड वो मैट के ऊपर रहें, चाहे पकड़े जाएं या ना जाएं। बॉक लाइन वैसे भी पार हो चुकी है, डू और डाई की परिस्थिति है नहीं। रेड लगाते हुए 10 पॉइंट आपके नाम है। चेका नागा बाबू बैक टू बैक आपने सुपर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। 90.9 का स्ट्राइक रेट, खेमे में आए, पॉइंट भी लाए, टीम के लिए जीत का लम्हा भी दिला दिया। ये बड़ा मुकाबला था और इस बड़े मुकाबले में बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है कई प्लेयर्स ने। चलिए वो फाइनल विसल भी बज गया है। विजयनगरम वो पहली टीम बन गई है जिसने 2 मुकाबले खेले और 2 की 2 जीत दर्ज की है युवा आंध्रा चैंपियनशिप में। ये वो टीम है जो बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत आगे तक भी जाएगी। इनके नाम में है विजयनगरम, नगर है इनका, ये गढ़ है। ये कबड्डी का मैट पर अपना नगर बसाने के लिए आई है। युवा आंध्रा चैंपियनशिप 2025 में विजयनगरम की टीम एक ऐसी टीम जिसने 2 लगातार मुकाबले जीत लिए और काकीनंदा ने बैक टू बैक 2 मुकाबले गंवा दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले मुकाबलों में काकीनाडा की टीम पे दबाव रहेगा। विजयनगरम की टीम जो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल संभव से अपने पूल में चली जाएगी, उनकी कोशिश ये होगी कि इस मोमेंटम को टूटने ना दे, इस फ्लो को टूटने ना दे। हर एक टीम चाहती है कि वो जीत के साथ आगे बढ़ती चले, क्योंकि जैसे जैसे आप मुकाबले गंवाएंगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बढ़ती चली जाएगी। आप मुकाबले जीतते हैं, आप कंफर्टेबल तरीके से पॉइंट टेबल पर टॉप करते हैं और आने वाले मैचेस के लिए आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है। वो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला था विजयनगरम को जब उन्होंने मुकाबले की शुरुआत की थी, तो पहले हाफ पूरी तरह से अपने पक्ष में रखा था। हालांकि दूसरे हाफ के कुछ मिनट्स इधर से उधर जरूर हुए थे, लेकिन मैच को इधर से उधर नहीं होने दिया है। मैच नंबर 7 जो कि फाइनल स्कोर सभी के सामने आ चुका है। 35 पॉइंट काकीनाडा क्रैकन्स ने निकाले, जिसमें 25 रेड पॉइंट, 8 टैकल पॉइंट आए दूसरे हाफ में। पहले हाफ में 0 था। 2 ऑल आउट के पॉइंट भी फाइनली उन्हें मिल चुके हैं। 2 सुपर टैकल आज भी किए, कल भी किए थे। यहाँ पर तो कहानी और इतिहास दोनों को दोहरा दिया है। तो वहीं पर विजयनगरम निंजास ने 41 पॉइंट निकाले, जिसमें 36 बार रेड की थी और 23 बार सफलता मिली है। 24 में से 9 बार सफलता सक्सेसफुल टैकल्स, यानी कि हम इस समय देख पा रहे हैं। डू और डाई बड़ा ही बेहतर रहा है, 2 में से 2 बार, बोनस पॉइंट 4। तो वहीं अगर बात करेंगे आप आयुष सक्सेसफुल रेड की, तो 35 में से 20 बार सफलता मिली है काकीनाडा क्रैकन्स को। सक्सेसफुल टैकल्स 29 में से 6, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जरूर है, क्योंकि पहले हाफ में आपने बहुत अटैक किए, सफलता आपको नहीं मिली है। और बेस्ट लीडर की बात करेंगे तो अविनाश, जिन्होंने 19 पॉइंट निकाले, अंडर 20 से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गए। तो एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड अपने नाम किया है, 5 टैकल पॉइंट लगाकर हाई 5 कंप्लीट तो किया है। लेकिन राम बाबू ने बता दिया कि कैसे बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी जाती है हर एक मुकाबले में। लेकिन तारीफ सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी की बनती है वो अविनाश है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस मुकाबले में शुरुआती 10 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले थे। सिंगमपली अविनाश, कुल मिला के 22 जो पॉइंट है वो इनके नाम रहे। एक अच्छे ऑलराउंडर, 3 पॉइंट का योगदान अपनी टीम के डिफेंस में दिखाया था। 19 पॉइंट इन्होंने रेड करते हुए निकाले थे। फिर वारी महेश आए, जिन्होंने 5 पॉइंट कमाए अपने डिफेंस में, हाई 5 कंप्लीट किया था। सुपर टैकल्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी तरफ नेतृत्व को यदि देखें तो 3 पॉइंट का योगदान उनकी तरफ से, कारा तिमोती की तरफ से सिर्फ 2 पॉइंट का योगदान था और काला
सूरी ने जो 1 पॉइंट निकाला, लेकिन आखिरकार क्योंकि टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का परफॉर्मेंस हाई था, उसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं मिला, दिक्कतें बढ़ी। तो वहीं पर विजयनगरम निंजास ने बहुत अच्छा किया, यानी कि तकरीबन हर एक प्लेयर ने अच्छा खासा साथ दिया है। 11 पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं चेका, तो वहीं पर 10 पॉइंट आपको नज़र आएंगे राज जेका, और वहीं पर वेंकटा जिनकी हम चर्चा कर रहे थे 8 पॉइंट निकाले बतौर ऑलराउंडर। तो डिफेंडर्स की अगर चर्चा करेंगे तो फिर मीसला 5 पॉइंट उन्होंने निकाले और कोहली गाला 3 पॉइंट इनके नाम भी नज़र आ रहे हैं बतौर ऑलराउंडर, यानी कि साथ मिल रहा है हर एक प्लेयर से, और वही साथ मिला है दूसरी जीत में। बेस्ट रेडर ऑफ द मैच नंबर 7 की हम चर्चा कर रहे हैं, वन एंड ओनली अविनाश, जिन्होंने 19 रेड पॉइंट अपने नाम के 112 का स्ट्राइक रेट हमें इनका नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। 17 बार रेड करने के लिए गए, 19 रेड पॉइंट निकाले। लाजवाब परफॉर्मेंस इनका हमें देखने को मिला इस दूसरे मुकाबले में। टीम जरूर हारी है, लेकिन आप हार कर भी जीत जाते हैं। कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, चाहे वो अंदर गए हो सुपर टैकल की परिस्थिति में, जो नंबर ऑफ डिफेंडर्स बहुत कम हो, तब भी डीप जाके शिकार करने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है। कुल मिला के इन्होंने 17 रेड लगाई है, जिसमें 19 पॉइंट कमाए हैं, 12 पॉइंट टच से लेकर आए। डाइविंग स्किल्स देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस खिलाड़ी की, साथ ही साथ पैनी निगाहें हैं, अपने हेड को बहुत स्थिर रखते हैं, अपने शिकार का चुनाव करते हैं, और जहां इन्होंने फैसला ले लिया कि इस खिलाड़ी को टच मारना है, टच पॉइंट लेकर आते हैं। कद काठी बहुत बड़ी नहीं है, हाइट कम फाइट ज्यादा, और किसी भी खिलाड़ी के जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि आपका कद काठी कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका औहदा कैसा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और औहदा तो आज हमारे चीफ गेस्ट का बहुत ज्यादा है, और वो बढ़ भी जाएगा क्योंकि इन युवा खिलाड़ियों का सपोर्ट करने वो जो आए हैं। बिल्कुल। तो वहीं पर राम बाबू जो कि बेस्ट डिफेंडर इस मुकाबले के, 5 टैकल पॉइंट हाई 5 लगाकर इन्होंने अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया है। 80% सक्सेस रेट इनका नज़र आया है, यानी कि इन्होंने भी अच्छे रेडर्स को चकनाचूर किया था। जब ये प्रयास करने गए, सफलता इन्हें मिली। अविनाश को एक बार शिकार बनाया, महेश को एक बार, मनोहर को एक बार, और ऐसे ही अन्य 2 डिफेंडरों को इन्होंने अपने टच में लिया था। यहाँ पर एडवांस टैकल की चाहे हम चर्चा करें, बैक होल्ड हो, चाहे फ्रंट से ब्लॉक करने की बात हो, मतलब जहाँ पर हाथ डाला है सोना निकाला है, और सामने वाली टीम की नींद छीनी है इन्होंने, सोने नहीं दिया है, और बन गए मुकाबले के बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच। और जिन अतिथिगढ़ की आप चर्चा कर रहे थे, जिससे खूबसूरती बढ़ी है इस मैच की, इस एडिशन की, हम तालिकाओं पे एक बार निगाह डाल रहे हैं। विजयनगरम निंजास की टीम 2 मुकाबलों में 2 जीत और 1 पॉइंट डिफरेंस जो है वो आपको 16 का नजर आएगा। 11 पॉइंट कुल मिला के कमा के पहले पायदान पे है, लेकिन दिक्कतें भीमरम गार्डियंस के लिए है। 1 मुकाबला खेला, 1 गंवाया। काकीनंद क्रैकेंस की टीम 2 मैचेस में 2 हार, -10 का स्कोर डिफरेंस। जो 2 पॉइंट आपके लिए आए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपने करीबी मुकाबले खेले, तो जब आप 7 के कम के मार्जिन में हारते हैं तो फिर आपको 1 पॉइंट हर एक मुकाबले में मिलता है। भीमरम गार्डियंस का तो हमने आपको बता दिया है कि 1 मैच कल खेले थे, विजयनगरम निंजास से ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कर्नूल नाइट्स की टीम जो 1 मुकाबला खेल के आई है उनके पास अवसर है, अगला मुकाबला वो खेलेगी, वो एक्शन में आएगी। आज के दिन में कुल मिला के 3 मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं, जिसका सूरत हाल हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बचे हैं 2 और आने वाले मैच, जहां पे कर्नूल नाइट्स और भीमावरम गार्डियंस के बीच में होने वाली है टकरार। मुलाकात आपसे होगी 3:45 बजे, और दिन का आखिरी मुकाबला जो 5:30 बजे आने वाला है, अमरावती क्रशर्स की टीम तिरुपति रेडर्स के सामने आमने सामने होगी। और कोशिश सिर्फ एक ही चीज की रहने वाली है कि जितने तरीके से, जितने ज्यादा स्कोर डिफरेंस से आप मैच जीतें वो आपके लिए बेहतर होगा। युवा आंध्रा चैंपियनशिप 2025 का अगला आने वाला मुकाबला कर्नूल नाइट्स बनाम भीमावरम गार्डियंस। बने रहिएगा हमारे साथ, मुलाकात होगी 3:45 बजे।
हेलो हेलो